ल्यू को डाउन कर दिया गया, मेपल को डाउन कर दिया गया। एक्सी वो अकेले डालते हैं और अब एक अकेला प्लेयर जिसे बाहर करना बहुत आसान, बट कोई गलती ना की जाए तो सेक नॉन्ग शिम के लिए दिक्कतें बड़ी, बट क्या वो अपने प्लेयर को बचा पाएंगे? जी हाँ, ईगल सामने की साइड पर बढ़िया ग्रेड डाला, ह्यूमन वो डाउन इस बार एलिमिनेट कर दिए गए, पर ईगल ज्यादा देर तक सर्वाइवल गेम उनका भी नहीं चलता हुआ, पर सोईजी वो यहाँ पर गिरा दिए गए। पर एनएसआर क्या उनके ऊपर एक और रश आने वाला है? जी नहीं, कोई टीम ही नहीं है, पर गीक उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया है और वहां पर मलिक को डाउन भी कर दिया गया। एंड 7-2-1 जिनके पास प्लेयर एडवांटेज कॉटन राजू, हेलो भाई, हेलो राजू भाई, क्या हालचाल? के बाहर हुए, क्या हालचाल राजू भाई? आज चलेगा एकदम तारम तोड़ लाइव स्ट्रीम। सब सही है ब्रो। मस्ती रहना चाहिए जी। Pretty damn good time here, all right? Yeah, we got 3 games in. I do watch the other ones, but afterwards I like to come chill here. It's a lovely spot. चलो, This place is stupid, to be honest. It's ridiculous, dude. The by far आज एकदम some of the best food I've ever had at an event ever. And this place really does have it all, dude, right? I mean, like every game you can imagine. Manicurists on stage, and dude, that lady's insane. Like I've seen some of the girls walking out of there, and now she's like booked out for 2 weeks, which is wild. But I might even get a haircut in a second. I love it. I love it here. फेस कैम में सेट करिए। फेस कैम नहीं आ रहा है। चलो, ये हुआ ना बात भाई। फेस कैम नहीं आ रहा, बता दिया। नाइस वन ब्रो। सही है। अब सही है, देखो। 18. But I'll still take the 18 to go to Riyadh. Very, very good time. But it does mean I don't have to get a massage while I'm here. अब सही है, My back is not ruined. Yeah, I'm in the same dang boat. I mean, when I heard that there was massage therapists actually available, I was like, please, where are you at? Because my flight was a whole. अब सही है। सही तो है, लेकिन लाइट बहुत आ रही है। लाइट ये लाइट थोड़ा कम आई तब मजा आया भाई। सजे गिरना चाहिए बस। क्या लगता है आज? हाँ, क्या लगता है आज इंडिया का दोनों टीम मिलके कितने पॉइंट निकालेंगे, बता भाई। You did. I don't know the rules. Tell me the rules. क्या लगता है कितना पॉइंट आ रहा है आज? Right? That's fine. I got you, bro. कितना पॉइंट आ रहा है आज इंडिया का? चलो, Yeah, I heard you like stop. I heard you stop. You kind of confused what was going on. That's fine. स्नैक्स भाई का लाइव स्ट्रीम आज भाई वहीं से पेरिस से ही चल रहा है। स्नैक्स भाई का लाइव स्ट्रीम मजा आ जाएगा बे। 40 प्लस नहीं भाई, 60 प्लस चाहिए। 50 चाहिए भाई, कम से कम 50 पॉइंट तो चाहिए भाई। कम से कम 50 पॉइंट मांगना है भाई। मार्किंग शेड्यूल में 23 की वॉचिंग है भाई स्नैक्स भाई का, क्या बात है। नाइस वन ब्रो। I respect it.
Sometimes you gotta make some difficult shots in your life. ओजी का 50 प्लस नाइस I trust you. 50 प्लस It's a तो long चाहिए reach. कोई भी हाल में भाई. It was close though. It was. I thought you were gonna really ruin that. अच्छा क्या लगता है अपना या Okay, like, tell YouTube me चैनल का something. रिकॉर्ड बनेगा? 4 thrives. Overrated or not? 20 वाचिंग आ गया समझ भाई रिकॉर्ड बन गया. Hell no, dude. Thor Thrives is insane. I mean, they are coming in champions of गॉडल का PMGO 45 प्लस season one. नाइस वन. I didn't think we मुझे were तो going लग to रहा see है a गॉडल मारेगा भाई Pakistani आज. team be our champs not this soon. And this guy's आज giving me गॉडल a देने chance. वाले I हैं. really, really appreciate it. And hopefully, we'll see Four Thrives try to give some of these guys a chance because in Group A, these guys look like they were unstoppable. They look really good. I mean, they were beat out points-wise by Vitality. I think 6 साल की मेहनत है. The guys have been with us since day one, so there's a lot of storyline that we are writing, and extremely proud of the boys. So really hoping that we take the next week, we get all the positivity from back home, and yeah, I think just support the boys, cheer for the boys. I think Snacks आ गया? क्या बात we है? are not Snacks just आ doing गया? this for orangutan, but we are Nice doing one, it bhai. for India, and yeah, that's it from me. Congratulations, Jay, once again. Team India, Team Orangutan. टीम इंडिया भाई. They are the टीम इंडिया. finalists in PMWC 2026. Just, I think now the next 2 days is for godlike. I would Team love India, it bro. that 2 Indian teams go and make it to the finals. We are rooting for them for the next 2 days. So we've got a lot of love in the last 2 days. We're really hoping that godlike also gets. क्या that बात in है the next 2 चीचा? days. चीचा क्या And, बात है? Yeah, 2 Indian teams going it will be double trouble for the world. क्या बात है स्नैक्स चीचा? Beautiful situations, Nice one, but bhai. the best teams always find themselves a way out. I mean, AJL is a good example of that. They got themselves in a real good situation. I mean, top team Tiamba going for the crown, and honestly, they स्नैक्स चीचा आ गया भाई. completely flubbed it. That was a lovely shot, by the way, dude. Well played. Winning up against Tiamba in that last game, survival stage. They're given all the chance in the world versus Nongshim Red Force, but Nongshim, I would say they're one of the teams looking to continue on. And I don't think AGL had it in them this year, but Tiamba just had a massive turnaround. But these things happen. Some mistakes happen. Oh, dude, I forgot that you're like right at the finish line. I've got like some more steps to go. You got it, but hey, you got it, but hey, you know what? That's what it's all about. You just take things one step at a time. No matter what kind of situation you put in, you gotta just figure things out and make it happen. Yeah. Take another one. Sometimes you gotta take a mulligan. स्नैक्स चीचा आ चुके हैं. Little combination shot. I tried. I like it. I like it. I've made it easy for you, though. I've lined you up. You're lined up. You're ready to go. Look, I've created a runway for you. Look. Say, you come down here and go in this back pocket. Yeah. I've got the lights. I'm guiding you home, dude. I'm guiding you home. Oh! Okay, that was a real. The lights, they guided him home. It was good to see. Let's hope that some of these teams can get themselves guided home to a victory at the end of PMWC here at EWC. Thanks for watching. My name's Blank, and this right here is Hot Jukes. Catch you guys later. सब कुछ सेट है भाई. सब कुछ सेट है आज. चलो आ जाओ. आज मचेगा भौकाल. आज मचेगा भौकाल पूरा वर्ल्ड लॉबी में. चलो भाई, जो लोग भी नए चैनल पे आ रहे हो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकते रहो आप लोग. इधर आज इंडिया वाला अपना ठोकेगा, इधर आप लोग ठोको भाई. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here चलो भाई. now.
the proud founding partner of EWC. सभी लोग एक साथ मिलकर लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो भाई। Shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness चलो deserves a stage. 650 सब्सक्राइबर आज हो जाने चाहिए। Reach your impossible. अरे आराम से भौकाल कहाँ गया भाई? We're here at the Pmwc at the EWC in the player lounge, and things have gotten a little bit more quiet because we've sent some big names home, most notably Alpha 7. Yeah, that's right. Our champions from 2024's edition of the PMWC, and alongside them, चलो भाई सभी लोग एक साथ मिलकर लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो। from last year's event out in survival stage, John. You know what that means? Oh, it means Quality कैसा है? Quality बताओ भाई। Champion. Chicken dinners will need to be earned. Points will need to be put on the table. Quality check Only करो। one team will rise to the top to be the one and find that chicken dinner. We'll see you guys in the action. सब सेट है गाइस। सब सेट है आ जाओ। Just too much of a mess. It's just too much of a mess here. We do it live. नाइस सेटअप भाई। We do it live. चलो आ जाओ। This team's gonna win now. कुर्सी का पेटी सब लोग बांध लो। Welcome, ladies and gentlemen, to the PMWC at EWC 26 News. My name is the 7WG, and I'm joined by none other than Lace. Lace, how are we feeling for the finals? I mean, I'm super pumped today for the finals, and Super pumped. I think we've got a lot to cover for you guys today. But of course, we're here to bring you the program and break it down for you. I think so too. Because बताओ right now, हिंदी कमेंट्री सुना जाए या इंग्लिश कमेंट्री सुना जाए, the देखा जाए $3 बताओ। prize pool is on the line. The format pretty much straight simple. It's going to be top 16 teams are going to be playing that they have made it from group stages, from survival, from all of that. 3 million. ना हिंदी सही जगह भाई। One team's going to be able to lift that trophy though. I mean, that's some serious cash money for our teams. And of course, what would you spend it on? Ooh, I don't know. I don't know because I have so many kids that They all get $1 million each. स्नैक्स चिचा क्या बात है? स्नैक्स चिचा अरे वाह मेरा भी आया बे। नाइस वन बे। बेंच एक बार फिर से भारत का झंडा लेके। Yeah, I think we're very fortunate to experience this twice for the second time in the last 7-8 months, and I think kudos to the boys for being so consistent throughout the year, and I think there's just Rapid fire round with Nihal. Nihal, are you ready? Yes, Okay, first question. Blitz or classical? Blitz. Fastest चलो भाई, आ जाओ। you have ever pulled off? 40 प्लस Honestly, 50 no प्लस idea at all. होटल के 45 प्लस। One opening you could play blindfolded. Honestly, any opening, but till London maybe. Youngest grandmaster you know personally, besides yourself. Abhimanyu Mishra, And how old he was?
12 or क्या कहते हो भाई? कितना आ रहा है? कितना प्लस आएगा आज? हिंदी 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 आ गया, हिंदी ही आ गया। don't have a favorite exactly, but I would say knight because it's maybe the trickiest piece. One thing non-chess fans always get wrong. That chess players are geniuses. One word about Paris. Beautiful city. If chess had a mascot, what would it be? Maybe just a white and black king. Toughest opponent you faced this year? Actually, this year I don't know. Maybe Alireza. One esports video game you would want to try? Maybe League of Legends or something. But how would you rate your confidence right now out of 10? Let's say 8 or so. चल भाई स्टार्ट कर दे भाई। For the rapid fire round. Thank you. The EWC predictions with Nihal. Does an Indian grandmaster make the podium at EWC Chess 2026? ये दूसरा है, दूसरा ही है। हेडफोन चूत गया क्या मेरा? इतना जितने भी इधर प्लेयर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं सभी के लोग जब भी मैं काम करने आता हूँ तभी ये लोग इतना फोन करता है, इतना ये करता है, तभी सबको अब सही है, अब सही है। पोडियम पे तो नजरें रहेंगी भारत से आई टीमों की, बट साथ ही साथ कुछ ऐसी टीम्स भी हैं जो अपने क्लब के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, और वो ये है कि पीएमडब्ल्यूसी में फाइनल्स में वो जितना अच्छा करेंगे उनके क्लब को उतने क्लब चैंपियनशिप के लिए मिलेंगे अंक। ऑल गेमर्स इनकी हम काफी डिस्कशन कर रहे थे, फिलहाल अब हमारे साथ ये इस प्रतियोगिता का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वहीं वाइटैलिटी की बात करें अपने ग्रुप से टॉप कंटेंडर बन के आई है। चलो भाई सही है, अब सही है। पॉइंट्स लेकर आने की, और जैसे ही दर्शक आप थ्रेड्स की बात कर रहे थे, दोनों वाइटैलिटी और अरोरा ये भी डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल्स पहुंचे थे हमारे साथ। I mean, आप देखिए ना, थ्रेड सिर्फ यहाँ पे ग्रैंड फाइनल्स का नहीं है, अब थ्रेड आ चुका है क्लब चैंपियनशिप के रैंकिंग्स के ऊपर भी, क्योंकि जब हम इन टीम्स की बात करते हैं वही होता है ना, वहाँ फायदा तो यहाँ पे भी आपका होगा। बट टॉकिंग अबाउट द सेकंड साइड, DRX के बाय DRX अगेन काफी ज्यादा हमने इनकी बात भी की थी कि सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और 15वें पायदान पे बाहर हुई थी वो टीम, और मेरी नजर गई थी 31वें पायदान पे। गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स का जो टीम है वो भी अपने क्लब चैंपियनशिप पॉइंट्स के लिए लड़ेगा, काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है TDRXD। ऐसे में ये जो जंग है, नॉट जस्ट फॉर द प्राइड ऑफ द टीम जो पीएमडब्ल्यूसी में खेल रही है, बल्कि क्लब के लिए भी, बिकॉज क्लब चैंपियनशिप ट्रॉफी के एक कदम करीब पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो वो सुप्रीम ट्रॉफी है जो कि ये दिखाता है कि आपके पूरे क्लब ने इकट्ठे मिलके कितने सारे टाइटल्स जीते हैं, या फिर कितना बेहतर आपने किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है उन सारी ही टीम्स को याद रखना कि आप जितना हो सके उतना बेहतर खेलिए, क्योंकि एट द एंड पूरी दुनिया आपको याद रखेगी, आपके क्लब को याद रखेगी। फिलहाल तो आई थिंक फैल्कन्स को काफी लोग याद रखेंगे, बिकॉज दे Right now, I would say I've got that glimmer of hope, just like we had at PMGC last year, or even PMGO Season 1 this year in Jakarta, that they can be on the podium and maybe break that second place curse. And that's just a few of the world-class teams that are going to be representing here in the final for PMWC at EWC 26. You want to stay tuned. You want to see all of these teams fight for that grand prize pool. Thank you, special reporter Kalara is coming in with the information now. Let's talk about the club championship. AGAL got eliminated. They did. They are no longer in. Please, don't forget that we still have Vitality, and we still have Aurora, that if they finish in the top 8, or if they end up winning, I mean, they'll get a cool 1,000 points for SEC. Never interrupt me again, Seven. But that's fine. Cleared up with our सब कुछ अच्छा चल रहा था। interrupt and on standby to bring us the club championship update. That's ससुर। हेलो मैक चिक, हेलो। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं।
As we head into finals for PUBG Mobile, and as we prepare for the penultimate championship weekend here at EWC, as is tradition, it's time for another club championship update, because this is what all of our clubs are fighting for. The title, the honor, the ability to etch their names in the history books of EWC. So let's talk about what that means for this weekend. Over on the Allianz Vault, we have the likes of Liquid, Falcons, AGAL, all fighting for points in their respective games. And honestly, they're going into semifinals today, whittling it down to top 4. It's going to be a big one. Then at the STC Arena, a little bit of a repeat here because we also have Falcons in the running, and we're also keeping our eyes on Vitality, which could be a big one, as Vitality is in 4th overall in our CC leaderboard. But as we take a look, and get to our special reporting, being able to cut class and just do that CC update. Thank you, Glitter. But we gotta talk about Sony's story of the day here, because this is the finals, and there's some teams, Lace, that have just been outperforming like crazy. Vitality being one of those. Of course, Vitality, they were able to get the exact same score that For Thrives did over 2 days. So if you don't understand how much of a juggernaut team this is, well, then you better wait and lock in. Yeah, another one that we saw there as well is Godlike. I personally have Godlike finishing in the top 5. This team, for a first international event from India, they have been performing so well. Is that Snacks? Gaming that I see by. Turn left. Kaise Hall by. It's good. Maybe we'll get a chance to talk to him later on. But we do have some more special reporters, none other than Maxman and Amatura. Let's see what they're up to. And here we have it. We are here at the Analyst Corner for some good old PMWC 2026 at EWC 2026 breakdown. And I'm going to be joined by some co-analysts here to break down everything that might be happening this following weekend. First of all, we got Michael, Niptura, Jackson right here at the stage. How are we doing, Niptura? Very well indeed. I'm not going to do what you want me to do. I'll save that for later. But for now, yeah, we're looking very good, excited for the finals. We all dressed up for the occasion. We are ready to go. Yeah, with that said, looking at the teams, I know that Niptura, you really want to jump in on. एक मिनट गाइज, 1 मिनट, जब तक सही कर लूं मैं. Godlike because of days was just really nice. I really enjoyed how they've been playing. They play more compact. They look for those positions, and in a lobby like this is working out very well. So yeah, I'm excited to see what they got today. I feel like a lot of people, especially when it comes to Godlike, are highlighting, you know, they're looking at S-Power, they're looking at Admino. I want to say Some in particular has been doing absolutely fantastic for the entirety of Godlike. So you can see a little bit of a B shot there, them getting ready for this event. But you know what? Godlike is one of the many teams that are going to be here trying to compete for that trophy this weekend. But you know what? I feel like we need an extra analyst possibly to join the desk right here, but we have to summon him. Niptro, so you're ready? 3, 2, 1. Vitality. Oh, no. Oh, didn't work. Okay, wait. Time to, okay? Wait, we're going to do it one more time. Yeah. Vitality! So Vitality, what are we thinking, Blank? Hi there, my name's Blank, special reporter coming in for Vitality so far, doing incredibly well. Razy and Razak, my boy Ray, as well as Federales and Axel, looking fantastic at the moment. I think Axel's been in a huge amount of work, as has Federales, opening up a completely new style of shotgun play, which looks completely ridiculous in Game 2. But that's my special report for Vitality. Oh, thank you for the insight. Also, Axel, by the way, the IGL between... बंद कीजिए ना. सजना के सजने कब चालू होगा भाई? कर दे चालू भाई. Some big numbers, especially on that one game against Horde. There's not a player on that team that doesn't look incredibly good at the moment. And the funny thing for me right now, Neptur, is that Razy and Razak aren't particularly the guys that are stepping up the heat, despite so much talk about them. Axel and Federales have come in looking very hot, and I think that's the most promising thing. Absolutely. I think if you look at any of the stronger teams in globally, just the global circuit, you're going to see players that all have very, very aggressive gunplay
and goddess. despite their Temple various with roles, Shadow. right? You don't have just one or two. It's very, very nice to see that come through for them. So, yeah, it's very, very strong looking. And also the fact that they can get so Odin many wins. goddess. We were talking about that in the group stage, right? We get so many of those wins. It makes it interesting for that smash rule that we actually could have a lot of hope for this team to actually come through the pressure and get that win. Yeah, it's very nice, unlike Four Thrives, they can actually get wins because if they do gain contention for the Smash ruling and the trophy, actually that could put them in a really good contention to be crowned your PMWC 2026 champions. Now, we already talked about one of the Indian teams. I think it's time to focus on the other Indian team, which is going to be Orangutan, Niptura. You already talked about them, so Blank, Orangutan, what are we thinking today? You know what? I think Orangutan, for them, I think right now they're looking very, very good. I think a lot of the emphasis, though, has to be on Aru, though. I got to talk to him a fair few times this event. Lovely guy, by the way. Really, really lovely guy. Great chatter. I mean, I talk a lot. I talk a lot, you see. And I think that's sometimes a problem for other people. But for Aru, goodness me, I could just sit there and listen to him all day. But he's bringing a lot of the eliminations. He's also bringing a lot of the guidance to the squad. Yes. Now, there were a couple of moments. I think we're actually seeing on screen now one of those moments, which was a little bit difficult right now for Orangutan. They moved up on this one versus Flash. They struggled a little bit on the gunfight. However, they ended up winning that game. It looked a little bit shaky. I think that they solved a lot of the issues coming after that. But yeah, I do think the rest of the team needs to develop around Aru, essentially. Yeah, I think Aru's got some great ideas and he's got some great direction. It's just that synergy that has to come through. I think probably there's a little bit of, I don't want to say the word panic, that's a very strong word, but when you are in these high pressure situations, it's your first PMWC, whatever, you are going to go, oh my God, they're everywhere. And you're going to have a little bit of a freak out, and they've really worked on that. They've solved so much of that. And so, yeah, it is looking really, really nice for them. So very, very hopeful for this squad to actually do big things here. Yeah, very hopeful. We'll see how high they can actually rank up in the finals. But with that said, a final team I'd like to talk about here, which is actually the team I predicted to be the champion. So I'm sorry, guys, but I'm going to go for Team Flash. Team Flash, I think, is a team that has been getting better and better and better every time we see them play. And I feel like now they're at level black where maybe a trophy is in the cards for these guys. Womp womp. Yeah. Wait. Predicted by Max. Womp womp. Sorry. So they're going to be in 16th place. Yeah, probably. To be fair, though, for Flash, I think that they did quite well, all things considered, because last time we saw them this year, they looked fairly unconvincing. They looked scared. They looked like they didn't have it in them from what was basically a rookie upstart squad who were testing a lot of other squads, right? Poking at them, nipping at their heels. They suddenly play this really passive game. I think some of that aggression's coming back now, and that's good news going in towards the finals. Go for it. No, I do. I agree. I want to see more from them, though. I think in the group stage, you know, they've been heralded as a very, very aggressive, forward-playing team, and I think in the group stages we didn't see that as much as I was expecting to. I would like to see more of that in the finals, but you know what? It could be just a simple thing of, like a lot of teams do, they saving it for the finals, and so I'm like, okay, you know what? I'm not going to hold that against them. I want to see what they got here today. They do kind of remind me of Four Thrives in the sense that every player has that clutch factor, and it's especially interesting. They go from PMGC last year to qualifying because of an airdrop on Miramar, barely able to squeak their way into the finals. So now, actually being a team that consistently are able to qualify straight into the finals of these big international events. So Flash, I feel like, could be a big surprise, especially as they picked up the mantle of Deep Xavier earlier this year, right? Yeah. Could be. Could be happening. Also, last thing, Chicken. Whoa, Chicken right there. There you go. Check him out. He's very cool. Check out the booth right here at EWC 2026. With that said, thanks so much for joining the analyst corner here for PMWC 2026. We'll throw it right back to Lace and 7WG. Yes, thank you so much to our special reporters, Max and Neptura. I don't know where we got the budget to fit Blank in there. I thought we spent it on him saying Vitality 100 times. However, our players are now arriving and getting ready for the show. 7, I do believe we are missing one caster. We are. Oh, not again. Not again. He ended up missing last year on the final day of PMGC. We cannot have that happen again. Let's send out our special reporter, Calares, who's going to be looking for none other than John Allen. RCA reporter for PUBG Mobile here at PMWC, and a major problem has occurred. It seems we've let one of our commentators out in the wild here, and we've got to actually wrangle him and get him back in. So it looks like
maybe a little bit of movement's going on here, actually. I don't know if they're actually going to be able to capture him. This is the problem with commentators. A lot of the times, they just go wild. They somehow get it. He's on the move. He's on the move. Okay, no, we've actually got to be able to try and find him as quickly as possible here. He seems to be hiding. I'm not exactly sure if we're going to be able to capture him. This specimen, in fact, actually has a microphone already. You can see. He's dangerous. He's very... क्या कहते हो भाई? कब चालू होगा बे? 4:30 में चालू होगा क्या? स्टार्ट कर दे भाई, बहुत नाच लिया तूने. स्टार्ट कर. Will they be able to make it happen? This is a tense moment. John Allen? It looks... I think they might actually have it. They might have it. They might have the John Allen. It looks like... Oh! Did you see that? Get a close-up of that. Get a close-up of that. I think they've got him. Unbelievable scenes here at Pmwc. Oh, that was close. As an Australian, I would have caught him a lot faster. I'm just glad we caught him. Okay, this man was on a loose. We weren't able to find him yesterday during the day off, and I'm just glad we're able to set some bait to actually find him. Absolutely, he needs to lock in just as much as our players, Seven. They really do, because there is an alert right now going on, and that is that the players are ready. We are ready to rock and roll here at PMWC at EWC 26. Ladies and gentlemen, this is the finals, baby. I'm ready. Oh, I am ready, bro. I'm ready also. चलो भाई. इंडिया. चलो भाई, आने दो भाई. जय माता दी. चलो भाई, जय माता दी. चलो भाई, आ जाओ. Months of preparation, thousands of hours played, and sacrifices have led to this point. Sits on the horizon and a legacy that dreams are made of. We saw it in the group stage, we saw it in the survival stage. These teams are here for a reason, and every single one of them can actually clutch it all and become our PMWC champion. Today marks the beginning of a 3-day gauntlet that each of our teams have to navigate. Each day more intense than the last. Barney, I think looks really ready, and it is time for us to welcome our finalists on the Giria City grid, starting with Oof Esports. Nongshim Red Force. Al Hula Club Esports. Tianba. S2G Esports. Enigma Galaxy! Hora Esports! Team Flash! All set guys. इंडिया का शेयर कहाँ है अपना? Esports. चल भाई मानिया, आज दिखा देना भाई. Aurora Gaming. आज दिखा देना इंडिया का गन पावर क्या है. Ida Esports. आज दिखा
दिखाना है साले को। Orangutan! ओह आया Team Vitality! आरू भाई दिखाना है इसको, सभी को दिखाना है। And finally, for Thrives Esports! We can't emphasize enough the importance of the next 3 days. On Sunday, we will crown the greatest team in the world. So start as you mean to go on. Absolutely no room for mistake. If you want to be the best team in the world, you need to prove it from the very first day. The PMWC Finals at RWC 2026 starts right now! Players from all corners of the world laser focused on one thing, the title of PMWC champion. Fight smarter, adapt faster, and deliver when the pressure is at its peak. That is what it takes to keep this dream alive. So welcome to the PMWC at EWC 2026. And RRQ are looking to do it here. Pushing up close and personal. Mew with the nade! Turning the tables! And he's doing this all by himself! What? It's the Squad Wipe 1v4 from Milu! Let's put the 11th on the board. Looking for TZ, is it a self-denial? It might be. Get to double digits on the And that's and it. burn yourself down to the ground. What a shutdown. 108 points in 6 matches. Nate misses, Darkin peaks. That's on target. Good shot. Follow-up there. HG takes him away as Turney K falls. Mormon closes the gap in the shotgun standoff, but will he win it? No! Are you kidding me? What a finish! It's Ida! S-Power is just insane. He's been throwing heat-seeking missiles all game long and opening the fight for his team. A full 4v4. S2G tried to catch a couple of their players off guard, but it's S-Power, baby. You can't shut him down that easy. You can't stop S-Power. And you cannot silence Godlike in this moment. Adamino for the closing play. As Godlike take this chicken dinner with ease. That is how you do it here, folks. And you can see the look on their faces saying, make some noise, Paris. It's Godlike's time to shine. See on Rondo, it is madness in the Ox Factory. A big nade threaded on up, and it's finding 1 and 2. Falak charges on forwards, and they're cutting the rosters in half. A number 1 right up in his face. They go wide. Top's moving around the side. Aurora, a difficult beast to handle. The run coming through from India, but it's not happening. They will not be silenced. They will not be shut up here. Aru still going strong. A tanky underneath, looking to get the shots in, but Flash moves around the side. He's whipping the shots, unfortunately. But finally, they will hit the last shot. India grabs the back-to-back. From day 1 to day 2, this team looks clean. चलो भाई It's time to crush some dreams of 10 teams. Can I get you to press this button and open up the iris? Oh, with a bit of vigor. I like it. I'd like you to pull on this in 3, 2, 1. Send them home. Let's go. There we go. I don't think we could have set the stage better ourselves. So it's ironic that we were featured in that nice little collection of replays there, Blank. An incredible way to give you a glimpse into what's gone on over the past couple of days. But it's going to get even more climactic here. The best of the best return to the lobby, and this is where dreams truly do become reality. I'm slouching, but hopefully the players aren't, because this is a day, right? Day 1 always gives you the most freedom,
the most chance to get a big buffer online without that stress. Because we saw that come through in survival stage. Yeah. Teams were sweating, teams were shaking in their boots. But it's time to get boots on the ground over on Rondo very, very soon for our first match of the day. Who's going to grab that gargantuan point total? Can someone try and repeat something similar to E-Arena? Maybe not the same, because that's once in a lifetime type of a deal. Well, if there was a time to pull it out, try and elevate a world record even further. Hey man, there's no better stage for it, no better crowd, no more excitement and anticipation than right here, right now, live from the Qiddiya City grid at Pmwc 2026. 3 years of intense competition, twice we've had brand new champions crowned, and this year we'll get another one. Never going to be the same here at this rate. With Yangon being Yangon, it is time to crown a new victor. Who's going to be the defending champion? Will they be able to defend it next time? But right now, all that matters is getting those points online. Playing path is in the air for day one of finals. Match one, Rondo. Let's get it started. Energy in the arena already. It's good to hear you, Paris. Let's keep that energy going throughout the day. We'll set the stage for you as we get our playing path on board for this one. We've had some pretty good games of Rondo, mate. You touched on E-Arena there. That was something to be remembered. But the consistency and the level of aggression we've seen from these teams back in their respective groups was intense. Now we put that all together. A big hodgepodge of talent. They're going to be stepping over each other, Blanked. I mean, they will. They will have to, because there's going to be bodies on the ground shortly. As soon as these players start dropping in. E-Arena here, though, teams do need to be worried. They've been taking this little odd stadium drop. They've been searching out players from different teams on their res beacon positions. Now, if you are remembering our game versus Alpha 7, just the other day, survival stage day 2, they had a real tough time of it. They were able to hold out, but E-Arena made their lives extremely difficult. But it wasn't just them. Let's see what E-Arena can get done, because a lot of teams are going to be taking those res beacons towards the northwest side with this playing path as the fights do open up towards Yulin. Just how hot are these drops? Nice one, bro. Aggression is going to come out instantly. We see that opening knock from the drives as Razy on Vitality starts to let some bullets fly. Two players on Orangutan instantly being knocked off their feet as well. That's 3 points achieved for Tiamba in a matter of seconds here, Blank. QZZ already hitting the knocks left, right, and center. अरे क्या हो गया यार? क्यों रुक रहा है भाई? Up to 4, QZZ on 2. 6 eliminations in 1 minute 47. That is an incredible result already for Tiamba. They should be able to get the easy res peak, and they've already cleared out most of the damn teams in that position. Yeah, that's an unbelievable start for Tiamba. A powerhouse in the survival stage, and again delivering early into Rondo. Orangutan being forced out as well as Hora look to try and claim a few more points for themselves. 3 points for Hora, 3 in the back pocket for Nonshin Red Force, and that big 6 total for Tiamba already. Oh my days, I mean, just coming through, Milu was just slashing at them. He pretty much cut through the entirety of 4 thrives there, left them in ribbons by the end of it. I'm pretty sure he was up against guns as well, but he just brought the knife close quarters outside the pagoda. Real samurai here on Rondo. Start as you mean to proceed, it seems, then, for Tiamba in today's games. Sleepy taking the clash back over to Zizzy there from Nonshin. Going to be able to force him out early. Nice. Oh, that's a great lineup. Lord coming swiftly in with that one onto S2G. Gorgeous stuff here. For S2G, got to chat with him for a little bit. My boy was actually getting a haircut when I was talking to him, but they were saying that they have the aggression, and that's what they're bringing here in the finals. It's what Ulf kind of lacked a little bit of, but for their Turkish team, they were looking to bring that aggression over in the group stages. They're looking to bring it again here. They've had a lot of time to study those teams, but Lost moves up and already is down. It's Kamikaze, the man with it all to give. One nade, one dream.
Good damn. Yeah, it's nice bit of chip damage on the P. Nice one, nice Lord trying to lean into it, but the pre-fire back from Kamikaze on low HP will at least secure that one. Ralph goes in aggro though with the shotty and absolutely pumps them full of buckshot. Good stuff there. Solke, at least at distance, is able to recall the team back into action. We do have a Western circle. We didn't get to talk about too much. Flash already has tops in that region, so Jiao Ting currently covered, but that place can hold a lot of teams late game. Aaron now going against Wit, bears them out HP, but at distance, it's Milu. Once again, Tiamba up to 8 probably after this. This is the dream start for Tiamba. And Milu, the fact that he's got 6 individual eliminations alone, mate, he was just popping off back in the games we'd seen previously. If he feeds the hot hand, and keep this going for another day, good luck. It's the buffer that we were talking about. And there's no luck involved, but there is luck involved over on the Lucky Spin, which you can join in with us in-game right now for the 2026 PMWC, for the exclusive 2026 PMWC tournament set, which you can see on screen regularly in-game. Make sure to try your chances just like QZC and this spray down with the S12K. We are looking at 2 eliminations per minute. Unreal reactions as well. Coming out swinging today. We know mechanically they're very gifted as individuals, but they're putting it all on the line. And hey man, that's the way to do it, right? We were touching on the fact if you can have a huge pop-off game on Rondo, the extra buffer of points from the sheer quantity of additional eliminations you can garner from this battleground, it's worth its weight in gold, especially in a 3-day finals environment like this. You gotta get in there and get stuck into the thick of it. Tiamba are doing just that. For Tiamba, their biggest success in the survival stage was the fact that they started out so incredibly hot, where it felt like all the weight was off them a lot of times. Milu making that 1v4 look real easy, I think that came from the fact that they had nothing to lose at that point. They were already in. They're just pushing a little bit further there. We haven't talked about it too much so far on the cast, but we do have Smash ruling this event. And not only does that mean that, yes, you can win technically, game 2, but it also means the further you are ahead, the harder it is for teams to catch up to you to also get into that Smash ruling. So we are looking for more similar result to 4 Thrives as well as Vitality in terms of how far they sent themselves ahead in those rankings to make it difficult for any team to catch up to really engage that Smash ruling on the final day. Might be coming down to match 6, honestly. Yeah, it will be a fun little storyline to see how that affects things going into the last day of competition. How big of a barrier that'll be, and really if other teams will have to rise up to the occasion for it to even be a potential pipeline for them. That's one for the future though, but now it's in the back of your mind. You have that context with just how much these early points matter for some of our squads. 2 sides that you touched on there though, of course, being Vitality and 4 Thrives. They were dominant in both of their respective groups. Easily the best squads we saw when it came to how consistent they looked and how aggressive they were. Yeah, Vitality even kind of completely blowing away what we thought was the upper limit when they then played their group, right? I think they knocked it out by 1 point, but even that 1 point is a hard point to squeeze out in such a short amount of games. For Tiamba, it's a little less impressive, I would say, just because you are playing with the dregs coming through from the group stage. We already did send what we assume to be our best 10 teams forward there. Even so, Tiamba still looked very strong, and for them, it was more a case of switching it on in those moments. And they've done exactly that. It looks like all the lights are on at home right now for Tiamba. They are burning the midnight fuel. Actually wild. Speed at which he was, the speed at which he was like. So was that 1v4 again? Actually, now I'm thinking about it. Technically, it feels like it is, especially when you then factor in, by the way, we had the 1 clean 1v4 he won. We then had a 1v4 attempt towards the end of survival stage that resulted in a winning free elims to going out as the last guy. Yeah, like the conversion rate we've had on raw 1v4s from him has actually been unbelievable. I think we're more astonished that that might be a 1v4. I mean, we didn't even clock it because it's like, is he just doing this repeatedly? Just
full-on butcher blade coming out from Elu, chopping everyone to bits. Crazy. Nice one. Love to see it. Circle goes over towards that northern side. Bit of an awkward res beacon on this one as well, down towards the lake. Definitely possible to go for, but you get caught out on the bridges coming out from that area a fair few times here, Jackie, and also there will be teams playing around that spot, trying to hold teams out. Orangutan, though, nice rotate on the north side, will be able to get them further into the circle. Tiamba, Vitality all on the back foot here, as well as Aurora holding a 2-2 split. I think they've realised because they're so far down towards the south, likely better just try and clear their back angles and then look for maybe a major rotate on the west or the east side later on. Shades of Stadium for E-Arena, a position they'd love to play towards in a final circle. But let's see if they can win out versus Orangutan. Straight through the door. And it's easy clean-up on the opening two players. Aaron Wisgard down in a matter of seconds. Back down to a duo once again. 4 Thrives taking down a tanky there as well. Just leaves Orangutan just on one singular player, AKOP, who is sending for a res beacon. I think he might go far Bailey on this, actually, Jackie. I don't think he's going to stop off early over towards the lake. Like we said before, you get a res off there, teams know it's happening, they will hold you out. So he is forced to go for the long rotate. But honestly, for Orangutan, it's not terrible because they can just swing back in from that northern side, and it's fairly free with where most of the teams dropped off down towards the south. Yeah, thankfully he's got just enough time. Pulls slightly further out as well, hedges his bets, he goes up towards the top of the north side, going to get that recall in. See Vitality on screen here as well. Just the one elim to start us off with, Razy. I mean, you said it yourself, mate, doing your little special report on Vitality. Razak and Razy, that's been a hell of a duo. They're like the Cray twins, bro. You're just terrified when you see them coming at you. Yeah, you are. I mean, one of them bringing the double hammers as well. It's a bit of a nightmare, honestly, and they are always looking for a proper shootout. But it's nice to see Axel as well as Federales. I mean, Axel really astonished me. Because there had been so much talk about Razy and Razak, and Federales has also had a massive amount of tenure throughout the entirety of PUBG Mobile, but Axel was just swinging and not missing. So that's what gives me a lot of hope, and I'm very, very excited to see this team perform as this tournament goes on, just because of how good all of them have been playing individually and as a unit. Take a look at Godlike, though. They're over towards that center side. I think Godlike showed us something different from their region. Honestly, they had some great aggression. I think they've been making little adaptations here and there, figuring things out as they go along. But genuinely, overall, we're impressive. We're impressive. They were second best inside of their group, only beat out by Vitality. And to be fair play, fair play. Vitality really did get it. You got a little crunch down the zone here as well, pulling further down. A couple big names amongst the dead center of it all. Godlike, as you touched on, 4 Thrives, Vitality, Enigma Galaxy as well. The representation from Aurora, another side that could have some surprises in store for us the longer this one goes on. Yeah, Aurora, they just seem to have this capability to choke in the finals. Yeah, that's fair. That's their major issue. Every single player on that team has greatness inside of them. It just seems to dwindle a little bit once we get to a finals. And we've been asking for that not to be the case for the longest time. I'm getting to the point now where I just don't believe in it, which is sad. But they are consistently always here, and you can't really put them down too much for that. The fact they're in most of the finals, that's already a big achievement. Reefus, though, opening up over towards Yasser from Alula. Tiamba's cut out on that eastern edge. Now, there's a lot of these big pillars involved inside the circle, as well as Stadium over towards that northeast side, which is a bit open on the outer edges. It slopes down into it, so if you are E-Arena, you can kind of swing past here. They also know this area very well. It is their drop spot, but 4 Thrives have beaten them to the punch here down towards their southwest from Stadium. Excited to see what the form of Fury is going to be looking like in a final situation again as well. They were massively coming alive, dude. Felt like it was way better in terms of the decision making. The communication was on point. A lot of the fights we witnessed from them.
Igor as well, just playing so brilliantly with some of the individual plays. Feel like a whole new man showed up. We spoke about this big man though, he's back on our screens again. Milu scouting around, seeing if he can get a line of sight potentially. He's playing close towards the geometry here at the cliff face. It's Ulf that aren't too far away. Eagle and Aching desperate to get some elims on board. I mean, man, every single one over on Milu and QZZ, but these guys are the fraggers on side. Aching, a lot of times playing off the back of him. Eagle, very, very good at playing that anchor style. Generally is the last player to go down. Plays that survivalist very well for them as well. Yeah, you're right, Furia looking good. Igor's, I think, was a big surprise. Yeah. They've got big names on that team like Chief, Ayala, Silence also doing a lot of good work. But yeah, Igor's was just really giving it to a lot of these squads. Now we're getting in towards our later circles with quite a lot of that team still involved. We talked about Jaltin earlier on. It can house a ton of teams. It is uncomfortable to play in, and swinging from apartment to apartment is not always easy. And there's a lot of difficult windows and little places to pitch nades in where you can't quite get those full finishes on. So I'm curious to see how this will play out. I think it's going to be a little bit of a passive game going towards the end, but you do have to get in towards Jaltin. See over on the side of the stage, the Galaxy fans getting quite excited. But meanwhile, across the battleground, it's S2G that feel the hammer crash down on top of them from Nonshin Red Force. The hero of Hyunbin starting it out well. And only one man in last, forced to bail out and try and keep their dreams alive as he breezes out of action. There's Aurora as well, clashing against Ida Blank. I mean, Ida tried to get in on the northeast side, which I think is, at this point, a little bit too late. They got crunched in by Vitality as well as Aurora. I think you somewhat deserve that coming into this stage of the game. Jaltin's still far on the western side, but because it's such a big amount of landmass with a lot of places to play, you do see a lot of teams confirming here early, but you sort of want to be on that end where Aurora is, Vitality, where there is those clear exit points across the road. A lot of other teams have to take something a little bit more unfortunate. Fourth rise though, Joker stepping up to the plate here, spraying through the smoke. There's one close. He's giving himself away though, Jackie. Yeah, this is risky, bro. IQ had to be so swift with the shotgun here. Joker just teasing them, dancing around on top of the rocks. So much damage already done to Fourth. This would be a hellish way to go down, and that's how they fall in our opening game. E-Arena. Here down, but back on board with Tiamba. Milu finding the first as per usual. Scarface desperate against it, but he's just pushing up. Aching will find another shot. Solus is down. This is looking very, very bad for Ulf. And Tiamba puts up more points. Milu on a fat 7 so far. It's not going to stop either. Nice one, even more squeeze whatever points they can get out of this one. Aaron had to tuck his tail and absolutely bolt it. Finds a lone rock in a field and gets his head down. Turns his attention back up onto him. A few shots as he dumps the magazine towards Milu. Someone needs to stop him, Black. Milu is just out of control this game. You're right, needs to be leashed. QZZ still taking some damage here. I'm kind of curious from where. One of its Fury, you're actually taking a couple of push shots over towards them. Aaron not letting up, just about press over the top of that bridge side. They're going to take the blue for a little bit to try and deny those sightlines. They make their way over towards the pagoda. Just about in here, Jackie. Difficult spot to play. Curious to see how it does work out. Aurora, it seems like both them and Vitality have been tossing a couple of curveballs at one another. But Aaron does find Eagle. Goodness me, still being a nuisance on that east side. Fair play, man. He's thinking you want to try and ruin this for us on game 1? We'll at least make it uncomfortable. Force out the utility, see what he can scrap through onto them. Nice one. Really make a move towards that recall, the zone coming in, and that's going to really crunch up away from all of them. Still dead center for Vitality. Yeah, Vitality's actually in a really good spot here.
Like I said before, it does give them that capability to move out over towards that northeast side of need be, but they also can crunch every single team on that western side. There was one player left remaining from Ida. It is Darkin. He is over on the eastern side of Jiaotin, just hanging out for the time being, but that does kind of save grace for Vitality, because they'll hear the shots immediately if someone tries to rock up over towards Darkin, just give them a brief opportunity to reassemble and reassess how they want to play off on that eastern side. Quick replay here from Federales, just instant shots. I think this has been a key factor for Federales throughout the entire time as well. Reaction speed. He is quick with it. It was quick and on a disgusting angle as well, so good plays. Oh, Federales, no one clears it! He doesn't get the playoff! They turn around back onto it and Federales falls! What's gone on there? This is an insane push from Tiamba, by the way. They have practically mostly lived it. Only QZZ goes down. I don't know how Tiamba is here. They immediately scarpered from that south side, and they took the most bold push. I was like, goodness me, Vitality's going down. I was like, goodness me, Vitality's going down to Tiamba of all teams. Mate, this is lunacy. Milu's looking for the nade as well, wants to really commit to this. Meanwhile, the last man from Ulf goes down. They fall second into our first game. Milu priming the nades. Oh, nice, good nade from there. Hits it back. Axel and Razak still up and kicking. That nade looked dangerous. Milu's down, tries to crawl his way back in towards the smoke to mask his presence here. QZZ still alive. Last of a player up, probably the one you want to see as well here for Tiamba. 14 eliminations this game so far, though still decent. That is greedy. Vitality's gonna let it happen? Oh, mate. He's gonna get it in. The res is gonna get him back up. The insane bit was as well, it was the nades from Aurora from all the way in the backline that got that initial knockback over onto Milu. Vitality have just been caught in the middle of it all. Most aggressive game of badminton, with nades being bounced over the top of their heads. Molly in round the corner, QZZ with a nade back. He's just going for it. Good night! The shotgun knocks them both out! This is what I can't believe about QZZ, because he's like, I've run out of grenades. You see so many players just step back and be like, that's it then. But he's like, if I can't do it with a nade, I'm just facing. I'm fully facing. Now Aurora, they're pushing on the sidelines. Can Tiamba hold 2 versus 4 here? It's a tough one. The opening grenade is not good, but Reefers is taking a ton of damage. Top bullet finds at least find QZZ. And it seems like Milu will also go down. But 16 eliminations, a fearsome game, even going out in 11th. Nice one, power. And I'm sure you can hear that. The entirety of the arena here in Paris lighting up. A spectacle to start here on game 1 of Rondo, and it's Tiamba that lead the charge. Now out of the running, let's see if anyone else can try and mirror their success with what remains. Flash moving over towards Aura. He's on the south side. They're kind of fighting for nothing on this one as well, because they need to leave at some point in the near future. Jiggle. Fair bit of damage. Flash still got bows in the back line here, lining up a grenade inside the warehouse. Hard to pop these off the wall though, because of all the concrete inside. Godlike though dealing with Noxian Red Force. Tizzy just lets him run straight into the barrel. God damn. Shotgun straight to the cranium. Godlike clap back upon from Schweppes in the distance as well. Gets an angle onto it. This is looking tiresome for both teams. I mean, Noxian down to just a duo. Godlike with only 1 man left remaining. And Alula, they've seen the blood in the water. They want to see if they can roam over. They smell potential points here. Why not? Honestly, grab them where you can. Alula sends up Yasser. Noxian Red Force has not got the reset online at all. Still priming nades upstairs. There's going to have to be a big hole. Tizzy on the outside. Luckily that Molotov is not on target. Tizzy's just going down. What are we doing? Nice one. Mate, this is nutty out there. Tried to drop off the top of the rafters, spamming the shots. It's all gone. I feel like Tizzy just panicked. Just get the res in, bro. Drop the smokes, get the reses. They missed the first molly. At least challenge the res. Goodness me, man, you're going to go down to a perfectly placed Molotov here from Alula. I mean, hats off to these guys. They currently control the entirety of the northern side to themselves. Irina looking to put up another good point here. Aurora playing with our hearts right now. Opening up with maybe a gargantuan game.
leading them to believe it is possible once again for Aurora. Enigma Galaxy coming out swinging as well. बहुत Might have बढ़िया been a bit quiet in terms of the overall aggregate elims we've seen to this point, but we know it's a team that can deliver with some consistency late game. They've got nades as well. Oh, the red zone forming on top of the arena. Thankfully for them, a little bit of deployable cover will make all the difference. Turney K in the back trying to keep his eyes on what's going on, but if you flick to the elim feed, you can see Doc's doing damage. The scalpels come back out for Aurora. And blank, it was 16 for Tiamba, but Aurora now on 14 elims. They might be able to lap them. Aurora have been just stamping away here. Reefus again does find Aru, leaving AKOP inside. Will be able to grab win. Actually didn't even grab that. Top was able to steal it. But for OG, they live a lot longer than expected. But with 0 eliminations, they will not get a huge amount off this game other than the placement points involved. AKOP inside. Has to move soon. Might just end up denying the point here. Reefus spraying in. Has 217 bullets as well. So they have had a lot of loot crates to pursue and peruse. Akop just trying to keep himself sustained and run the clock down on this one as long as possible. See if he can deny it out to the blue potentially, because if he goes running in there, that's just another point for Aurora. He's trying to get an extra placing on this one, but I don't think anyone else is going down anytime soon. Still more. He's mistimed it. Yeah, unfortunate. I think he thought that the angle was bad for him, so pulls off the first aid kit there. Sadly, not able to rank up once again. If he'd waited a little bit longer, maybe he would have ranked up over E-Arena here, who will go down shortly, I imagine. Turney K not able to weather the pressure here from Alula, who have been impressive this tournament for a team that was kind of down on their luck last year. I don't think a lot of people had high hopes. एडमिनो भाई अकेला था क्या एडमिनो भाई Tried to drop off the top of the just facing. I'm fully facing. Now Aurora, they're pushing on the sidelines. Can Tiamba hold? 2 versus 4 here. It's a tough one. The opening grenade is not good, but Reefus is taking a ton of damage. Top bullet fight, at least fight down. But 60 eliminations, a fearsome game, even going out in 11th. And I'm sure you can hear. Concrete inside. Godlike though dealing with Noxian Red Force. What? Tizzy just lets him run straight into the barrel. God damn. Zora is on the south side. They're kind of fighting for nothing on this one as well, because they need to leave at some point in the near future. Jiggle. Fair bit of damage. Flash still got bows in the back line here, lining up a grenade inside the warehouse. Hard to pop these off the wall though, because of all the concrete inside. Godlike though dealing with Noxian Red Force. What? Tizzy just lets him run straight into the barrel. In the back line here, lining up a grenade inside the warehouse. Hard to pop these off the wall though, because of all the ये जो अपना एस पावर और सोमे यहाँ पे है, ये फट से उसको गाड़ी लेके आना चाहिए यहाँ पे, अगर पुश हुआ है तो। लेट कर दिया भाई, लेट कर दिया एस पावर सोमे, लेट कर दिया, तुरंत आना चाहिए भाई। देख 1-2 बंदे को ले लिया भाई, तुरंत आओ ना भाई, तुरंत। Concrete inside. Godlike though dealing with Noxian Red Force. What? Tizzy just lets him run straight into the barrel. एस पावर कहाँ नॉक हो गया था? God damn. Shotgun straight to the cranium. Blows him away. Godlike clap back upon from Schweppes in the distance as well. Gets an angle onto him. Thought it might be a little harder for... नहीं भाई, जीजी हो गया भाई, जीजी। पहला मैच जीजी हो गया दोनों टीम के लिए। नहीं भाई,
dry gunfight, and honestly, on top form, 4v4 है क्या बात है I do think Aurora beats them out on that. NGX versus Aura. Coops and Lord though, deadly duo. Prime at the two nades, Doc is up front. Is this the dockening once again? Takes two nades, just will tank them. But there's two more coming, and I'm not sure he'll be able to do the same on the next. They both go wide. He's going to push forward into the smoke. We'll have to swing back, but one player goes down the back line. It is top, and now Aurora's down to two. Enigma Galaxy is making this happen. They're standing tall right now. They want to convert this one into a chicken dinner win on game one as two of Aurora's players buckle under the pressure. It's over. Ruthless falls. It's all down to the last man in Joel. They need to isolate the P because he hits Lord heavy, but he's gone. Cut short. The Aurora is gone. That is insane. That is insane, Jackie. I got to eat my words on that one as well. I mean, for Enigma Galaxy, what a good game. Did say though, Aurora do like to choke. The crazy thing is, it was probably the most fitting head-to-head of two teams we could have. Yeah. Similar contrasted play styles, the way they split off, confident their 2v2s, the off-angle aggression. But I started to get worried, man. Pointing to the map feed, seeing Doc charging in. Slight timing on the nades. It's the docketing, dude. It's the docketing. It's happening again. 5, bro. Just absolutely come alive on that one. Yeah, wonderful stuff. Actually wonderful. I still think Aurora played that game very, very well, though. I think when you watch them in those moments, they are so clean on the shots here and there. I think it's just a little bit of a stumble towards the end there where you're trying to pull yourself out of those buildings. That is hard, getting back across the road. They don't have a huge amount of space to play with. Enigma Galaxy also has the high ground, so they set up well on this one. But yeah, good stuff from Enigma Galaxy. Again, Lord and Coops, though. That is a great duo. We're seeing a lot of fantastic duos be born here over at EWC and really spread. नहीं भाई वहां पे गड़बड़ा दिया बे वहां पे ऐसे नहीं करना चाहिए था तुरंत जाना भाई गाड़ी लेके तुरंत जाना चाहिए था कोई दिक्कत नहीं पहला मैच है कोई दिक्कत नहीं पहला ही मैच था कोई दिक्कत नहीं गाइज My name's Barney Banks and I'm joined by S2G's very own Badish. Badish, how's it going, man? Fine, bro, you? I'm very well, thanks. I mean, let's talk a little bit before we get into the nitty-gritty of the teams and how things are going for you guys. Let's talk a bit about Paris. How's the Esports World Cup been for you so far? Paris is amazing, bro. Eiffel is so good. The castles are Notre Dame, the Pantheon. Everything is good at the Paris. But Arena is more than good. There is, I don't know. It's my first time at the World Cup and it feels so good. It's amazing, right? Yeah. Let's talk a little bit about your team, S2G. Let's talk about the preparations coming to EWC. Were you guys, preparing here on site or did you boot camp in Turkey? What was the plan? Just we did boot camp at the Istanbul. We have a gaming house at the Istanbul. And before tournament, we go to China, the PMI, Macau invitation tournament. And I don't know, I feel we're gonna take this. You feel like we're gonna get this? Yeah. Well, S2G's run through the group stage was really good. Now we're in the finals. How are the team feeling? Are they nervous? Are they excited? Like, what's the vibe from the team right now? They seeing me, my players are seeing me. Maybe we're gonna get the first place, maybe we're gonna get the sixth place. Oh, they don't know. Yeah, but I think we're gonna handle this. It's a very strong group of finalists, isn't it? So if you get on a roll, like momentum is a big thing in this game. If you start playing well, you could take it all. But do you have faith in them? Do you think they can do this? Yeah, I believe them. I believe too. Badish, thank you so much for joining me in this interview. I really appreciate it. Enjoy the event and we'll see you later. See you. Back to you guys.
Day number 1 in serious business here now for PMWC at EWC 26. And what better way to start it off than I have two legends here from India to talk about what's happened so far, as well as what may be to come. So, of course, I have Admino and I have Aru here, as we have Godlike and, of course, Orangutan going to be representing from India. So, I guess I'll ask you, Admino, first. You guys must have watched the survival stage. What did you think about the teams and gameplay overall from the survival stage? It was kind of a little passive, like the previous group were too much aggressive, or maybe they were one more chance, that's why they were aggressive, and this was a survival stage. But I think Tianba got the momentum, and the top 6 were expected, as we have decided already in the podium thing that we have a fun activity over there. Yeah. And I think Alula gave a little bit surprise, and I hope so they perform good in grand final also. But I'm hoping for Tianba to carry forward the momentum that they have already got in survival stage. How about you, Aru? What did you make of the survival stage? We tried to grab as many things as we could from the playstyles and the lobby structure to get a better understanding and चलो एडमिनो भाई दिखा दो भाई अपना गॉडविनो वाला पावर 2 नॉक तो हो गए थे तीसरा नॉक बच गया बे don't really वो जो fear तीसरा anyone, नॉक हो जाता but भाई there मजा are था भाई many respectable opponents that we need to respect in चिकन game था as भाई well, चिकन था चिकन as मिस much कर as दिया we should, not more not less. So yeah, we are confident coming to the finals and looking at the survival stage. We know that when teams have like only one last chance, it's like they play more in pressure, and yeah that's it. All right, so I wanted to actually ask a bit of a fun question since we've got two fantastic teams here. I'll start with you, Aru. If you had to take a player from Admino's team and add them to your roster, who would you pick and why? Maybe Espoir, because he's really consistent. Okay. Same question to you, Admino. Who would you take from Aru's team and why? Aru answers because he's a good idea. What do you think about that? You think you're a good IGL? You think that's fair? I don't know, I just work. All right, so kind of final thoughts, kind of look at the finals as a whole here. I'll start with you, Admino. Well, what's your expectations here for the final? Obviously, it's an amazing lineup of 16 teams, arguably one of the best lineups of all time here at PMWC. So how do you think your chances are here? Well, I wouldn't be saying anything. Perfect. How about you, Aru? What are you thinking for the final? I'm just here to play and enjoy the 18 games because I love this game. I don't want to feel any pressure or, set unnecessary expectations from myself. If we are going to enjoy the game, inside the game, then we are definitely going to perform well as well. Gentlemen, thank you very much for joining me and best of luck today. Thank you, Kalaris, for that amazing interview there with Admino and none other than Aru. But it does end up coming down to Aurora at the end. Even though Nigma Galaxy won, congratulations, Nigma Galaxy. I gotta give this team some props because we're finally seeing the MVPs show up for that squad. But Nigma Galaxy, Coops, especially at the end, what a surprise for them being able to come out with a win. It's so nice. Just in my notes, I just have Coops because that's all you gotta say, really. I do. Can confirm. Yeah, see that? Yeah. I can't read that. Yeah, my handwriting's not great. But Coops was awesome. I really love the jump that they're coming through throughout that game, right? They played on that edge side. They waited for their moment. They bided their time. And what I loved particularly here, Max, was चलो भाई जो लोग भी नए चैनल पर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो भाई. Super aggressive. All they wanted was space inside the zone. They didn't go for that full push and that full clear of the team. They're just like, hey, we want some space. We're going to take it from you, take a couple of points as well, and then wait some more. I really liked that from them. I have an idea, but this is just pure speculation. Maybe I'm reading too much into it, but I'm like, maybe they slowed down the fight to E-Arena, hoping Al-Ula would go for a third party, and then they could let them fight each other and pick off the rest. I don't know if that was the actual reasoning, but it's how it worked out in the end. And because of that fight in particular, they get a 23-pointer tied with Aurora Gaming. Place, and we get just pure aggressiveness right off the bat. This feels like a PMWC finals, baby. As 3 teams were able to get 13 or more eliminations. Aurora with the 17. Tiamba started off hot as well. Man, I did not like. We came out of that survival. It's just not.
I just love the fact, right? I'm just getting so excited, so passionate here, that the fact that they carried on the same momentum that they had. I mean, it was exceptional from them. Obviously took the hot drop seriously, which, you know, shout out, love a hot drop taken seriously, and were able to capitalize and obviously recover the team. And this is, it's just a crazy storyline from them, from bottom to the top. And I mean, I'm so excited to see what they can do next. Yeah, for Tiamba, they're looking to carry that momentum that we saw out of them in Survival. Something that you actually enjoyed watching that game is the plan B, the adjustments that Tiamba was able to do, Max. Because they had a great hot drop, right? I think it was, what, 9 eliminations after the hot drop? Absolute mad start for these guys. And then they start losing players. They want to go for the recall, which is usually Tinlong Garden. But then Hora, coming out of nowhere, looking to chase down the recall player, which usually is Eagle in Tinlong Garden. And Eagle instantly, instant response, seeing we don't want to go out to Hora. We're going to go for an Eastern rotation, a bit out of their way. But by doing so, he gets the entire team back up, and they get 16 eliminations off the back of that. Eagle, definitely, maybe not in terms of elims, but the MVP of the game in terms of what he allowed his teammates to do this match. Allowing the team to be able to come back, allowing the team to just be able to just be there for support. Allow the other players to just frag out. And for anybody that had Tiamba, Enigma Galaxy, or Aurora in your predictions, congratulations, because those teams have been performing quite well. If you haven't already, make sure you check out the EWC Play app. Go put in your predictions. You could end up getting some rewards there depending on what your predictions are. And no surprise here that it is Milu from Tiamba with the MVP once again. 8 eliminations. This man is just non-stop right now. He is. You can't stop this man. He's just gonna go from better to better to better performance. Here we go, the head-to-head. You're seeing here 16 eliminations versus 17 of Aura. And if I'm not mistaken, Milu had at least 8 or 9 of those. So you know how you just had some notes and it was just just Milu. Man, this man's just chasing that MVP at this point. He is. He absolutely is. QZZ though, shout out to QZZ at 1v2 onto the rest of Vitality. He was wiped out by Aura like seconds later, but yeah, it's some really, really good stuff there. There's a lot more players on the team than just Milu that are really fragging out. I mean, I was wondering going to this, are we going to get group stage Champion? Are we going to get survival stage Champion? Clearly, with this opening performance 7, it is survival stage Champion in the finals. And we're hoping that that's going to be the case. If you're a Tiamba 5, you're going to be looking really happy. If you're a 4th Rise fan, 4th Rise, so it's looking for a comeback here. Same with OG, but let's see what's going to be happening here on the second game of Pmwc at EWC 26 Finals. Second match. Thank you, Seven. Great breakdown there. Recap of what we saw on our screens live in Game 1 of Rondo. Starting to get a little bit louder in here, but Paris, I want to know, how loud can you get? Let's get some noise going! OG, good luck. It's a good crowd. It's a real good crowd here we got here in Paris. Supporting all their teams. I mean, the Enigma Galaxy crowd, they've been loud. We'll see if they can get louder. As Enigma Galaxy are doing fairly well here so far. It's really, really nice to see. I think, again, mad props to Coops. First of all, mad props to actually being here. The guy finally gets to play some matches. But yeah, the rest of the team's also looking fantastic. Ralph looking a little bit more reserved, I would say, in the gameplay, which is good to see. Holding those angles. I actually liked where he set himself up. It became a real nuisance. The big thing was, didn't immediately go down either. And I think a lot of times that's all he needs to do, because he knows the layout of the land. He knows where he needs to be playing. It's just sometimes he'll play those spots and then... So he's just letting in the rest of his team work those angles whilst he plays that off angle in a really, really strong and quite frustrating spot to deal with. But we're heading over to our angle now, so probably a little less action involved, a little bit more calm, chilled out as we head in towards the first portion of the day. Fury at last game did come down to Eagle once again. Yeah. And honestly, mate, you know, normally I think you'd favour him in kind of positions like that, where if he had to step up as a solo, it's just how late in the game it was. Drop Indian team he was up against was looking, right? Indian team ka drop class nahi hoye but hey, they've still squeezed some extra points out of it. So it's better than it could have been. For some of our other talented squads, they're far down the standings, but like we touched on, Rondo is Rondo. And now we get something a little bit more normal. Opening playing path established here, whole way down the middle. Down on that eastern side, opening in top class नहीं होना चाहिए भाई OG और Gordon है भाई Gordon on that western side.
North George. ओजी तो रुक जाएगा गॉर्डन कहां South लूटता George, वो देखो probably possible. It's just going to be a little bit more of a long approach on that one. Vital is just out early. I actually Drop don't really have a drop mind the flash. Kameshki split, honestly, over towards Stalber on that eastern side. You have a lot of position to loot. Most of the time, you're not having a second team come over here. So it's just a really good position to get set up in the early game. उला और गॉडलैक साथ में जा रहा है Man, Tiamba, we did और ओजी अपना गाड़ी लेने गया सही है ओजी का सही है There is definitely Ulf fire in those bellies और today. गॉडल साथ में Because भाई to make that push, to make that decision, to just be like, let's have a straight fight on the central compound Ulf को when दे we're सकते playing हैं। Edge, I don't know what's gotten into them, but I love it. It is so good. So many elims already, and they just go, I like the look of that position, let's take it off. I'll be having that. Fairly watery circle, mate. Starting off one of these. This has been a consistent trend, at least throughout Survival. We had quite a few very similar to this on our start. Obviously, a little bit worse for Vitality with a late rotate all the way down from Stalber with their instant drop from the plane. Yeah. It's going to be a little bit more difficult. A lot of the rotation tools will probably be removed as well. So it is going to be a long rotate for Vitality. NGX versus IDA. Might end up, or probably will end up creating a little bit more of a passive game for them, a slower game for them. 4 Thrives though, loving life. NGX versus IDA. On the eastern side, there's no one around here. It's chilled out. It's peaceful. You can get yourself set NDA up nice and versus early on one of the prior IDA. आ compounds जाओ as we head देखते हैं into 4v4 zone 2. फाइट है I think the scary thing about this one is it does eke in a little bit of डार्किंग के पास भाई डार्किंग एकदम there is a 0% possibility that this doesn't go down towards Sosnovka in the future. It still can. It could even center up around Bridge. Satan on our screens. You know what, the last game, first time I've seen Satan smile this tournament, by the way. Even when they win, he usually looks like something's gone wrong. He enjoyed that one. He did like that one. That was a nice win for him. Yeah, they were chuffed to bits. And to be fair, it was great. Satan gaya Nice head-to-head. gaya. Two very talented squads. Lots of contrast of play styles, but Enigma Galaxy proving that it was on the money today in that first game. Enigma Galaxy utility, but made every bit count. Enigma Galaxy versus Can they keep it IDA. going, though? You start well on Rondo. How does it look then moving in here to Arangao? Another chicken dinner, big placements. What are we looking at from them? That'll be a nice, I suppose, a litmus test of what the quality of this team's going to be looking like throughout the next 2 days here. Ida. These guys kind of crumbled. They made the similar approach to Tiamba actually last game, but I think what Tiamba did very differently was they isolated the Vitality compound away from Aurora, whereas Ida kind of came in from that north side and just sandwiched themselves. I thought that was a very strange play for Ida to make. I think most of the time, most teams would understand that probably don't want to place yourself between those two squads or those two buildings. They're very popular in that location on Rondo. But I don't think Ida had done badly before. They had some really cool clutch moments, some super awesome 1v3s right at the end of the games. Like, they have what it takes to be a champion, but not like that. Or stop making silly mistakes. And obviously we touched on Vitality going down kind of early into that one. 2 other squads that I'm assuming towards the end of the day will be in a very different place to where they are in the standings right now, would be both 4 Thrives and Godlike. 2 teams that have got so much firepower, even just individuals as well. Yeah. Falak gets some of that old 4 back out immediately, mate. You won't only see it, you'll hear it from the crowd. I mean, he looked happy when I saw him this morning. Ready to go. He's got a little shy smile on him as well. Quite like it. It's cheeky. He is cheeky. It is cheeky. But even when I was talking to him yesterday, he seemed like he was ready and raring to go. The rest of the team all looked happy. IQ is in high spirits, which is very, very good news for the team. Be able to give that advice and those crucial bits of information, where the team wants to go, how they want to play it out. You need all of your team to be happy. Though I am kind of worried about Godlike and Orangutan. Okay. Not because of gameplay we've seen so far, just because this is a finals at EWC. I think for them, it would be unwise not to say they're under pressure. I think if you're a fan of both these squads, and maybe today looks a little bit rough for them, I would caveat with that there is a tremendous amount weighing down on them right now, being in such a prestigious finals, versus some really damn good squads.
I'm hoping they can probably get back into the run of it, like by match 3 potentially. But if it takes till tomorrow, I think that's fine as well. OG already still showing off that they have the rotations capability to make it happen. They got far into that late game. Not a lot of eliminations, that's fine. Godlike similarly, still that aggression in play. I like to see it, but maybe not where we really wanted it to happen during that game. I think it's also for teams like that, Blank. For our other squads that were forced to play survival stage, you've had to consistently keep grinding and keep that form on the go. Yeah, exactly. You come out from your group in those top team spots, you get a few days off, but that does cool you down a little bit. And the thing that's changed is what's going on behind us. The energy in the arena, the noise, the hype. They're getting excited because 4 Thrives have made the play. That's IQ with an opening takedown. But that's the difference as well. You come back into this area, Blank. Sure, with the noise-cancelling headphones, they might not be hearing it, but I tell you what, they can feel it. The vibration. I know the floor is trembling under my feet, so it'll be the same down there on the stage for our players. And if you're trying to instantly snap back into that tournament-winning mindset after a few days off with all this going on, it might take a game to try and lock back in. Yeah. I don't like that, though, from Aurora. Because you can scout that a lot easier just by sending over towards the beachhead, having a look over towards Lighthouse and be like, okay, there's a guy up there waiting, try and check the girders. I always think it's an odd maneuver to try and just send someone, slingshot them across, and it's like, well, we know there's someone across there though, but you also just lost a player. Like, it's so early into the game, could have even just waited for zone 2. I'm curious to hear what the analyst desk has to say about that, because for me, that's just not EWC, PMWC potential. Right? That's not what that is. Yeah, the trade of it, one player's life, one of your squad mates for an information play, economically. की भी रोटेशन आ रही है, तो सब अपनी चाल यहाँ पे चलते हुए सर्कल के अनुसार कि कौन कहाँ किस कंपाउंड को टारगेट करेंगे। इस स्टेज में, इस पर्टिकुलर स्टेज में मैं और ज़्यादा फाइट अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो पॉइंट्स की भूख हुई तब जरूर फाइट होने वाली, क्योंकि मैक्सिमम टीम्स सेंटर ऑफ द सर्कल ही जा रहे हैं, कोई भी एचएस में रुकने के लिए तैयार नहीं। बाय द वे देवियो सज्जनों, अगर आप हम लोगों को सुन रहे हैं तो आज दी एक्सपर्ट्स भी एक पूरा का पूरा यहाँ पर सेगमेंट है जिसके अंदर आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल करके हमें भेज सकते हैं। जो भी बेहतरीन सवाल होंगे उनके अराउंड हम हमारा एनालिस्ट डेस्क होस्ट हर कोई चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मीनवाइल अगेन इफ यू गाइस आर न्यू आउट हियर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं बिकॉज आपका सपोर्ट है। और वी विल बी होपिंग कि चैट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हो। खिलाड़ी और मीनवाइल टीम फ्लैश के टाउन हुए हैं और ये सर्कल अभी शिफ्ट करने वाला है। ऐसे में सर्कल ब्रिज के ऊपर आ सकता है। जी हाँ, जोन ब्रिज के एरिया के ऊपर आता हुआ और मुश्किलें अब टीम्स को बनेंगी। आप ब्रिज के एरिया को अगर देख रहे हैं, लगभग 30% पानी का एरिया है, 30 से भी थोड़ा ज्यादा कहा जा सकता है इसको। तो टीम्स को मूव करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। नॉर्थन साइड पॉपुलस होगा, सदर्न साइड पर भी पॉपुलेशन होगी। मैं तो नीचे सदर्न साइड में उल्फ को देख रहा था। 2 प्लेयर बिल्कुल वेस्टर्न साइड चले गए, 2 प्लेयर अभी भी ब्रिज पे रुके हुए। करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? थोड़ी अलग कहानी उनके तरफ से रची जाने की कोशिश। अगर अरोरा के सामने चले गए तो उन 2 प्लेयर्स को शायद बच के निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अरोरा के पास वो 3 प्लेयर्स वहीं पे मौजूद हैं। हाँ, एक प्लेयर्स को गवाया गया, बट 2v3 फाइट में आई थिंक उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। बट उल्फ जो कि ब्रिज पे थे, ईस्टर्न ब्रिज के कॉर्नर पे, वो अब अरोरा की तरफ आना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं इसलिए इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि अरोरा पिछले मैच में जो डोमिनेशन उनकी तरफ से आया था, फिनिश के लिहाज से एक इंटरेस्टिंग बैटल वहाँ पे जरूर होने वाली है। बट जोकर एक अच्छा मौका कि इस रोटेशन को रोका जाए, बट टाइमिंग आप देखिए, स्काई पीछे से आए, अपने टीममेट को उठाया और निकल भी गए। जोकर इस मंजर को देख भी नहीं पाए कि हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि वहां स्मोक को रखा था इसलिए वो देख नहीं पाया। अरे ओजी बस से टीएनमा हो गया भाई, विस्फोट गिरने वाला है शायद। बच के भाग 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 कम एचपी के साथ लेफ्ट एंड राइट करने की कोशिश। भाई क्या बचा है भाई, क्या बचा है। लेकिन आरू क्या तैयार है, चेस 9 का इस्तेमाल कर रहे थे वो जरूर। उनको टेक डाउन किया जा चुका है। अकेले अकेले भाई, अकेले अकेले क्यों भाई? कम हियर एंड एवेंजर्ड क्यूबी ग्रुप स्टेज के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक दिखे थे।
और अब पहले गेम के अंदर पोजीशन पॉइंट्स के लिए तो गए, बट दूसरे गेम के अंदर वो कहानी नहीं हो पाई। एंड व्हाट्स हैपनिंग आरू? पिछले गेम में भी ये नाइस वन आरू, नाइस वन फिनिश करो। किया गया आतंकी वो घर के अंदर गए, अरे राइट टेक अप, लेकिन वो डैमेज उतना नहीं दे पाए। बेस्ट गॉड उसके काफी करीब खड़े हैं चुके नीचे जरूर, लेकिन क्या वेपन नहीं आ पाया, जिसके कारण ओरंगुटैन दिक्कतों के अंदर आई है। बैकएंड से भी शॉट्स पड़ रहे थे एंड ओरंगुटैन भाई पहला नाम इस गेम से बाहर होता हुआ। 1 पॉइंट लिया बस। के बाद जो स्टार्ट आ रहे थे वो अभी तक बिल्कुल भी उन्हें मिला नहीं है। पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली, आने वाले मैच में चीज़ों को बेहतर करने की, शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। बट आई नो आरू अभी बिल्कुल मेंटली उतना ज़्यादा गिव अप करने की तो बात ही नहीं हो, और ज़्यादा यहाँ पे सोचना स्टार्ट कर दिए होंगे कि क्या मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, आने वाले मैच में हम क्या और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि बस सर्वाइवल स्टेज से पहले जब हम उस ग्रुप स्टेज पे थे कुछ इसी तरीके के मंजर हमें वहां पे भी देखने को मिले थे, पर टाइम के साथ चीजें बेहतर हुई। बट सर्कल अगला शिफ्ट ले चुका है, ईस्टर्न साइड को काफी ज्यादा फेवर करता है, और ऐसे में ब्रिज का जो हिस्सा है वो अभी भी कांस्टेंट है, वाटर एरियाज अभी भी हमें देखने को मिल जाने वाला है। ऐसे में गॉडलाइक तो वेस्टर्न पार्ट में उल्फ के काफी क्लोज आ चुके हैं। इनफैक्ट तियानबा उनके अगेंस्ट उनकी बैटल की पॉसिबिलिटी रह सकती है। बैटलिटी वो भी और थोड़ा सेंटराइज करने का वो प्लान बनाते हैं, बट फ्लैश खुश होंगे, उनके पास वो एरिया काफी ज्यादा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। S2G वाटर एरिया से रोटेट कर रहे हैं, और आई थिंक उनके पास हवरक्राफ्ट है जिसका बेहतर इस्तेमाल करने वाले इस पर्टिकुलर स्टेज पे। बाय द वे इस गेम के जोन का पैटर्न अगर बताया जाए, पहला सर्कल और चौथा सर्कल हार्ड शिफ्ट होता है। अब वो चौथे सर्कल का हार्ड शिफ्ट ऊपर की तरफ को जाएगा भी या वो ब्रिज और नीचे की तरफ को आएगा, क्योंकि अगला सर्कल चौथा होने वाला है और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर वो बनेगा। मीनवाइल मान्या यहाँ पर अपने आप को किल करने की पूरी कोशिश की, ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज भी दिक्कत दे सकता था। इस पावर सामने की तरफ को है, तियानबा के साथ फाइट ले रहे हैं ये खिलाड़ी। तियानबा हमें पता है पहले गेम के अंदर किस तरीके से खेली थी, मीलू को टेक डाउन किया जा चुका है ऑलरेडी, तो कोशिश होगी प्लेयर्स की ये और अच्छी फाइट को बनाने की वो कोशिश कर सके। 100 में बैकएंड पर मान्या वापस हील अप होकर के आगे आ चुका है, बाकी लेकर के जा रहे हैं, क्या ये सही रहेगा? इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश, ईगल एकिंग फाइट से पीछे हटने की उनकी कोशिश है। मीनवाइल ऑरोरा के प्लेयर्स अल-उला के साथ फाइट ले रहे हैं, जिसमें डॉग का भी नुकसान हो चुका है, मतलब ये टीम अपने दूसरे खिलाड़ी को पोटेंशियली खो सकती है। जी हाँ, खैर ये ब्रिज की बैटल थी और S2G भी इनके पीछे से आ रहे, तो अरोरा के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा साधारण मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। इनफैक्ट ULA के लिए भी चीज़ें आसान नहीं होने वाली। रिफ्यूज़ उन्होंने गाड़ी पे सीट स्विच किया और उसके बाद बस गो विद द फ्लो, ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन अपनी रिवील नहीं कराना चाह रहे, बट स्प्रेस के बाद अब क्लैरिटी मिल चुकी है। अरोरा एलिमिनेशन के कगार पे, रिफ्यूज़ कुछ ट्राई करेंगे उन प्लेसमेंट पॉइंट की तरफ जाने के, लेकिन यहाँ से लग नहीं रहा है वो भी इतना ईजी इनके लिए होने वाला है। सर्कल के साथ साथ दो टीम्स के रूप में उनके सामने वो चैलेंज काफ़ी जल्दी आने वाली है। एक बार फिर से गाड़ी चला के थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में जाने का प्रयास, लेकिन पोजीशन पूरी तरीके से उनकी रिवील हो चुकी है। एचपी काफ़ी ज़्यादा कम की गई। ULA जो ब्रिज क्रॉस करना चाह रहे थे, अब क्रॉस करना भी इसलिए डिफिकल्ट हो गया क्योंकि सामने टीम फ्लैश की वो चैलेंज उनके आंखों के सामने। बट अरोरा उनका एलिमिनेशन होता हुआ, यही है अनिश्चितताओं का खेल, जहाँ पे पिछले मैच में हमने डोमिनेट करते हुए इस टीम को देखा, हर तरफ जाके फिनिश निकालते हुए देखा। दूसरे मैच में आके दूसरी टीम जो कि इस लॉबी से बाहर कर दिए जाएंगे, 0 फिनिश निकाले, मतलब 23 पॉइंट के साथ ही उन्हें हम अगले ओवरऑल स्टैंडिंग में देखेंगे। खैर उनके पास पहले मैच के बाद इतने पॉइंट्स तो आ गए थे कि ज्यादा दिक्कत का विषय उनके लिए नहीं है, वो आने वाले मैचेस में और अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। बट सर्कल अगला शिफ्ट लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार, थोड़ा सदर्न साइड को ही फेवर करता, और ऐसे में ULA S2G ब्रिज का उपयोग अभी भी कर सकते हैं। और जैसे कि बात करी गई थी कि सर्कल कोई ना कोई डायरेक्शन अपने लिए पकड़ सकता है, अल-उला के प्लेयर्स मूव करना शुरू कर चुके हैं। फ्लैश के कुछ खिलाड़ी होंगे जो शायद उन पर शॉट्स डालें, बट S2G अब हर किसी की नजर ब्रिज पर होगी। सोचिए एक टीम ब्रिज के उस पार है और सारी टीम्स बाकी ब्रिज के इस तरफ को आ चुकी हैं। ऐसा सर्कल भावनाओं के साथ खेल सकता है। गैलेक्सी एक प्लेयर उनके भी डाउन हुए, टीम फ्लैश उन्होंने अपने खिलाड़ी को बहुत पहले गवाया था, अब एक और प्लेयर को डाउन कर सकते हैं। निग्मा गैलेक्सी की कहानी दिक्कत भरी हो सकती है।
औरोरा का अर्ली एलिमिनेट होना, और अगर निग्मा गैलेक्सी और तियानबा भी अर्ली एलिमिनेट होते हैं तो शायद टॉप पोजीशन की जो जद्दोजहद है वो टीम्स के मन में रहेगी, क्योंकि आपको याद दिला दे तीसरे दिन स्मैश रूल लागू हो जाएगा और वो स्मैश रूल बहुत सारी चीजें बदल सकता है। अगर पहले पोजीशन वाली टीम एक बहुत बड़े गैप के साथ दिखा दो, इंडिया वालों केवल 10 पॉइंट को ऐड किया जाएगा और उनको वहां से पार पाना होगा। तो अगर टीम्स एक दूसरे के करीब रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स टेबल, तभी जाकर के स्मैश रूल का और ये ज्यादा वर्सेस टियनबा, मल्टीपल ये वन टीम्स के हिस्से में आ सकेगा। इंटरेस्टिंग ये वर्सेस टियनबा है। से बट तियानबा उन्होंने सीधा यहाँ पे स्लैम इन कर दिया। इनिशियल नॉक उन्हीं के ऊपर तियानबा का एक नॉक हो गया 40 अरे क्या बात है। यहाँ पे कहानी बदली जा रही है। तियानबा पिछले मैच में इन्होंने भी फिनिशेस काफी अच्छे तरीके से बट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके लिए बढ़ता हुआ। ई अरीना भी फाइट बैक करने की कोशिश में मल्टीपल यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट मान्या उनकी एंट्री यहाँ पे होती हुई स्प्रे करके सरप्राइज वहाँ पे करने का प्रयास, बट थर्ड पार्टी स्प्रेस भी आ रहे, समझ के यहाँ पे रहने की जरूरत। मान्या उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, रिकवर यहाँ पे करना पड़ेगा। 100 में एडमिनो एस पावर सभी की एंट्री होती हुई। अगर नंबर वाइज बात करें तो गॉडलाइक के पास पूरा नंबर है यहाँ पे, इन दोनों ही टीम को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सरप्राइज लेके आप देखिए तियानबा के एक प्लेयर बिल्कुल कॉर्नर पे जाके बैठ चुके, वो अपनी पोजीशन रिवील नहीं करने वाले, और इस बात में अगर हल्की सी भी चूक हुई नुकसान हो सकता है, जो कि शुरुआत होता हुआ मान्या उन्हें टेक डाउन किया गया। और ये मान्या का पहला नहीं, ये दूसरा नॉक है। इसके पहले वो थोड़ी देर पहले नॉक हुए थे जब उन्हें रिवाइवल दिया गया था। ये अरीना के प्लेयर्स अबे क्यों रुक गया भाई? रिकोशे करा करके ग्रेनेड डालना चाहते थे, इनफैक्ट एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। अरे स्पैवर भी गया भाई। नॉक who's there through the smoke, ये काम कर रहे थे, बट सोमे नाइस वन सोमे, सर्वाइव कर पाएंगे ये? एक आखिरी अरे रे नहीं यार, गलत फाइट हो गया भाई। बान हाउस के अंदर जो हुआ उन सब का इकलौता विटनेस सोमे पीछे होकर के बैठ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर वाइटैलिटी टू मे बी अनलीश देयर ब्रूटैलिटी। एक्सेल आगे की तरफ को आ रहे हैं, सोमे की तरफ से भी ग्रेनेड्स आ रहे हैं। सोमे के पास मल्टीपल ग्रेनेड्स है, लेकिन ये अगला ग्रेनेड रिकोशे होकर के शायद खराब कर सकता था। अपर एरिया पर जा चुके हैं, सोमे अपने आप को वहीं रखना चाहेंगे, शायद इस चीज का इन्फो नहीं मिल पाया है। वाइटलिटी को भी क्लैरिटी नहीं है कितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे, इसलिए अगर आप देखिए सारे विंडो से सारे कॉर्नर पे वो ग्रेनेड करने की कोशिश में लगे हुए, बट होरा की तरफ से आप देखिए वो शॉट नॉक निकाला गया एक्सेल के ऊपर, और सर्कल का श्रिंक भी आ रहा है। एक्सेल वो प्लेजों के बाद हल्के फुल्के डैमेज लेंगे। सोमे अगर यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश की गई तो बहुत इफेक्टिव साबित होने वाले, बट सोमे क्या वो इंपैक्टफुल ग्रेनेड कर पाएंगे? सामने से ग्रेनेड करने के लिए नीचे आए थे, लेकिन एट द एंड अटैक किया गया, और इसी के साथ सोमे उनका भी अंत होता हुआ इस पर्टिकुलर रैंगल से 11वें स्थान पे गए। पॉइंट्स हाँ फिनिशर्स के रूप में आए, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। क्लाइम करने की इन्हें जरूर जरूरत पड़ेगी आने वाले मैचेस में। ईडा वर्सेस ईएलएफ की बैटल की शुरुआत हुई है। टोललेस उनकी दिक्कतें काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है, ईडा भी हो चुके हैं। स्कारफेस पीछे से बस एक और अच्छी ओपनिंग की दरकार में मानो बैठे हुए हैं, और अब सर्कल वो भी चैलेंज बढ़ाने के लिए तैयार है। अगला शिफ्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो इस फाइट को जल्द से जल्द समाप्त करने की भी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप ज्यादा डिले करेंगे, मल्टीपल टीम्स जिन्हें उसका फायदा हो सकता है, और इन सारी चीजों के बीच में वो स्मोक के सहारे कॉर्नर लेके बैठे हुए कि कोई इधर नहीं आ पाएंगे, और वो रिवाइवल देने की कोशिश थी, हालांकि उस रिवाइवल को रोका गया, लेकिन ये रैंडम शॉट भी काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट करा के जाएंगे। एक बेहतर कनेक्शन उनके तरफ से। वाइटलिटी के प्लेयर्स भी कोशिश करेंगे फाइट लेने की, हालांकि मुश्किलें काफी ज्यादा होती है। वुल्फ के प्लेयर्स स्कारफेस ये पकड़न पकड़ाई के खेल के अंदर आ चुके थे, लेकिन बैकएंड पर और भी तो खिलाड़ी हैं जो ऑब्वियसली। चलो भाई, जो लोग भी नए चैनल पर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो। और उल्फ ये भी एक नाम जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को गवा दिया, बट वाइटलिटी ये तो हर जगह पर घुस-घुस के मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन वैसा नहीं होता जैसा इन्होंने कुछ दिनों पहले अपना प्रदर्शन निकाला था। फेडरलिस्ट क्या मैं फिर से वो पीक्स देखने की को मिलने वाली है जो इन्होंने सबसे पहले दिन दिखाए थे, सबसे पहले गेम में। उल्फ क्या बात है, 4 लोग देख रहे हैं भाई, कर दो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इसके ऊपर ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज आया था, रेजी को 40 वर्सेस 16 हो गया, होने वाले हैं, मौजूद होंगे। स्काई फिनिश हो गया। हरी झंडी नहीं दी गई है कि आप जाइए बाहर, आगे जाकर के रश कीजिए। लॉबी में अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस है 5वें स्टेज के अनुसार, और टीम थोड़ी सी कम हो गई है, इसी की वजह से
ज्यादा जल्दबाजी अब यहाँ पे नहीं हो रही, टीम्स पूरा टाइम ले रहे हैं फाइट करने से पहले, और ये बेहतर भी है। वो जल्दबाजी में हमने रिजल्ट्स कई बार आपके अगेंस्ट भी जाते हुए देखे। एनएसआर कॉर्नर लेके बस कर रहे हैं इंतजार कि सामने से कुछ गलतियां हों और उसमें थर्ड पार्टी के माध्यम से वो फिनिशर निकाल के जाए, ग्रेनेड का आदान प्रदान, बट कुछ भी फायदा हो नहीं रहा है। सभी के पास एक परफेक्ट कॉर्नर है जहाँ पे उनका मानना कि ग्रेनेड आ नहीं सकता, और अभी तक तो सही भी साबित हुए। वैटालिटी उस ग्रेनेड के साथ एंट्री बनाने की कोशिश में, बट आप एनएसआर को देखिए, फील्डिंग पूरी तरीके से सेट की जा चुकी है कि फाइट होगा, ये घुसेगा। बीच में जब भिड़ंत होगी तो हमारी भी एंट्री होगी। और देखिए इनिशियल नॉक वैटालिटी काफी आसानी से निकालेंगे, कंफर्मेशन भी निकाला जा चुका है, और बस मैं वेट कर रहा हूँ कि एनएसआर क्या अटैक करेंगे या फिर करेंगे इंतजार। वैटालिटी waiting on it. Hyunbin हाथ लगाया हुआ एक शेर पीछे मुड़ गया। वो इंफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते थे, so easy. Hyunbin एक ऐसी मछली बने थे जो उस जगह पर अपने आप को बस टिका के रखना चाहते थे, और so easy की वो गोलियां थी जो आकर के छूने वाली थी। टीजी एक प्लेयर को उन्होंने भी टेक डाउन किया है। सो इजी अब आगे की तरफ को मूव करना चाहेंगे। दिस इज द ग्रीन सिग्नल, दिस इज द ग्रीन लाइट, लेकिन सो इजी के ऊपर का डैमेज शायद थोड़ी देर के लिए खिलाड़ी को रोक सकता है, लेकिन देखिए रेज़ाक ग्रेनेड भी आया, इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश। वाइटालिटी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। एक और थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पेट्रोलेस उनका रिवाइवल वो नीचे के एरिया पर थे, इसलिए उन्हें दिया जा सका। पेट्रोलेस को हमने देखा था लास्ट टाइम क्या कमाल खेल रहे थे, एक्सल को हमने देखा था लास्ट टाइम क्या कमाल खेल रहे थे। ये ग्रेनेड थोड़ा सा पीछे की तरफ को रह चुका है, बट अब लो ग्राउंड हाई ग्राउंड उसी चीज की पूरी कहानी है। बच के नहीं बस फर्स्ट पॉइंट पे ग्रेनेड की टाइमिंग प्लेसमेंट इतनी लाजवाब थी। 2 बार वो ग्रेनेड्स इसलिए बचे क्योंकि गाड़ी के पीछे वो अपने आप जब गाड़ी के पीछे गया वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। टीजी व्हाट आर यू डूइंग, इतने ज्यादा ओपन से वो शॉट लेते हुए आगे बढ़े, और एनएसआर जिनकी फाइट यहाँ पे जीतने के चांसेस हम मान के चल रहे थे, उनका एलिमिनेशन होता हुआ। और वैटालिटी क्लाइम करने की शुरुआत कर चुके ओवरऑल स्टैंडिंग में। इस रश में, इस फाइट में, इस अंडरस्टैंडिंग में एनएसआर कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। वाइटालिटी ने अपने घर को डिफेंड किया, वाइटालिटी ने और रिसोर्सेज ले लिए, वाइटालिटी ब्रीदिंग स्पेस S2G वर्सेस उला आ चुकी है खेलने। S2G भाई 2-2 ओवर क्राफ्ट है बे इस पे। क्राफ्ट्स लेकर के आए हैं आप, मल्टीपल। ये पिछले कुछ मिनटों से हवरक्राफ्ट के साथ पानी में ही है, वो सरफेस की तरफ आए ही नहीं थे अभी तक। सब लड़ रहे हैं, ये घूमी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से करके जा रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट एट दैट पॉइंट कमाना वो मुद्दा है, पॉइंट कमा रहे हैं। और अब जब एंट्री आएगी तो फिनिशर्स भी निकालेंगे, क्योंकि S2G इन्हें कम मत हाकिएगा। इन्होंने भी लॉबी को काफी अच्छे तरीके से डोमिनेट करके सीधा ग्रैंड फाइनल में अपनी क्वालिफिकेशन को तय किया था। लॉस्ट नहीं कहां फेंक दिया भाई। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नॉक निकला तो फिर फाइनल अटैक भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हवरक्राफ्ट है, उसके साथ चाहे तो सीधा अटैक भी कर सकते हैं उन इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन अपने हवरक्राफ्ट को बचा के रखना चाहते हैं, ताकि जब यहाँ से ओपन ग्राउंड की तरफ जब सामने रोटेशन की बारी आएगी, इन्हीं हवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा S2G की तरफ से, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने अपोनेंट को टेक डाउन करने की जरूरत। 40 पलक वहाँ पे टेक डाउन किया गया है पूरा के अगेंस्ट उनकी बैटल की शुरुआत। देखते हैं किस तरफ ये बैटल जाएगी, क्योंकि चीजें अभी भी संभली जा सकती है। रोंडो लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड 40 टेक डाउन हुई थी, हमने देखा था वो फाइट। इस बार फिर से एक लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड फाइट है। खैर उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे इसके साथ। अरे कहाँ घूमने निकले हो, निकल करके लड़ लीजिए थोड़ा सा, लेकिन जब निकले मुश्किलें बहुत ज्यादा बनी है। आलूला के प्लेयर्स के लिए they were taken down, call an ambulance, but not for me. Meanwhile Vitality उनके 2 प्लेयर्स पिक हो चुके हैं, फेडरलिस्ट आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें के अंदर वो भी आ सकते हैं। फेडरलिस्ट को भी पिक किया जाएगा। 5 टीमें, 17 खिलाड़ी जीवित, and now we move forward slowly to the circles of death. अर्ली फाइट्स काफी ज्यादा हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए वो खूब स्कोप भी गिराएंगे, मैच से बाहर भी करेंगे। क्या बात है, काफी बेहतर वहां पे क्लाइम उनके तरफ से भी होती हुई। हाँ वो गलतियां हुई पहले मैच में, लेकिन इस मैच में आप देखिए 6 एलिमिनेशन ऑलरेडी निकाला जा चुका है उनके तरफ से। बट बोलते ही IQ उन्हें वहां पे टेक डाउन किया गया। रिवाइवल की वो जरूरत, थोड़ा स्लो अप्रोच। और एक चीज और बस हाईलाइट करना चाहूंगा, NGX जो पिछले मैच में चिकन निकाले थे, इकलौती टीम है उस पोडियम इनफैक्ट टॉप 5 में जो सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी सारी की सारी टीम 9वें से 14वें स्थान वाली बची हुई है। समझ गया, बट वो टॉप 8 में इकलौती टीम है।
Think about it. Top 5 की आपने बात करी, top 8 में then comes Splash, 4 thrives, S2G, होरा के players, उनको भी finish points चाहिए. Lost, उन्होंने गैलेक्सी के राउफ को टेक डाउन किया. आपने बोला पनौती लग गई, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है. 4 thrives के भी players इस समय के लिए उनको खुद को सर्कल में आना है. जोन का डैमेज 7 सर्कल है, एक्सपोनेंशियली डैमेज बढ़ता है एंड होरा के प्लेयर्स के साथ उनकी फाइट है. अब 4 thrives खुद को अलग-अलग स्प्लिट्स के अंदर रखी हुई है. बट होरा के जो प्लेयर्स हैं वो 2-1 का स्प्लिट करके रखे हुए हैं. ऐसे में जोन पहले आप प्रायोरिटाइज करेंगे, आप पहले फाइट लेंगे, क्योंकि आप फाइट लेते हैं सर्कल आएगा, ब्रीदर नहीं मिलेगा. कामिकाज़े S2G आगे आई तो थी दिक्कतों के अंदर. उनके ओपोनेंट्स आए हैं, 6 एलिमिनेशंस हैं इस टीम के पास. जस्ट डूइंग बॉन्कर्स स्टफ. हालांकि 4 thrives IQ को टेक डाउन किया जा चुका है. होरा अपने 3 प्लेयर के साथ है, उन्हें अटैक अभी के अभी करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर वो रिवाइवल अपोनेंट यहाँ पे कर लेते हैं तो फिर नंबर गेम का एडवांटेज उनकी तरफ चले जाने वाला है. S2G जो हवरक्राफ्ट के साथ चल रहे थे, एक प्लेयर सर्कल के अंदर आ चुके हैं, लेकिन बचे हुए प्लेयर को अब दौड़ के जाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनके हवरक्राफ्ट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा चुका है. होरा थोड़ा फंसते हुए यहाँ पे जरूर दिख रहे हैं. एक प्लेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है, मिनिमम आप में आप देख सकते हैं थोड़ा पीछे वो चल रहे थे और इसी के कारण वो फाइट करने की शुरुआत की गई और T24 उन्हें यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा. लग तो रहा है कि होरा यहाँ पे फाइट बैक करना चाहते हैं. IQ अपने नंबर्स को यहाँ पे संभालते हुए, अपनी टीम को यहाँ पे संभालते हुए सामने वो रिकवर करने का मौका चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वो रिकवर करने का मौका दिया नहीं गया. आखिरी प्लेयर वो अब सीन में आते हुए क्या यहाँ पे 40 को एलिमिनेट कर पाएंगे. IQ वो रिवाइवल की तरफ जाने के बारे में सोच रहे थे. नो फियर, एग्जैक्टली नो फियर. IQ रिवाइवल करे, फाइट करे, सोच विचार अभी बहुत ज्यादा उनकी चलती हुई. अगर नो फियर ये फाइनल अटैक करेंगे 40 उनका एलिमिनेशन हो सकता है. नो फियर, नो फियर सही में नो फियर है भाई. जीतेंगे और एलिमिनेट करेंगे 40 को. अपने नाम की तरह काम करते हुए कोई डर नहीं इस प्लेयर को, और इसी की वजह से इस लॉबी में हो रहा अभी भी बने रहेंगे. वो एक खिलाड़ी with the name of No Fear, we'll talk about him, but the show goes on. कामिकाज़े JS9 का इस्तेमाल करेंगे, टॉप्स को टेक डाउन किया. सोल के कामिकाज़े 2 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए. सोल के पास अभी भी एलिमिनेशंस नहीं है, उनको अपना खाता खोलना है. बट नाउ नो फियर सामने देख भाई क्या फाइट चल रही है. इस गेम का पोडियम फ्लैश के एक खिलाड़ी के हिस्से में आ सकता है या S2G के 2, और विल इट बी नो फियर जो बैक एंड से आप देखिए वो फिनिशेस बटोर रहे हैं. क्या कमाल के तरीके से वो फिनिशेस अपने हिस्से में लेकर के आते हुए. कामिकाज़े still trying to survive. ज़्यूस उनके सामने, इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, हेलमेट वे सब चीजें डैमेज हैं, बट फर्क नहीं पड़ता. Will this be the need of fate? थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया गया. 31 बुलेट्स उनके पास. कामिकाज़े still trying to go for a fight. सोल के वो बैक एंगल पर कितना कुछ हुआ पिछले 1 मिनट में इन पूरी बैटल्स में कि अब हम फाइनल फाइट्स पर आए हैं. 1v1 है भाई. अगर आप देखें किन्हीं के पास बचा ही नहीं है. S2G अपने आखिरी प्लेयर के साथ 1v1 फ्लैश अपने क्या बात है. के साथ हो रहा अपने आखिरी प्लेयर के कोई भी साथ चिकन निकाल सकता है भाई. रिवाइवल अगर वहां पे S2G देने में कामयाब हो जाते हैं तो स्टिल उनके पास नंबर रहेगा. बट जी नहीं, 1v1 की ये बैटल होने वाली है. किसने इमेजिन किया था कि दूसरे इरांगल में जाने के बाद दिन का ये पहला मैच इरांगल के रूप में, दूसरा मैच हमारे दिन का ये चलता हुआ, और किसने उम्मीद की थी कि इसी मैच में आने के बाद एक प्योर 1v1 की यहाँ पे कहानी आके रुक जाएगी. डिसाइडर फाइट देवियर सज्जनों, और अब देखते हैं कि किन के खेमे में हमें वो चिकन जाता देखने को मिल जाएगा. एज में हैं. There are no second chances. 3 बंदे तीनों एज में अलग-अलग. Every man for themselves in a triple threat. नो फेयर ही मेरे को लगता है क्योंकि यही बीच में है. होरा ने जो चिकन निकाला वो नेम्सदाई को ट्रिब्यूट दिया था. इस बार they have to try and try to go for a fight but they could not. 1v1 के फ्लैश ज़्यूस. क्या लगता है भाई कौन निकालेगा? कौन निकालेगा चिकन डिनर? लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट ज़्यूस के पास, लेकिन ना कोई ग्रेनेड, ना कोई स्मोक, केवल एक पेड़ उनका कवर है. सोल के एक स्मोक, एक मोलोटॉव, एक ग्रेनेड. एक ग्रेनेड है इस पे. उस पेड़ का अंदाजा है. दोनों का पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं. सर्कल ज़्यूस को निकलना पड़ेगा आगे. मूव फॉरवर्ड. ज़्यूस ओपन में आ चुके. सोल के उन्होंने देखा जी, आप जाकर के देखा थोड़े बहुत शॉट चले. सिंपल एक बैटल. नाइस वन. और ये बैटल काफी आराम से S2G के हिस्से में जाती हुई. They are just getting better at getting better.
बुरी खबर यहाँ पे सारी टीम्स के लिए, क्योंकि S2G ऑलरेडी ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइम कर रहे थे और इस चिकन के बाद उस क्लाइम में और खूबसूरती बढ़ जाने वाली है। क्या बात है भाई, 4 लोग देख लो भाई, सब लोग एक साथ मिलकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, बट कहानी अभी समाप्त तो हुई नहीं है। इसी तरीके का परफॉर्मेंस मेंटेन करना होगा। हालांकि पंप है भाई, उन्हें पूरे तरीके से मोटिवेट कर रहे कोच साहब, सारी चीजें बहुत ही क्लोजली सुने होंगे और उन्हें भी लग रहा होगा कि काम बेहतर हुआ है। बट अगेन ये पहला इरैंगल ऐसा फील हो रहा है कि हम तीसरे दिन पे चल रहे थे। मुंह पे उंगली रख करके ये इन्होंने सिर्फ बाकी लोगों को चुप नहीं करवाया, ये इन्होंने उन अल्फा 7 के फैंस को चुप कराया जो इनके सोशल मीडिया पर, इनके कमेंट सेक्शन में आकर के अल्फा 7 की बढ़ाई करना चाहते थे। पहले भी इन्होंने यही कहा था कि आप लोग वापस जा रहे हैं, बट हम अभी भी यहीं पर हैं और वही चीज इन्होंने वापस से दिखाई है। S2G with one of the most brilliant individual chicken dinners करेंगे इसकी बात एक छोटे से ब्रेक के उस पार। नहीं यार, इंडिया टीम का मैच नहीं जा रहा अच्छा बे। इंडिया टीम का मैच नहीं जा रहा अच्छा। ऐसे में कैसे होई जी? अमेजिंग क्लाइमैक्स टू दिस गेम ऑफ एरैंगल। और एक चीज में मेरी हेल्प कीजिए, क्या ये S2G का पहला चिकन डिनर देखा है हमने इस PMWC में? शायद से बट दिस काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जो हमें नजर आया है, ये मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल, इट वाज सो पर्सनल। हमें समझ में आया S2G का ये जो सेलिब्रेशन बनता भी है, जैसे ओशन कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे बहुत बैंटर्स चल रहे थे। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वो सेकंड मैच भी दे चुके हैं इसके साथ। लेकिन सोशल मीडिया की बैंटर इन गेम भी काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। अभी फिलहाल अगर बाकी की टीम्स की बात करें, दर्शिता, दैट एंड गेम वाज वेरी इंटेंस। 3 टीम्स के सोलो प्लेयर्स बचे हैं, पोजीशन का अंदाजा सबको एक दूसरे की है, बट इट वाज अबाउट फाइंडिंग दोज एंगल्स। I mean, what an amazing fight it was, right? ओशन ने एक बात कही थी कि ट्रिपल थ्रेट, 3 सोलो प्लेयर्स एंड उनका वो जो इंडिविजुअल फाइट था वो था। आई फील दिक्कत हुई भी वहाँ पे क्योंकि उस एक खिलाड़ी को पेड़ के सहारे वो रुके थे वहाँ पे, बट उन्हें उस पेड़ से बाहर निकलना था, उन्हें जोन की तरफ आगे बढ़ना था एंड वहीं पे जाके जो कि वो चीज़ें उनके लिए सही नहीं हुई। बट देन वंस अगेन व्हाट एन अमेजिंग फाइट इट हैज बीन। S2G उन्हें चिकन डिनर चाहिए था, उन्हें ये चिकन डिनर मिला एंड आई फील S2G, देयर फैंस, देयर कोच, एवरीवन इज वेरी हैप्पी राइट नाउ। और कहीं ना कहीं अगर इस गेम की से हमने कंपैरेटिवली थोड़ा अर्ली एग्जिट देखा, आप देखिए निग्मा गैलेक्सी सिर्फ 3 अंक उनके पास आए, टीएम्बा के पास सिर्फ 2, अरोरा गेमिंग के पास बस 1 अंक आया इस गेम से। और वहीं अगर बॉटम पे बैठी बाकी टीम्स की बात करें, S2G सेकंड लास्ट चल रहे थे इस मैच से पहले, इस मैच में 19 अंक निकाले। टीम फ्लैश काफी अच्छा खेल के गए, 4 थ्राइव्स भी अच्छा खेली इस गेम के अंदर। बहुत बढ़िया पोजीशनिंग था 4 थ्राइव्स का, दाद देनी पड़ेगी जो प्लेज उन्होंने बनाया, बट वहां नो फियर का वो जो क्लच आया था, इट वाज फियरलेस। उन्होंने कहा मेरे पास एक चांस है, आई जस्ट get this gamble done, घुसते हैं, ट्राई करते हैं। सर आई वुड से सिमिलर थिंग हमें उस गॉडलाइक इन ई अरीना के फाइट में भी नजर आया, जहाँ पे ई अरीना के जो आखिरी खिलाड़ी थे वो अकेले बचे हुए थे। ही वेंट ऑल इन, 3 एलिम्स लेके गए थे अकेले में, लास्ट में 100 ने जरूर बचाया, बट या इट वाज अ गेम ऑफ क्लचेस एज वेल, जो हम कह सकते हैं। I mean, of course, right? But, you know, I just have my eyes on that MVP player right now. 4 thrives के ये खिलाड़ी रहने वाले IQ, what an amazing play from this man as well. Overall, अगर मैं बात करूँ तो सिचुएशन बहुत इवन स्टीवन चल रही है कुछ टीमों के लिए, बट वहीं पे जब अगर मैं मेंशन करूँ हमारे टीमों के बारे में भी, अगर OG और गॉडलाइक की हम बात करें तो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें जो हमने देखी कि लेफ्ट राइट हो रही है, कहीं कहीं पे इवन आई पर्सनली फेल्ट कि जो इंडिविजुअल फाइट्स ली जा रही है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत बन रही है। इंडिविजुअल प्लेयर्स जो यू नो इजीली फाइट में खत्म हो जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बट आई फील दैट
पहले भी ऐसी चीजें हुई थी, सर्वाइवल पे धीरे धीरे करके फोकस किया था एंड उसके बाद दिन का अंत इन टीमों ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया था. सो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम अगेन. मगर चलिए 2 मैप्स खत्म हो चुके हैं. जैसा दर्शिता आपने कहा कि शुरुआत उतनी बेहतरीन नहीं हुई है इंडियन टीम्स की. फिलहाल तो चलिए टॉप डैमेज डीलर्स हमारे सामने पिछले गेम के हैं. यहाँ पे 4 थ्राइव्स जो अच्छा खेले इस मैच में वो नजर आते हैं. फ्लैश जैसा बात करिए अच्छा खेले. S2G देखने को मिलती है. नोंगशिम रेड फोर्स नजर आती है. ईयरी नजर आती है. वाइटैलिटी जिनकी बार बार हम बात करते हैं, दैट रन इन ग्रुप बी वाज फिनोमिनल, वो देखने को मिलती है. बट फिर से इंडियन टीम्स के ऊपर आते हैं. नॉट द बेस्ट स्टार्ट. डे 1 का हाफ वे मार्कर हम हिट करने वाले हैं. दूसरा एरंगल आएगा, लेकिन ओवरऑल दिन की बात करें तो 3 मैचेस खत्म हो चुके होंगे ग्रैंड फाइनल्स के डे 1 के, और अभी फिलहाल कोई भी इंडियन टीम हमको टॉप 8 में नजर भी नहीं आ रही है. अगेन मुझे ये लगता है कि गॉडलाइक का जो अभी तक का शुरुआत हुआ है वो अपने नेचुरल गेम के ऊपर अभी फोकस करे, टेकिंग दोस फाइट्स. इस मैच में थोड़े से ज़्यादा आउटप्ले हो गए थे उस ई अरीना के फाइट में. अदरवाइज मुझे लगता है वो एक अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहे थे. टियानवा को पुश बैक किया, मिलू को टेक डाउन किया, फिर पुश किया कंपाउंड पे. उस कंपाउंड पे भी उनका जो रश था वो काफ़ी बढ़िया था, अनटिल अनलेस वो थोड़ा सा मिसहैप हो गया. बट अगेन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. बट मैं अगर ओजी की बात करूं, मुझे लगता है ओजी बहुत ज़्यादा रीडेबल हो गया फॉर द अदर टीम्स. जो स्ट्रैट के साथ वो ग्रुप ए में खेल रहे थे, द सर्वाइवल गेम, जो अलग रोटेशन वो प्लान करके खेल रहे थे, वो चीज़ हमें पहले 2 मैच में, मैं रोंडो को अगर साइड में भी रखूँ, मैं रैंक को भी पकड़ कर चलूँ, AKOP ऑफ गार्ड पहले टेक डाउन किए गए, फिर तीनों प्लेयर्स दे हैड टू रश इनटू द कॉम्पाउंड, जो शायद पिछले ग्रुप ए के मैचेस में उन्होंने ऐसे गेम नहीं खेले थे. बट अगेन आरू कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा, बट इट्स समथिंग जो मुझे लग रहा है इट्स ऑफ फॉर ओजी. तो जस्ट टू समराइज, ओजी के प्लान्स बहुत ज्यादा रीडेबल हो चुके हैं और गॉड लाइक अपने नेचुरल प्लान पे स्टिक कर लिए, व्हिच इज जस्ट रॉ अग्रेशन. दर्शिता आपके थॉट जानना चाहूंगा, बिकॉज वो नेचुरल प्लान, वो रीडेबिलिटी, रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा है, वो चीज हमें नजर आ रही है बस लीडर बोर्ड पे. आई मीन ऑफ कोर्स राइट, हम वो चीज देख भी रहे हैं जिस तरीके से वो फाइट्स में इंडिविजुअली प्लेयर्स मर रहे हैं. अगर आपको याद हो, हमें थोड़े समय पहले एस पावर भी अपने टीम से अलग देखने को मिल रहे थे. बाद में तो चलिए वो रीग्रुप भी हो गए, बट ये जो इंडिविजुअल प्लेयर्स को कॉर्नर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है टीम के लिए. एंड ओजी के अगर हम ग्रुप स्टेजेस की बात करें तो हमने एक सर्वाइवल गेम वहां पे देखा था जहां पे टीम एंड जोन तक सर्वाइव कर रही थी. आप फिनिश फीड याद कर लीजिए, 1-2 बार ऐसा हुआ था कि हमें स्टार्टिंग के टाइम में ओजी का नाम फिनिश फीड में दिखा था, वरना ओजी एटलीस्ट टिल द 10 और 15 मिनट्स मारकर वो सर्वाइव करती थी, एक पोजीशन ढूंढती थी और बहुत शांति से खेलती थी. एंड उसके बाद जाके हमने वो फाइट्स देखी थी. एग्जैक्टली. बट चलिए ये तो कहानी थी ओजी की. हमने गॉड लाइक की भी काफी डिस्कशन करी और इनफैक्ट टीम के साथ क्या चल रहा है ये तो प्लेयर्स ही बता सकते हैं, और इसके लिए हमने स्पेरो को भेजा सौम्य के पास टू फाइंड आउट व्हाट्स अप. बात करो भाई. मेरे साथ अभी खड़े हैं सौम्य फ्रॉम टीम गॉड लाइक. सौम्य, क्या अलग है ग्रुप स्टेज से फाइनल अगर हम कंपेयर करें तो लॉबी के बारे में? अलग तो मतलब अभी तक तो उतना कुछ फील नहीं हुआ है. एंड जो भी हमारे मैचेस अभी गए हैं उसमें हमारे इंडिविजुअल मिस्टेक से ही खराब गए हैं, तो उतना अलग तो कुछ फील नहीं हो रहा है. बाकी अभी खेलते खेलते पता लगेगा. नॉट अ ग्रेट स्टार्ट टुडे. 2 मैचेस हो चुके हैं, 4 मैचेस अभी भी बाकी हैं. क्या हुआ पहले 2 मैचेस के अंदर? फर्स्ट मैच तो मतलब एक टीम का स्लैम आया एंड हम एडमिन को बैकअप नहीं दे पाए, वो गलती थी. एंड सेकंड मैच भी थोड़ा सिली मिस्टेक्स हो गया, लाइक सेम बैकअप नहीं दे पाए, तो थोड़ा हो रहा है लेफ्ट राइट. कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं, 4 मैच आज के दिन में बाकी हैं. व्हाट्स द प्लान, व्हाट्स द एटमॉस्फेयर लाइक इन द टीम राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट गेम? सारे लौंडे अपने पंप ही हैं, मतलब ऐसे एक मैच पंप रहना भी चाहिए मेरा भाई. बाकी भरोसा रखो. देखो भरोसा है भाई, फुल भरोसा है. फ्लो, डू यू वांट टू से एनीथिंग? Go with the flow. Go with the flow. Let's go. Good luck for the next match. Thank you so much. देखिए गो विद द फ्लो की बात कही, और ये फ्लो मैं बोलूंगा टीम को चेयर करने का इतना ज्यादा होना चाहिए, जैसा मिस्टर शर्मा ने कहा था, सपोर्ट की सुनामी आ जानी चाहिए. बिकॉज सौम्य आई थिंक वन इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर नॉट गोना पैनिक नहीं करेंगे, कुछ बुरा नहीं मानेंगे. पहले 2 मैचेस उतने ज्यादा खराब भी नहीं गए, कुछ पॉइंट्स तो आए हैं गॉड लाइक के पास, बट अब ये फ्लो ऑफ पॉइंट्स. दर्शिता, कैन वी एक्सपेक्ट दिस इन द नेक्स्ट एंगल? टॉप 3 पोडियम चाहिए यहाँ से रिकवर करने के लिए एटलीस्ट आज के दिन में. देखिए आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट ये हो जाता है कि टीम गॉडलाइक के खिलाड़ी, जैसे अभी सौम्य ने भी मेंशन किया, उन्हें पता है कि गलती एग्जैक्टली कहाँ पे हो रही है. एज उन्होंने खुद मेंशन किया कि वो बैकअप नहीं दे पा रहे अपने प्लेयर्स को, सो दे वेरी वेल नो कि उनसे कहाँ गलती हो रही है. अब उन मिस्टेक्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करना है और इस मैच में वापस आना है, वो तो हमें अगला मैच ही बताएगा. बट ऑफकोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग अ कमबैक. एरंगल का वापस से हम वो मैच
देखने वाले, बट व्हाट एन अमेजिंग डे इट हैज बीन टुडे। पहले मैच की आप बात करो, आई स्टिल रिमेंबर द अग्रेशन कमिंग अप फ्रॉम द साइड्स ऑफ टियानवा। ओ माय गॉड, 16 एलिमिनेशंस। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने ई अरीना को फिर से देख लिया एक बार के लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक कहीं ना कहीं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, बट अभी फिलहाल बाकी टीम्स के लिए अच्छी चीज यही थी कि वो रोकने में कामयाब रहे टियानवा को। हाइलाइट्स हमारे सामने है पिछले मैच के और हो रहा है स्पोर्ट्स। आई थिंक यू हैव टू गिव देम बहुत ही बेहतरीन तरीके से नो फियर ने अपनी टीम के लिए फाइट निकाली। इस मैच में गॉडल कमबैक कर रहा है। सिचुएशन जैसा हमने कहा, नो फियर, he had to come up with a fearless mindset. क्या तो इज लाइव। अगर आप नए आए हो भाई चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। हो रहा कैंट से नजर आया, बट इट वाज जस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो अपने सारे प्लेयर्स को बचा के नहीं रख पाए। अगर वहां पे एटलीस्ट एक और या फिर 2 और प्लेयर्स बच जाते, चलो एक और प्लेयर बच जाता, इस मैच में गॉडल देने वाला है भाई, मेरे को लग रहा है सकता था हैविंग दिस काइंड ऑफ टोपोग्राफिक एडवांटेज। बट अगेन घूम फिर के बात वहीं पे आ रही है। इस मैच में हमने मेरा बहुत सारी टॉप इंडिविजुअल 3 रहेगा भाई। अगर आज मान लो तो टियानवा, एंड मुझे लगता है अगले रैंक टियानवा तो दे रहा है भाई, एनएस भी दे रहा है सिमिलर, मे बी इससे थोड़ा और ज्यादा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस हमें टीम की तरफ से नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बट एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस की बात करें, आई थिंक परफॉर्मेंस को एनर्जेटिक बनाते हैं हमारे कमेंटेटर्स की वॉइस। और पिछला जो मैच था उसमें इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल फाइट्स थे दैट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वर लेफ्ट शॉक। हमारे कमेंटेटर्स के भी कुछ ऐसे ही हालात थे। तो चलिए नजर डालते हैं पिछले एंगल की हाइलाइट्स के साथ विद कमेंटेटर्स। करके ग्रेनेड डालना चाहते थे। इनफैक्ट एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया एडमिनो, बट लुक एट मॉर्मन, नॉक who's there through the smoke। ये काम कर रहे थे बट स्टिल अ सर्वाइवर। खैर उसके बारे में बात करेंगे, बट एस्टो जी अरे कहां घूमने निकले हो, निकल करके लड़ लीजिए थोड़ा सा। लेकिन जब निकले मुश्किलें बहुत ज्यादा बनी है आलूला के प्लेयर्स के लिए। They were taken down. Call an ambulance, but not for me. लेकिन उन्हें वो रिकवर करने का मौका दिया नहीं गया। आखिरी प्लेयर वो अब सीन में आते हुए क्या यहाँ पे 40 को एलिमिनेट कर पाएंगे आईक्यू? वो रिवाइवल की तरफ जाने के बारे में सोच रहे थे। नो फियर, एग्जैक्टली नो फियर। तो मारा है लेकिन ये भाई रिवाइवल करे, फाइट करे, सोच विचार अभी बहुत ज्यादा उनकी चलती हुई। अगर नो फियर ये फाइनल अटैक करेंगे 40 उनका एलिमिनेशन हो सकता है। रिकवर करने का ट्राई, बट नो फियर आसानी से इस आखिरी फाइट को जीतेंगे और एलिमिनेट करेंगे 40 को। फॉरवर्ड ज्यूस ओपन में आ चुके सोल के, उन्होंने देखा जी आप जाकर के देखा थोड़े बहुत शॉट चले। सिंपल एक बैटल होगी और ये बैटल काफी आराम से S2G के हिस्से में जाती हुई। तो चलिए आई थिंक पिछला मैच काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। मिस्टर रावण, गॉडलाइक की प्रेडिक्शंस, क्या जा रहा है अभी, क्या हो रहा है टीम के साथ? देखिए लास्ट फाइट जो उन्होंने किया थोड़ा मुझे लगता है और बेटर हो सकता था इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उन स्मोक्स के बीच में वो उलझ गए और जब तक उन्हें पता चला वो एलिमिनेट हो गए। चलिए ये पास की बात है, मुझे लगता है फ्यूचर अब यहाँ से थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए। और फ्यूचर अभी मैं ओशन के अराउंड बात भी कर रहा था कि जो ओवरऑल स्टैंडिंग हमारे लिए अभी आई है ना, आप देखिए ईडा भी वही है, यूएलएफ भी वहीं पे, फ्यूरिया भी वही है। तो हमें बस ये अभी पहला स्टेप होना चाहिए कि इन्हें कैसे बीट करना इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप क्लैश के अराउंड क्या कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा था उनका एक ड्रॉप क्लैश हुआ था। तो पहले हमें इन्हें बीट करना है, तभी जो है ना स्टेप हमारा उस पोडियम की तरफ, उस टॉप 5 की तरफ जा सकता है। अगर हम लोग इधर उलझ गए तो फिर मुझे लगता है कि उस पोडियम और टॉप 5 के लिए चीजें थोड़ी और साधारण हो सकती है वक्त के साथ। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बात तो आपने सही की कि आगे आने वाले मैच पे फोकस रहना चाहिए टू डू बेटर। ओशन, आपसे जानना चाहूंगा ओरंगुटान की, चलिए आपके साथ डिस्कशन करते हैं, बिकॉज पिछले 2 गेम्स उतने कुछ खास नहीं गए। पिछले गेम के अंदर भी आइसोलेटेड फाइट्स के अंदर प्लेयर्स पकड़े गए एंड वेल वी नो व्हाट हैपेंड। ये गलतियां कैसे सुधारी जाएं, बिकॉज इट सीम्स लाइक अर्ली ड्रॉप के बाद तो टीम फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल रह रही है, कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन क्या थी एट द स्टार्ट ऑफ द डे? मैं आपको एकदम 2 आंसर्स देना चाहूंगा। पहला है ओजी के खुद के प्लेयर्स का आंसर, वो ये होता है कि पहला दिन तो हमारा हमेशा खराब जाता है। डे 2 से हम लोग खेलना शुरू करते हैं, हमारे लिए डे 2 हमारा डे 1 होता है जी। और जब भी उन्होंने कहा है वो जीते हैं, वो शोडाउन की भी बात है, जस्ट यू नो, और उसके पहले एक जो थर्ड पार्टी हुआ था उसकी भी बात है। लेकिन
when we just talk about actually the serious thing, वो यही आती है कि ओजी ने बहुत बड़ी मिस्टेक्स करी। सबसे पहले रोंडो के अंदर बिना बात के कुछ फाइट्स के अंदर गए थे, जब उनके खुद के प्लेयर्स रिकॉल होकर के आए थे। तो आपको समझना होता है कि आपका सेकंड चांसेस नहीं होंगे। और पिछले वाले बैटल के अंदर भी वो तो खुद बैटल में उतना घुसना चाहते नहीं थे, एक रश किया, उन्हें पता चला, एंड बोथ द टाइम्स ई अरीना हैज बीन देयर क्रिप्टोनाइट, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी रोटेशंस कितनी ज्यादा खराब हो रही है कि वो ई अरीना के सामने आ रहे हैं। अवॉइड दैट फाइट प्लीज। जी बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, अगर कुछ आप हिस्टोरिकल रेफरेंस दे दीजिए, बिकॉज तीसरे मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डे 1 का हाफ वे मार्कर बिल्कुल खत्म होने वाला है। ओशन कैन दे स्टिल मेक अ कमबैक? मीरामार्स बहुत ट्रिकी हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। हो जाएंगे, लेकिन ओजी ने अपना पहला बढ़िया गेम ऑब्वियसली मिरामार के अंदर निकाला था, तो मे बी इट कैन हैपन, बट एंगल से मोमेंटम, दीज बोथ दे आर मोमेंटम बेस्ड टीम स्लाइटली। जी बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच कास्टर्स। आई थिंक मैच का अब इंतजार रहेगा, जानेंगे आप ही की आवाज में कि कैसा रहेगा ये गेम इरैंगल का मैच नंबर 3। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है? Well, मेरे लिए I feel it's going to be OG this time. OG? Yeah. Vitality. Godel. Vitality. Alright. Okay, O for OG then. O for OG. OG. देखिए ऐसे होती है OG की वाइटैलिटी का चैंट, मेरे को नहीं पता, बट एक चीज तो मेरे को पता है, वो ये है कि मैच स्टार्ट होने जा रहा है। गेम नंबर 3 ऑफ डे नंबर, इंडियन टीम्स का कमबैक हो पाएगा? जानते इसी मैच में कमबैक हो रहा है, इसी मैच में कमबैक हो रहा है इंडिया टीम का। चलो भाई, JMD, जय माता दी। लेकिन भारत का जो चैंट 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे आया था, ओजी, इंडिया, उस चीज की पूरी कहानी लिखने की कोशिश ये टीम्स करने वाली हैं। देवियो सज्जनों, will it be the match that gives us all the best news is शूटिंग रेंज से लेकर के नोवो रेपनोय तक का ये फ्लाइट पाथ, और इस फ्लाइट पाथ के अंदर ये 64 मुसाफिर 16 अलग अलग टीम्स में विभाजित। सारे बेसिक्स आपको पता हैं, बट एडवांस सिर्फ इतना कि कोई ना कोई इस गेम के अंदर अपने लिए वो चिकन डिनर लेकर के जाएगा ही जाएगा। देखते हैं कौन सा वो नाम होगा, कौन सी वो टीम होगी। वापस से हर कोई उतरना शुरू कर चुका है, बट रावण, this game a different flight path, सर्कल का इंतजार ओजी कहाँ जा रहा है? Exactly, but overall standing मैं अभी भी बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। मतलब ये वो मैच रहेगा ओशन मेरे अनुसार, जहाँ पे आप क्लाइंब करके सीधा पोडियम में हिट कर सकते हो एक सिंगल मैच में। गाड़ी लेने जाता है ना वहाँ पे, गलतियाँ होती है तो फिर बॉटम आप से एक सिंगल मैच में आप पोडियम भूल जाइए। फिर गॉडल भी गाड़ी लेने गया है, तरीके से प्लान बना रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर इरैंगल को बहुत अच्छे मानिया क्या है, कैरेज टॉप अच्छे फॉर्म में। और ये लोग ऑलरेडी हम देख रहे थे कि बोट यार्ड में उतरा है, स्टेज में भी डोमिनेट किए थे, भी काफी अच्छे वो फिनिशर निकाल के जा रहे हैं अपनी टीम। अरे आरू भाई उधर कहाँ? आरू भाई FL बहुत बेहतर अभी तक किया है, बट जो आरू FL के साथ ड्रॉप क्लास ना हो जाए। पोचिंकी में जो एट द ड्रॉप शेयर हो चुका था, क्या एक बार फिर से वही कहानी यहाँ पे दोहराई जाएगी, यहाँ पे कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है। बट ओजी को आप देखिए, वो एक बहुत बड़ा स्प्लिट लेते हुए रिजॉक के ऊपर वो 2 प्लेयर और यसनाया के नीचे वो 2 प्लेयर फ्लैश के काफी ज्यादा नजदीक जाते हुए, बट ईडा ओवरऑल स्टैंडिंग में ऑलरेडी निग्मा गैलेक्सी और ITA यहाँ पे ड्रॉप हारते हैं, निग्मा गैलेक्सी को बहुत फायदा होने वाला है। निग्मा गैलेक्सी के रॉफ के पास एक बंदे को तो नॉक कर दिया है, वो तो बस M249 का बटन दबा करके भी घुस जाए अंदर। अरे क्या दिया भाई लॉर्ड, खा सकते हैं हूप्स को, हालांकि इन्होंने गवा जरूर दिया। और इसी चीज की हम बात कर रहे थे अभी पहले पायदान पर, काफी ज्यादा अच्छा किया, फाइट्स ले रहे, लेकिन आपने अपना एक खिलाड़ी पाया, तो शायद दिक्कत की बात बन सकती है। एक आखिरी खिलाड़ी के पास बहुत कम इनफैक्ट एचपी अभी के लिए बची हुई है, ज्यादा कुछ शायद कर ना पाए। अरे भाई प्लेयर तो चलिए डाउन किया गया, क्या मारा है बे, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। नाइस। अरे रॉफ, अरे आराम से भाई, ये स्टेटमेंट है हमारे ड्रॉप पे आकर के दिखाइएगा वापस से, आराम से भाई। अरे भाई गुस्सा हो गया ये तो। फोर्थ राइव्स यहाँ तक आ चुकी है, बट निग्मा गैलेक्सी भाई निग्मा गैलेक्सी भाई, समय हम समझते हैं निग्मा गैलेक्सी गरम हो गया भाई, अभी भी खत्म नहीं हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। टेबल टॉपर्स, आर दे रेडी फॉर अनदर बैटल? मैं एक्साइटेड हूँ अगले एंगल के लिए। निग्मा गैलेक्सी ईडा क्या एक बार फिर से कहानी दोहराएंगे, या फिर ईडा को कोई अलग प्लान की तरफ जाने की जरूरत, क्योंकि निग्मा गैलेक्सी के लिए तो फायदा हो रहा है, बट यहाँ पे सरप्राइज नहीं है अभी तक। 40 यहीं पे मौजूद है, लॉर्ड में टेक डाउन किया जाएगा, मैच से बाहर किया जाएगा। फिनिश फीड को अच्छे तरीके से रीड किया गया, जो पिछले मैच में ड्रॉप क्लैश हुआ था वो इस मैच में भी हुआ है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। और फैंस भी
सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी टीम के अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन जो नंबर्स गेम है अब वो पूरे तरीके से निग्मा गैलेक्सी के अगेंस्ट। बचे हुए 2 प्लेयर्स 2 अलग अलग डायरेक्शन में। लूट उतनी भी अच्छी नहीं है, हाँ 4v4 के लिए परफेक्ट थी, लेकिन अब इस 2v4 के लिए परफेक्ट लूट नहीं है निग्मा गैलेक्सी के पास। 2v4 आ जाओ। निग्मा गैलेक्सी ने अब 2 शत्रु बना लिए हैं अपने। पहला ईडा के प्लेयर्स जो उनके ऊपर कूदते हैं, दूसरा 4 थ्राइव्स जो इंस्टेंटली उन पर हावी हुई, क्योंकि अगर 4 थ्राइव्स की बात करी जाए हमें पता है वो कहां उतरते हैं, फेरीपियर के एरिया पर। फ्लाइट पाथ नहीं था हम मानते हैं, लेकिन लूट लेकर के या फिर लूट लिए बिना फेरीपियर के एरिया तक वो जा सकते थे। बट सर्कल के बनते हुए दिखने के कारण जिस तरीके से जोन बना है, इंस्टेंटली उन्होंने अपना रुख बदला और इस जगह पर आए, क्योंकि फिनिश फीड एक चीज उन्होंने रीड करी होगी। तो क्या निग्मा गैलेक्सी इस बात को बाद के लिए याद रखेगी, क्योंकि इस गेम में अर्ली एलिमिनेट अगर निग्मा गैलेक्सी होती है, औरोरा पर चांस होगा, S2G पर चांस होगा, नोंगशिम पर चांस होगा। अबे ले भाई, एक बंदे पे चढ़ गया। भी अगर बात करी जाए उन पे भी चांस रहेगा। विल हैव टू सी। पोजीशन रिवील हुई तो नहीं है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ये घेर लिया भाई इसको। जगह आ चुके हैं, सातन को घेर लिया। मुझे लगता नहीं है यहाँ पे अपने आप को संभाल पाएंगे। जा रहा आगे लेके बैठे हुए अगर अटैक किया गया तो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन शॉटगन इनके पास नहीं है। लेकिन यूएमपी के साथ भी अटैक करने की जरूरत क्या अभी ये ठीक समझने वाले जी नहीं भाई, इसके कुछ तो गलत होने वाला है भाई। अभी तो आपको ऊपर भी भेजा जा सकता है, इस लॉबी से सीधा अगले रैंगल की तरफ रवाना किया जा सकता है। देख लेगा मां क्या किया। इसी तरीके से सर्च करते हुए आगे गए तो वो हल्का देख लिया तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, वो एंगल मिल चुका है, इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, सप्लाई किया गया, लेकिन शॉट जो कनेक्ट करना चाह रहे थे वो कनेक्ट करा नहीं पाए। अरे क्या कर रहा है? उनके पास तो डीबीएस भी है, एक परफेक्ट शॉट की गुंजाइश, लेकिन बैकअप बुला लिया गया है। टीममेट आ चुके हैं और क्या वो नॉक निकालेंगे? जी हाँ, T24 के ऊपर वो नॉक निकाला गया, लेकिन टीम का साथ मिलता हुआ नंबर गेम का पूरा फायदा उठाया गया और आसानी से T24 उन्हें रिवाइवल मिल जाने वाला है। लेकिन ड्रॉप अपनी जगह से हिले नहीं। There was a reason कि ड्रॉप वहीं पर छुप करके बैठे हैं। He wants to play a longer game। वो तो चलिए सेटन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, उनके बारे में पता चल चुका था कि कोई प्लेयर यहां तक आया था। But that one individual, he still wants to play a longer game and fourth यहां से मूव कर चुके हैं। Vitality के प्लेयर्स बिल्कुल आसपास आए हैं। क्या फोर्थ राइव्स को उनके बारे में पता है? ये देखिए वो अर्ली बैटल जो शुरू हुई, तो सबसे पहले जो भी मिला उन्होंने उसके साथ टेक डाउन करना शुरू किया। उसी के अंदर गोलियां खत्म हो गई थी तो खंजर घोंपने की नौबत आ चुकी थी और उसी के साथ उसी प्लेस को क्या मारा था बे? उन्हें आखिरी बुलेट दाग करके एक डाउन क्या जरूर है। 10 के प्लेयर्स मीनवाइल हमारी स्क्रीन के ऊपर ये अच्छा क्वालिटी नहीं है मगर यार, नीचे और ऊपर आए थे और अब एक साथ होकर के ये मूव करना चाहते हैं। अच्छा क्वालिटी नहीं है भाई। एरिया के पास पहुंचे हैं औरोरा के प्लेयर्स भी फाइट्स के लिए तैयार, होरा के प्लेयर्स भी आसपास हैं। बहुत मुश्किलें होने वाली। औरोरा वर्सेस होरा हो गया। इस पावर नॉक फिनिश हो गया, टेक डाउन किया गया, कंफर्म भी कर दिया गया। औरोरा वो भी लिटिल बेस में गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार अलग ड्रॉप रखा गया। नो फियर, उन्हें टेक डाउन किया जाएगा और चारों तरफ एकदम से नुकसान होने की शुरुआत हुई। टॉप कंफर्मेशन भी निकाल के जाएंगे। दूसरा फिनिश पॉइंट औरोरा की तरफ से निकाला जा चुका है। पिछला एंगल इनका भी अच्छा नहीं गया था, उसे सुधारने का मौका यहाँ पे इन्हें मिला है। रोटेशन बहुत परफेक्ट, क्योंकि नॉर्दर्न साइड का ये सर्कल है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड का ये पहला स्टेज। ये स्नाया के नीचे आप अपने आप को सेंटर पे देख पाओगे और उसके अनुसार त्रिवर्णी के नीचे से मल्टीपल टीम रोटेट करके जा रहे हैं। बोटियार्ड के रास्ते एक एक करके आते हुए, बट वैटालिटी जो कुछ 100 में भी पकड़ा गया अकेले 100 में को भी लूट लिया है। ये बहुत अच्छी खबर उनके लिए, बट बुरी खबर यहाँ पे गॉड लाइक के लिए हो चुकी है। इस पावर एलिमिनेशन और अब 3 प्लेयर के साथ कंटिन्यू करने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा डिसबैलेंस तो यहाँ पे किया गया अपोनेंट को। टॉप को आप देखिए वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए वो भी वहाँ पे आ गए और एमो आप देखिए बहुत ज्यादा नहीं। अगर इसी तरीके से स्प्रे करते रहे तो ये आखिरी रिलोड है, उसके बाद वो पूरी तरीके से रिलोड यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। बट अरोरा उन्हें वहाँ पे थोड़ा परेशान तो भी किया गया और मान्या की भी एंट्री होती है इस फाइट में। मान्या का व्हीकल, सारे शॉट स्टॉप के उस व्हीकल पे लगे ही लगे हैं। वो व्हीकल पहले नॉर्मल था, अरे एमो ही खत्म हो गया इस पे यार। व्हीकल से धुआं निकलना टॉम उठा 0/0 विल नीड अ थॉमसन। यस, पिक्स इट अप। इतनी दूर उस प्रकार से इसका तो गोली तो हवा में झूम जाता होगा। शॉट अभी के लिए लगा नहीं और
जाती हुई टियानवा भी ऊपर आ चुका है भाई, थर्ड पार्टी के लिए तैयार है टियानवा। क्योंकि आप अगर ऊपर मैप पर देखें ऑरोरा के पीछे खतरा आ चुका है, वो खतरा तियानबा का है। इस मैप के का जो टेक डाउन होगा, जिस तरीके से श्रिंक होगा, उससे पता चलेगा क्या होने वाला है। यासना के ऊपर सेवर्नी के साइड पे वहां पर ये सर्कल जाता हुआ ओजी हैज प्लेयर्स, ओजी तो सेंटर में लग रहा है भाई। ब्रिज से जो यासना का ब्रिज है वहां से गॉडलाइक के प्लेयर्स भी मूव करना चाहेंगे। ई अरीना ऊपर से आ रही है, बिल्कुल ये जोन खिलवाड़ करने वाला है थोड़ी देर में। एक हार्ड शिफ्ट होगा जो यासनाया के साइड से जो रिवर है उससे या तो एकदम ऊपर या यासनाया सिटी में सर्कल जा सकता है। भाई यस इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये पूरी कहानी की कहां से आप पहले रोटेशन की तरफ जाओगे। एक तरफ वो ओपन ग्राउंड जैसा आपने मेंशन किया सिवर्नी के ईस्टर्न कॉर्नर, और एक तरफ यासनाया के नीचे जहाँ पे आपको हार्ड कवर्स मिलेंगे। दो ऑप्शंस आपके सामने रखे गए, बट ई अरीना वर्सेस अरोरा, उनकी बैटल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई। रिफ्यूज उन्हें वहाँ पे टेक डाउन किया गया। रिवाइवल की वो जरूरत इनिशियल, अगर वो नुकसान नहीं पहुंचाया गया अरोरा के ऊपर तो एक बड़े मैच की तरह जरूर यहाँ से लेके जाना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने राउंडों में कारनामा करके दिखाया गया था। हालांकि इस बार वो मौका उन्हें मिलने वाला है। ओजी वर्सेस उल्फ, टोटलिटी वर्सेस गॉडलाइक का समापन हो चुका है। आरू वो भी बहुत ज्यादा ओपन में चले गए, और भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा। विस्कॉट रिस्पांसिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज्यादा सामने साफ देखिए, वो स्लैमिंग में आगे नाइस वन विस्कॉट की जो नॉक की दरकार थी वो यहाँ पे मिल चुके। पेस थोड़ा स्लो डाउन किया जाएगा। स्कारफेस उन्होंने भी ग्रेनेड को करना स्टार्ट कर दिया है। स्कारफेस विद अ ग्रेनेड इन हिज हैंड, और वो चाहते हैं ग्रेनेड एक्चुअली स्टेशन के पीछे के एरिया पर जाए। 100 में मर गया बे, इसलिए वो लास्ट रूम पे जंप करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट मैन बचा है भाई, चेंज करी गई है। बहरन उन्हें खत्म किया जा चुका है। जस्ट टू टेल देम इट इज एन अटैक ऑन दीस टाइटंस। रिवाइवल आरू का वापस से हो चुका है। लैपटॉप का भी फट गया। स्ट्रॉन्ग ये टीम। उल्फ क्या डिसीजन है, क्या करना चाहते हैं, क्या वो यही रहेंगे क्योंकि सोललेस बिल्कुल पीछे हैं। किस तरीके से ये फाइट्स खेलना चाहेंगे, अभी रश नहीं कर सकते। रश करने का वही इकलौता मौका था। मीनवाइल एक्सेल, चलिए उनका भी खात्मा हुआ है। चलो भाई, से रोटेट करना कहीं से भी आसान है नहीं, और तियानबा जहां पे आकर कर दे इस मैच तो में मल्टीपल टीम्स क्रॉस करेंगे। एमओ में कोई कमी है नहीं, इत्मीनान से बस होल्ड करके अपोनेंट का करने वाले इंतजार। और सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है, रुजॉक अब सर्कल के बाहर है। ईस्टर्न साइड को थोड़ा सा ज्यादा फेवर किया है। सेंटर ऑफ द सर्कल मल्टीपल टीम्स ऑलरेडी जो लिमिटेड कवर से वहां पे आ चुके हैं। इन सब चीजों के बीच में अरोरा को मैं देख रहा हूँ बिल्कुल कॉर्नर पे जा चुके। सिवर्नी के ऊपर से वो रोटेशन आती हुई स्टालबर की तरफ वो बढ़ रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनके लिए। और अगर नॉर्दर्न शिफ्ट गया तो सबसे ज्यादा खुश रहने वाली टीम वही रहने वाले। अगले 10 सेकंड के बाद हमें पता चलेगा कि क्या अरोरा ये जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखाई गई, आप देख सकते हैं सर्कल के बिल्कुल, क्या वो अगले रैंगल की तरफ जाना चाहते हैं जैसा आपने पिछले मैच में किसी के लिए बोला था। टॉप अलग, वो अलग जा रहे हैं। बाकी प्लेयर्स ब्लू जोन के बाहर चले गए। टॉप अब रुकने वाले हैं नहीं, वो तो सर्कल की तरफ ही आएंगे। बट तियानबा हो रहा, वो बहुत खुश होंगे। सर्कल का बहुत अच्छा एक्सेस उनके पास। ओजी भी सदर्न कॉर्नर पे। एडमिनो वो तो सर्कल के बाहर है और बचे हुए प्लेयर उनसे काफी ज्यादा दूर। सर्कल के बाहर देखिए, उन्हें रहना पड़ेगा। आखिरी खिलाड़ी बचे हैं वो। डायरेक्टली ऑब्वियसली अभी मूव करेंगे तो हर डायरेक्शन से शॉट्स पड़ेंगे, और यही सबसे बड़ी मुश्किल हुई है। वो रोजॉक का ब्रिज ले सकते हैं, वहां से आ सकते हैं। यासना एंटर करना चाहेंगे, लेकिन नोंगशिम के प्लेयर्स हैं। इस गेम के अंदर गॉडलाइक के प्लेयर्स का थोड़ा इंडिविजुअल होना एक दूसरे से दूर, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना है। सच्चाई के साथ बताओ, मुझे पता भी नहीं चला 3 प्लेयर कब एलिमिनेट हो गए। मुझे लगा उन्हें वो रिवाइवल मिल चुका है। बट खैर, एडमिनो रोटेट करके सर्कल की तरफ काफी इत्मीनान से पहुंच जाने वाले। 40 के लिए भी चैलेंज है नहीं, लेकिन अब चैलेंज के रूप में यूएलए उनके पास वो हाइट रहेगा। स्प्रे कंटिन्यूसली फलक के ऊपर। T24 उन्हें पिन पॉइंट किया जा सकता है क्योंकि एंगल उस तरीके से है यहाँ पे। अलूला क्लब के पास ग्रेनेड, एक परफेक्ट ग्रेनेड और फ्लक के ऊपर स्प्लैश डैमेज भी नॉक का काउंट बन सकता था, बट रीपोजिशन करके वो अपने आप को पीछे की ओर लेके जाने में कामयाब होते हुए। बोथ राइव्स अल-उला ये प्लेयर्स एक दूसरे के आसपास। लास्ट गेम के अंदर भी हमने देखा था, पहले गेम में भी देखा था, वो हाई ग्राउंड लो ग्राउंड बैटल्स जो हैं वो फोर्थ राइव्स का क्रिप्टोनाइट बनी हुई है। ये प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं, पिक होते हैं,
कोई ना कोई टीम अगर आसपास हुई तो शायद कोशिश कर सकती है कि वो फाइट्स ली जाएं, हालांकि सर्कल के अंदर है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। जोन के अंदर और थोड़ा जाना चाहेंगे। अगले 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर एक नया सर्कल बनेगा, कोशिश इनकी रहेगी। कोई तो पनौती लगा रहा है भाई इंडियन टीम को, कोई तो पनौती लगा रहा है भाई। नजर वाली इमोजी भाई चैट में आने दो, जगह से शॉट्स शायद देना एंड लाइक भी कर दो, जो लोग भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दो भाई, और टीम को लाइक कर दो। करने की कोशिश। ये पूरा ओपन ग्राउंड में देख रहा हूँ, इनके हित पे ही आखिर में उन्हें फायदा हो गया। XZY मौका मिला, एक के ऊपर डैमेज भी दिया गया, लेकिन कंटिन्यूसली पीछे से भी इन्हें वो डैमेज मिला, जिसके वजह से ऑल इन स्प्रेस पे गए नहीं। एक बार फिर से रिपोजिशन करके बहुत तेजी से अपने बाकी प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं, ब्रिज की तरफ। कहानी एक बार फिर से जरूर क्या जा सकती है। जी नहीं, अभी तो एडमिनो के पास वो स्पेस रहेगा जिसका वो फायदा उठाना चाहेंगे। हालांकि विटालिटी स्पोर्ट्स पीछे की तरफ आए हैं चेक करने के लिए कि क्या वहां पे कोई मौजूद है। एडमिनो थे लेकिन उनके पोजीशन से वो वाकिफ नहीं थे, जिसकी वजह से एडमिनो उन्हें और मौका मिलेगा उन सर्वाइवल की तरफ जाने का। अकेला काफी है भाई। सर्कल क्या सेलिब्रेट करेंगे या फिर सर्कल इस बार इनके हाथों से काफी ज्यादा दूर जाने वाला है? उसके लिए अगले शिफ्ट की यहाँ पे बारी आ चुकी है। क्या ये एक नॉर्दर्न शिफ्ट जी नहीं वेस्टर्न साइड का ये शिफ्ट रहेगा? और ओजी अभी भी सर्कल में है, बट एनएसआर यूएलएफ अब लगता तो है कि अटैक करेंगे ओजी के ऊपर। और दिक्कत यही बन जाएगी कि ओजी के प्लेयर्स इन जगहों से कर क्या सकते हैं। आप मैप पर देख रहे हैं ओजी के प्लेयर्स स्कैटर्ड है एक दूसरे से। अब सारी टीम्स इकट्ठा होने वाली हैं। वो ब्रिज एक हॉट प्रॉपर्टी बनेगा जहां से ओजी अगर चाहे तो फिनिशेस उठा सकती है, लेकिन वो किसी को चलती गाड़ी से नॉक भी अगर उन्होंने कर दिया तो दूसरी साइड से कवर्स आएंगे। वो कंफर्मेशंस निकालना मुश्किल होने वाला है। इस एरियाज नो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बट कामिकाज़ी नॉक होके मर गया। बताओ ये जंप इन्होंने कैसे मारी। एस2जी बाहर। ये तो खैर इन्हें पता है। आई थिंक वो चलते व्हीकल से उतरना चाहते थे और वो उतर नहीं पाए। एस2जी बाहर हो गया बे। एस2जी पिछले गेम के अंदर चिकन डिनर, वो सदर्न साइड का एंगल, ये नॉर्दर्न साइड का एस2जी बाहर हो गया भाई। कहानी 180 डिग्रीज। एस2जी का हो चुका है एलिमिनेशन। बोथ राइव्स जैसे कि बात करी गई थी, इन्होंने वो अर्ली बैटल ली थी वो चिंकी में जाके, उसके बाद कुछ भी नहीं। और मीनवाइल ओजी प्लेयर्स थोड़ा सा रुक करके खेलना चाहते हैं, बट सर्कल के अभी एज पर आ चुके हैं। जोन अगला 100% इनसे दूर जाएगा और जब वो जाएगा मूव करना पड़ेगा। सर्कल थोड़ा किसी और डायरेक्शन में तो मूव करेगा और उसके अराउंड यूरिया साला घुस गया एडमिनो पे। उतर एक उतर दे एडमिनो। खिलाड़ी को शॉट दिए, 9 गोली उनके पास बची। अब शायद वो शॉट देंगे। भाई जिस कवर की मैं बात कर रहा था कि वो आएगा टाइमली, अब नॉक करके खात्मा कर ही नहीं पाएंगे। अरे नेक्स्ट एडमिनो भाई टेक डाउन किए, बट कवर फायर परफेक्ट टाइमिंग पे आती हुई। कॉर्डक्ली ये मैच कहीं से भी आसान गया नहीं है और ओजी अब उनकी बारी आती हुई फाइट की तरफ जाने की, जहां पे एक प्लेयर को टेक डाउन किया जा चुका है। रिवाइवल देखते हैं कि पॉसिबल होगा या फिर नहीं, क्योंकि एनएसआर उनके बहुत पास आ चुके हैं। यूएलएफ को थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। ह्यूनबिन वो भी अपने S12 के साथ यहाँ पे अटैक करने की कोशिश। ह्यूनबिन वहाँ पे एक को गिराएंगे, मैच से बाहर भी कर देंगे, बट आरू शॉट्स लेना था उस पॉइंट पे। वो यूटिलिटीज पे थे जिसका फायदा ह्यूनबिन को मिला, बट वो इंपैक्ट बना के गया है। फायदा हुआ है यहाँ पे ओजी को, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे होता हुआ। आतंकी उन्होंने रिवाइवल देने की जरूरत पड़ने वाली। स्कारफेस को देखिए, वो एंट्री बनाते हुए XZY, वो तो पीछे सब कुछ देख रहे। कवर फायर यहाँ से बस इनका देना काम है और वो परफेक्टली कवर फायर दे रहे हैं अपने टीममेट को। आतंकी उन्हें रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन अब XZY के लिए भी कहानी उतनी आसान नहीं। कोशिश रहेगी ऑब्वियसली कि वो कुछ भी करके अपने लिए फाइट निकाल पाए। उसके प्लेयर्स बैकएंड से आए थे, तियानबा के प्लेयर्स उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हुए एक को, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने खो जरूर दिया है, बट XZY वो ज्यादा आगे मूव नहीं कर पाएंगे। उनका इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके बारे में पता चल चुका है। विस्कॉट अगले 40 सेकंड्स हैं, या तो आप कोई ना कोई फाइट लीजिए या जोन को प्राथमिकता दीजिए। सो इजी का भी वो जो नॉक है उसको भी फिनिश में तब्दील ना होने दीजिएगा किसी और के फिनिश में, तो दिक्कतें बहुत बनेंगी। फ्लैश के भी प्लेयर्स आ चुके हैं। पिछले गेम के अंदर फ्लैश ने दिक्कतें दी थी और एंगोटैन को थोड़ी सी। इस गेम के अंदर ज़ूस पिछला गेम टॉप 3 के लिए गया था। इस गेम के अंदर कोशिश रहेगी वैसा ही कुछ ना कुछ रेप्लिकेट करने की। 2 एलिमिनेशंस हुए हैं इनके, और एंगोटैन की मैं बात कर रहा हूँ। XZY बैंडेजेस लगाना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा, बट द सर्कल, द नेक्स्ट जोन वो बिल्कुल ऊपर की तरफ को जाएगा। एंड ऑरोरा इन द डेड स्मैक सेंटर।
बस अगर आप देखिए अरोरा के लिए कहानी कितनी बेहतर, उनके ऊपर वाली टीम एलिमिनेट हो चुकी है, उनके नीचे वाली टीम एलिमिनेट हो चुकी है, तो उनके पास मौका वो टेबल टॉपर भी बने और कुछ डिफरेंस भी बना के जाए ओवरऑल स्टैंडिंग में। हालांकि ईगल उन्होंने पूरा एक प्लेयर को टेक डाउन किया, पानी में ही थे और उनको बचा के जाना यहाँ से बहुत डिफिकल्ट। यूजी कंफर्मेशन की भी वहाँ पे कोशिश में लगे हुए हैं। सर्कल का ये जो शिफ्ट आया है अब ओजी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज कि पहले उस ब्रिज की तरफ जाए या स्विम करके जाए। स्कारफेस भी वहीं पे मौजूद है कॉर्नर पे, तो ओजी के लिए ऐसा निकलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऊपर से फ्लैश वो कंटिन्यूसली वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल करेंगे यहीं पे टाइम बाय करने की कोशिश। फ्लैश को भी तो रोटेट करना चाहिए, वो क्या यहाँ पे रोक के कर रहे हैं। फ्लैश ने सबसे बड़ी चीज करी, आपने अभी भी देखा ओजी की गाड़ियां फोड़ दी गई हैं ग्रेनेड्स वगैरह के स्प्लैश डैमेज से। फ्लैश तो चलिए अपनी बगीज लेकर के रोटेट कर जाएंगे, ओजी के प्लेयर्स आगे आएंगे कैसे? नुकसान हो चुका है। अरोरा के प्लेयर्स की जस्ट आपने बात करी, इन्होंने रिव्यूज को खोया है, बट टॉप अभी भी जिंदा है और टॉप का जीवित रहना इनफैक्ट अब इस गेम की पूरा ज्योमेट्री समझिए। इसके पिछले वाले गेम के अंदर ये टीम गई थी मिलिट्री बेस जहां ये जाते हैं, इस बार फ्लाइट पाथ ऊपर था, इन्होंने एक्चुअली सोचा कि मिलिट्री बेस जाना छोड़ दीजिए, हम अपने दूसरे ड्रॉप के लिए जाते हैं जो बिल्कुल ऊपर की तरफ को रहता है, वहां से मूव करते हुए इन्होंने सर्कल के अंदर एरिया बनाया। सर्कल ऊपर था और उसी के चलते का काम खत्म, क्या बम मारा गया है भाई। मुश्किलें तो यहाँ पे बनी है। 4 थ्राइव्स दिखाई दिए थे, थोड़ा सा खत्म हो गया भाई, शुरू होते ही के बाद नेट्स आए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, चलिए ठीक। हाँ तो ये प्लेयर्स एकदम उस तरीके से मूव किए एंड अब इन्होंने जोन के नॉर्दर्न एरिया को अपना घर कितने प्यारे तरीके से बनाया, बट अब ये जहां पर इन्होंने 4 थ्राइव्स को एलिमिनेट किया था उसी जगह पर ये प्लेयर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद अरोरा के प्लेयर्स वहां फंस जाएंगे। प्रॉब्लम तो यहाँ पे ओजी के लिए भी हुआ है, वो भी अपने 2 प्लेयर्स को और गवा चुके हैं। अब इकलौते प्लेयर के कंधे पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आने वाली है और स्कारफेस के अगेंस्ट वो बैटल की तरफ जाने वाले, मुझे लगता नहीं वहाँ पे वो संभल पाएंगे। जी हाँ, विस्कॉट उन्हें भी टेक डाउन कर दिया गया। ओजी 3 मैचेस के समाप्ति के बाद 5 पॉइंट्स कुछ खास कमाए गए नहीं है। ये शुरुआत एक गलत अरे दोनों भाई दोनों तबाही, अगर आप 15 नंबर 30 का आंकड़ा क्रॉस करने वाले, तो एनी डे दो भाई दो तबाही से ही वो अच्छे पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे, अदरवाइज क्लाइम करना काफी डिफिकल्ट यहाँ पे होने वाला है। मॉडल एंड ओजी दो भाई दोनों तबाही। रिप्लेसमेंट पॉइंट की भी शुरुआत 14 पे 15 पे। अरोरा अगर यहाँ से कोई बात नहीं ब्रो, अगले मैच में देते हैं अपन लोग पूरी तरीके से अपने नाम करके जा सकते हैं टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टैंडिंग के जब पॉइंट्स को हम देखेंगे तब। तीसरा मैच है ना, अब तो 2 ही मैच बचा है ना, दोनों मीरा मार। याद होंगे पहले गेम के अंदर 8 एलिमिनेशंस थे उस खिलाड़ी के। वैसे भी अपना इंडिया टीम का पहला दिन तो ऐसे ही जीजी है, दूसरा दिन कमबैक होता है, तीसरा दिन जीतेगा। 3 एलिमिनेशंस कर चुके हैं। रिकॉर्ड एक्सेल का है, अगर वर्ल्ड कप की बात करी जाए एक्सेल का वो रिकॉर्ड है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फिनिशेस इन वन डे 23। मीलू उस रिकॉर्ड को चेस कर रहे हैं और स्कारफेस वो तो गोलियों से बचने की कोशिश पूरी करते हुए और वो बच भी चुके हैं। भाई किस्मत हो तो स्कारफेस जैसी ओवर ना हो। बम आ रहा है, बम आ रहा है, उनके काफी करीब है। फ्लैश का बम आ रहा है, एक ग्रेनेड जी नेट थोड़ा सा दूर गया, इनफैक्ट बाउंस करके ऊपर की तरफ को गया और अब फ्लैश का पूरा ध्यान पीछे होरा की टीम ने की तरफ रखा है। लास्ट ग्रेनेड टॉप्स, क्या वो इसे यहाँ वेस्ट करना चाहते हैं? वेस्ट या यूटिलाइज डिपेंडिंग ऑन कि वो चाहता है या नहीं, या फिर वो आगे की फाइट से बचाना चाहेंगे। थियानबा के प्लेयर्स सही जगह पर आ चुके हैं, बट फ्लैश उनके टीममेट जाते हुए ये ग्रेनेड काफी करीब आया था, लेकिन डैमेज भी उस तरीके से देकर गया है। औरोरा से पंगा भाई हर टीम के लिए these players are too damn good। परफेक्ट टाइमिंग वहां पे रखी गई और दूसरे एंड पे यूएलएफ उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है, बट अरोरा क्या वो फाइनल अटैक की तरफ जाएंगे? अभी भी यूटिलिटीज के ऊपर डिपेंड, लेकिन अब उसकी संख्या समाप्त होती हुई, ग्रेनेड पूरी तरीके से समाप्त है, तो अब फाइनल अटैक की तरफ कॉन्वर्सेशन वो जरूर कर रहे होंगे, करे या ना करे, बट सर्कल का एडवांटेज उनके पास बेटर है। तो कॉर्नर पे आके क्या वो फाइट करेंगे? क्यूजी वो पीछे से कंटिन्यूसली कवर फाइट दे रहे, वो डिस्ट्रैक्शन का रोल अदा कर रहे, बट तियानबा उन्हें कोई नुकसान ही नहीं हुआ इस पूरे सिनेरियो में। हाँ आपने नॉक किया, बट ठीक है वो गेम का पार्ट है, वो रीसेट कर सकते हैं, रीसेट कर लिया गया। अरोरा क्या एक बार फिर से इस तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि अब ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से यहाँ पे देने की कोशिश में लग चुके हैं। डोक थोड़ा सा अलग है, अगर उनके ऊपर हल्का सा इंपैक्ट आया तो प्रॉब्लम का विषय बन सकता है। और दोनों प्लेयर को देखिए सेम डायरेक्शन पे एक वक्त पे अटैक कर रहे हैं कि एक ग्रेनेड से वो स्प्लैश डैमेज और दूसरे ग्रेनेड से वो हिट, जो कि वो नॉक का कारण बनेगा। हालांकि वो फायदा हुआ नहीं। ईगल एक बार फिर से ओपन में आए, उन्हें टेक डाउन किया गया।
उस पुश को, उन ग्रेनेड की बारिश को एटलीस्ट इन्होंने रोका है कुछ समय के लिए, जिससे थोड़ा प्लान बी की तरफ भी शिफ्ट करेंगे अपने आप को। पीछे से ई अरीना वो भी अपने स्प्लिट को मेंटेन करते हुए, 2 प्लेयर 2 अलग अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश में ही थे कि उससे पहले टॉप ने उन्हें देख लिया और एक बार फिर से एक नॉक अपोनेंट के ऊपर। लेकिन ये अरीना के खिलाड़ी को देखिए यहाँ पर रिवाइवल मिल जाएगा, प्लस 1 मिनट से ऊपर का समय है सर्कल बनने में, तो फिर आप फर्स्ट हिट लगाने के लिए भी पर्याप्त समय लेकर के चल रहे हैं। वाइटैलिटी के प्लेयर्स मीनवाइल अपने आपको थोड़ा सा प्रॉपर रखना चाहेंगे। क्यूजी बाकी तरफ से मीलू, ये खिलाड़ी अभी भी प्रॉपर फाइट्स के अंदर हैं, पूरे तरीके से हैं। ये किंग ईगल कोशिश इनकी भी, ट्राई एंड कीप देमसेल्फ सेफ। होपफुली कितनी देर तक सेफ रख पाएंगे। औरोरा के प्लेयर्स के ऊपर शॉट्स आने शुरू हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है जो उनका कवर है वो सही कवर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली उस कवर में मुश्किलें बहुत ज्यादा बनेंगी और उसी के अराउंड उन्हें खेलना पड़ेगा। बट तियानबा के ईगल वो भी अपनी फाइट्स के लिए अभी भी तैयार हैं। क्यूजी को टेक डाउन किया जा चुका है, उनको सही जगह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, बट फ्यूरिया अयाला को भी पिक किया गया। रिवाइवल यहाँ पे पॉसिबल है पूरी तरीके से। ये अरीना अपने नंबर्स को जो स्प्लिट करके रखा गया था नॉर्दर्न साइड में, अब एक साथ एकजुट हो चुके हैं, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पे। उनका मानना सर्कल का अगला शिफ्ट उस और जाएगा, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में भी जाता है तो इतने गाड़ी तो है इनके पास कि आसानी से वो रोटेट करके उस एरिया में अपने लिए अच्छा कंट्रोल बना सकते हैं। फ्यूरिया को ज़्यादा हमने कुछ करते हुए देखा नहीं। ओशन आज के दिन पे बिल्कुल स्लो सर्वाइवल फोकस ट्राई कर रहे हैं, वो भी क्लाइंब करने का एक अच्छा मैच वो भी अपने लिए ढूंढ रहे हैं। सर्कल कम ऑन एंड सर्कल पूरे तरीके से सेंट्रल शिफ्ट लेता हुआ, और फ्यूरिया ही है जिनके पास सर्कल का एडवांटेज। हालांकि अरोरा उनके पास भी ईस्टर्न साइड का कॉर्नर रहने वाला है, और ये अरीना उनकी बारी आ चुकी है रोटेशन के लिए, जिसकी वजह से उन्हें फाइट करना ही पड़ेगा। और शुरुआत हो चुकी है तियानबा के अगेंस्ट वो ग्रेनेड करने का प्रयास। अरोरा के पास वापस से कहां से ग्रेनेड्स आ गए? अच्छा, वो फ्यूरिया रहेंगे जो वाइटैलिटी के ऊपर वो मल्टीपल ग्रेनेड्स कर रहे हैं, और नॉक्स भी निकाले गए। कितने सारे यहाँ पे नॉक्स निकाले जा रहे हैं। तियानबा उसका फायदा उठाना, यहाँ पे चार इंडिविजुअल फिनिशर्स यहाँ पे क्यूसी के पास कंफर्मेशन निकालते हुए। ये अरीना वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस थर्ड पार्टी के लिए। पार्टी यहाँ पे चल रही है और सारी टीम्स अपने लिए सेलिब्रेशन के रूप में वो फिनिशर्स चाहते हैं। लेकिन इस समय नंबर 1 पर औरोरा वापस आ चुकी है। पहले गेम में जिस तरीके से ये खेल रहे थे, वापस उसी तरीके का प्रदर्शन। 7 एलिमिनेशंस है इनके पास। फ्यूरिया दे नीड अ कमबैक। हियर में पायदान से अपने आप को ऊपर देखना चाहते हैं। वेयर इज दैट वाइटैलिटी जिन्होंने अपने ग्रुप के अंदर हाहाकार मचा दिया था। ये अरीना आई नो ये रोंडो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बच करके, और उसी के चलते ये ग्रेनेड सियोल को टेक डाउन किया गया। शॉट्स उसी तरफ से आ रहे हैं। स्वीप्स को रुक करके बैठना पड़ेगा। डॉग को भी डाउन किया जा चुका है। ये टीम का खात्मा इस समय पर होता हुआ। फ्यूरिया, ये अरीना, बैटल ऑफ द टीम्स एट द बॉटम टू ट्राई एंड क्लाइम दिस एवरेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो बाकी टीम्स ने बना रखे हैं। ये तीसरा गेम है जिसमें फाइनल फाइट आई जरूर है, लेकिन टीम्स एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन ओपन सर्कल्स में चाहती है। कोई भी अर्बन गेम्स अभी तक नहीं। पहला गेम 4 वर्सेस 4, दूसरा गेम 1 वर्सेस 1, और ये तीसरा गेम वापस 4 वर्सेस 4 पे आकर के रुका है। रिवाइवल की फिलहाल यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, और उसकी शुरुआत तो वो करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने साफ देखिए वो फाइल पुश की कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पे वो डैमेज दे के जा पाएंगे? थोड़ा सा ऊपर में चले गए, और उसका फायदा यहाँ पे ये अरीना जो नॉक की दरकार थी दोनों गेमों में, अब एक नॉक बनता हुआ कंफर्मेशन। हालांकि फ्यूरिया यहाँ से निकाल के जाएंगे। 8वां फिनिश पॉइंट इनके पास आता हुआ। जोकर कुछ भी नहीं कर पाया उस पॉइंट पे। 8वें स्टेज की भी बारी आ चुकी है, और ये सर्कल का शिफ्ट डिसाइड करेगा कि क्या ई अरीना स्ट्रॉन्ग रहेंगे या फिर फ्यूरिया। हालांकि फ्यूरिया के मैं स्प्लिट को देख रहा हूँ, चारों तरफ सिर्फ वही है और वही दिख रहे हैं। हालांकि उनके एक टीममेट जो डाउन है, उन्हें रिवाइव देना काफी डिफिकल्ट। साइलेंस विद एन MG3। एक बार गोली चलानी शुरू करनी है, जब उनकी मैगजीन खत्म होगी वो इस चिकन डिनर को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन सही तरीके से चलानी पड़ेगी। फ्यूरिया के पास इसी चीज का एडवांटेज है। हालांकि मैन एडवांटेज पर वो आ चुके हैं। हिगोर हैज बीन टेकन डाउन। ये अरीना फॉर्मेशन के ऊपर ये खेलना चाहते हैं। अयाला, ये अयाला एक विंटेज अयाला देखने को मिल सकता है। टीम क्वेसो का वो अयाला देखने को मिल सकता है जो अपनी टीम के साथ तब भी यहीं था और आज भी यहीं पर है। फ्यूरिया, चैनल योर इनर क्वेसो फॉर अ क्वेस्ट, और वो चिकन डिनर का ही होना चाहिए। हालांकि ये ग्रेनेड्स, ई अरीना ने अभी तक जो यहाँ पर बेहतरीन गेम प्ले दिखाया, उसमें ग्रेनेड्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। Will they do it again?
चीफ थोड़ा सा सेफ साइड रहते हुए वेटिंग गेम यहाँ पे फिलहाल चलता हुआ कि सामने से कुछ गलतियां हों, जितने भी यूटिलिटीज है वो इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। प्लेज उनसे कंफर्मेशन हाँ यहाँ पे आता हुआ उनकी टीममेट का, क्योंकि नॉर्दर्न साइड पे नॉक थे। अब एक प्रॉपर 3v3 की बैटल यहाँ पे होने वाली है 4v4 के साथ कहानी की शुरुआत, लेकिन अब एक बार फिर से बराबरी पे बातचीत आ चुकी है और ई अरीना के पास प्लेइंग एरिया ज्यादा है। जस्ट फॉर इन्फो, क्योंकि हम फाइनल स्टेज की तरफ जाने वाले हैं और इसके बाद सर्कल का जितना प्यारा एक्सेस आपके पास रहेगा अपोनेंट के ऊपर आप उतना प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट की बात आती है कि पहले कौन मूव करेंगे, कवर किनके पास बेहतर है। तो अभी सब चीजें ई अरीना के फेवर में देख रहा हूँ। कुछ समय पहले फ्यूरिया के पास था, आई डोंट नो वो कैसे टाइम के साथ वो गवाते ही चले गए, वो यूटिलिटीज के कारण। बट अब ई अरीना इस मैच को अपने नाम जरूर लिख सकते हैं। अगले 6 सेकंड के बाद सर्कल का श्रिंक आने वाला है। जोकर के पास आप देखिए वो ग्रेनेड्स भी है, वो कवर्स भी है। सेम स्टोरी लाइन यहाँ पे बनती हुई और ई अरीना के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बनते हुए। इस गेम के अंदर वो पेशेंस की पूरी कहानी आ चुकी है। रावण जो पहले उठेगा शायद वो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन से आप पूरी टीम की इंफॉर्मेशन पर खेल पाएंगे। Ayala, that grenade, it's chasing him. हालांकि वो अभी भी सर्वाइव करते हुए। ये टॉप व्यू, ये ब्यूटीफुल से ब्रूटल कब बन जाए इस चीज के बारे में थोड़ी देर में पता चलेगा। जोकर का इंफॉर्मेशन देखिए, वो बैकएंड से साइलेंस को देख सकते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन अपने हिस्से में रख सकते हैं। बट अयाला वो आगे जा रहे हैं, क्या कर रहा भाई? गलती बन सकती है। अयाला नीचे उतरे और जैसी बात कही गई थी कि जो पहले उठेगा वो बहुत बड़ी दिक्कतों में आएगा। अयाला का पिक होना ये बहुत बड़ी गलती है। साइलेंस, he might as well just follow, बट उस साइलेंस से पहले ये बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना पड़ेगा इस MG3 के साथ। 990% रखिएगा, it will do what it will do। देखा तो जा चुका है यहाँ पे साइलेंस की तरफ से, लेकिन वो अटैक अभी कर नहीं रहे। मॉली भी है, आपको इस तरफ देखने की जरूरत पड़नी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, मॉली वहां से हट गई। जोकर वो जम करके इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे। ग्रेनेड एक बार फिर से कुक करते हुए, क्या ये साइलेंस को एग्जैक्टली साइड कर देंगे सही एंगल में, या फिर उन्हें मौका मिलने वाला है, क्योंकि ग्रेनेड उसी डायरेक्शन में, लेकिन जो एक्चुअल प्लेसमेंट की जरूरत थी वो नहीं मिली। लेकिन कहानी एक बार फिर से 2v2 पे आती हुई, साइलेंस उसकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है। MG3 का चल हुआ, उन्हें अब दिखाना पड़ेगा यहाँ पे वो क्या करना चाह रहे। कवर में गए और अब फाइट देखिए 1v2 के यहाँ पे होने वाली टीम के साथ अटैक करने का डिसीजन, फर्क नहीं पड़ता। ई अरीना इतने वियर्ड सिचुएशन में आने के बावजूद चिकन डिनर निकालने में कामयाब हुए और क्लाइंब करने की सबसे अच्छी शुरुआत इन्होंने तीसरे मैच में चुनी। EA चिकन डिनर, इट्स एक्चुअली इन द गेम, जो इन्होंने अपने हिस्से में ला करके रखा है। व्हाट अ गेम ऑफ माइंड्स। EWC में सिर्फ बैटल रॉयल्स नहीं है, शतरंज यहाँ भी खेली जाती है। और ये शतरंज इन दो टीमों के बीच में आई, आखिरी सर्कल पे आई, कमाल का गेम लेकर के आई है। ऐसे गेम्स बहुत रेयर होते हैं जहां पर आपको वेपन से ज्यादा अपने माइंडसेट पर जाना है। और ऐसे में एक बड़ी गलती वो अयाला के द्वारा हुई थी सबसे पहले। जरूरत से ज्यादा आगे जाना, अयाला की उस गलती ने ये गेम पूरा पलट दिया। शायद ये इरने का होता ही ना, बट उन्हें सौंपा गया। लेकिन उसके पहले क्या कमाल की बैटल निकली है इस गेम की। और आने वाले गेम्स की और इंडियन टीम्स की और बात करेंगे जरूर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार That they decided to push over towards Vitality in that moment, the play almost works, but the speed at which they do it, like we're getting crunched right now, we have to just fly over towards this team and take them out. They have no qualms about just fully going for it. I really like that, and I think that that's the type of playstyle that's going to win you games more often than India का तो GG हो रहा है भाई। Absolutely, I think again that was one where it was like Razak just kind of popped off on the hold. Yes. It was
honestly, it was better play from him than it was bad play from them. He just popped off on a solo mission where it's like, oh, fair play. You've actually kind of owned us there. चलो भाई 7 लाइक कर दो भाई. What the play was meant to do was great. They needed ammo, they needed supplies, and they went for it. So Absolutely. It was a head-on call. It was the right thing to do. And the right thing for us to do right now is to go for a little moment with the boys over on the stage. And we'll be back real soon. मानिया कुछ सोच रहा है मानिया. Powers here at Pmwc 26, joined by John Allen, Kalaris, and Neptura, and we're playing a round of Hot Drop Dance. Ooh, we're going to be getting stuck into the board, hopefully. Maybe not for some. Some are having a bit of trouble during practice, but we're going to be taking some shots at the board. The person with the least score is going to have to give their hot take, so let's jump into it. You guys, I think you two have to go first. I think we get Nep up there first. Let's get Nep's in a prime position for this. I feel like I'm in the danger zone. Yeah. Let's see. Get ready to dodge. Oh, it's your best one. Yeah, that's it's on the board. All right, let's shuffle up. Thursday. And Kalaris up to the bat. Oh, okay, all right. Okay. This is good. This is good. There you go, James. There you go. Shuffle in. Thank you. Don't hit me, please. Oh, it's a 17. Currently, Neptune last with 6. No way. Oh, a double 17. It's a triple 17. It's a triple one, I don't know. That means Neptura is last. Are you serious? Yep. What's your hot take, Neptura? My hot take is that the Uzi is a bad weapon and shouldn't be played. There you go. That's it. Wait. This one was Neptura. That one was mine. In the bullseye. No, it's in 25. Yeah. Oh. It's you. Well, she's already done a hot take now, so. You did that on purpose. No, I didn't do anything. All right, here. Go on. John starting us off. Let's see. Oh, hey. A 5. It's Not in. bad. That's all that matters, really. It's on the board. Here we go. I haven't missed. Kalaris now. Forearm strength. It's good. It's good. Ooh. That could be a treble. That's nice. Get out of the danger zone. The splash zone's coming for you, Kale. Good maths. Oh, that's a triple. Okay. Triple 3. God. All right, here you go, mate. Take this. I'm pretty sure it's currently the lowest. Wait, no, it's not. I'm John's on a the 5. lowest. Yes, John's the lowest. Or is that a 2? It's a 5, I think. It's a 5. Oh, and that's a 2. That is a 2. I've been saved by the upside down version of my own Jackie, number. it's your turn. There you go. Okay, hot take. Dino Park and Vikendi, infinitely better than Ronda. I miss it. Bring it back. Oh, okay. All right, considering I actually lost the first round, I should probably do a hot take because I cheated you out of it. I'm so sorry. Tiamba will not win PMWC despite looking really good. I feel like I've got to follow in with a hot take as well. Oh, okay. I feel like over-reliance on ARs, nonsense. I want DMRs in, give the players a little bit more expression in the secondary slot, you know? Those submachine guns, something else popping in. Give a little bit more individuality. That's what I want to see. I like it. Don't give me this mic. You know what I want? I want all of your opinions from the viewers at home. You in the chat. Tell us what you think. Let us know right here, right now. What are your controversial takes? Chasing the sunrise.
if I'm not mistaken, Neftura, I think you actually won at darts. And I think you got that chicken dinner. I did. You were lied to, but very mad. In this last game, E-Arena wasn't lied to, Max, because E-Arena came out with the win. I never know how to react to an E-Arena win now since that Rondo 39-pointer. I'm like, okay, that's great. That's a cool win. But what's next? No, it genuinely was a good game. It was very open-ended finish between Furia and E-Arena. I think it was kind of even-Steven until eventually Ayala got a little bit overly aggressive on that push. Then he gave them an advantage, and E-Arena using every resource they had available to get that win. Good to see, but again, I need to see that continue in your next coming matches. Take it away, Lace. I know you've been wanting to talk about this team for a minute. Ayala, I am revoking your driver's license because I was waiting for the Furia drive by Max. E-Arena, obviously, they deserved that win because of Furia and their driving and not taking that position early on. I mean, I liked the way that they sort of held out E-Arena early on in the map. Yeah. They had Silence kind of scouting Vitality's movements right down at the south side. So this was such a better play from them. They're actually defending and looking where other teams are sort of pushing into that position. They had such a strong split hold. Obviously, a little bit of tunnel vision coming out of some of the players there. And then I don't know what the vehicle situation was. And you could hear me screaming in the back. He's like catching nades with the vehicle as well. And I'm like, what plan is this? They had such a strong position after getting like this one. After moving their way into zone on the rotation on the southern side, Max. Look, I'll give you my pack capture. I'm really upset. I know what happened, actually. I was talking tonight. I saw him as we were leaving the talent room, and I asked him, like, what was the play with Ayala? And he said the idea for Ayala was to get an off angle on the team and actually catch them from behind. But then he saw two players and he got scared. And that's the thing is, right, lack of information will make you do these kind of mistakes. So it could have been a good idea, and catching nades didn't work out. It could have been great, but unfortunately, two-player setup was exactly what E-Arena needed in case of those kind of pushes coming their way. That was just a big, something I like to call what the Furia. WTF, because that's exactly what ended up happening with that one. I've been working on that one all day, especially with the way that they were playing earlier. There was a squad, though, that was able to put up a good amount of eliminations, and it was none other than Aurora. Aurora, once again, Neftura being able to back it up with Ilims, even though they wasted a lot of utility with Tiamba. They did wait. It was a big old red zone, and it was fairly unnecessary. However, it does get you those points, right? And it's been really nice to see them actually, because I think in the group stage, right, we saw them just doing just enough to get into the top 5, just enough to get to where they wanted to be. Now we're seeing true Aurora here. Now we're seeing the team that we're used to seeing, and I'm really, really enjoying that. I think they've actually played a lot better, right? They're very even. They're not splitting. Doc's not doing his thing. He's staying with his team, and Reefus, Enzio, we've seen some really cool off angles from them, so very happy with them. And something that I enjoy seeing there, especially out of that graphic, Max, is Top being able to bounce back. Remember, earlier in the previous match before this one, Top was on top of the bridge. It didn't end up working out for him, but 4 Ilims out of him, a person that has been an MVP before on an international finals, that's exactly what you want to see. Yeah, really happy. I mean, the best way to describe it is what you said, Niptro. They became a red zone at that moment in that game, and I love the way that any team would get in contention of their zone, they would start just nading them to hell and back. So Aurora playing it really well. I am still not sold on their performances so far. I feel like there's still a lack of fragging power that they used to have in the past. Doc is underperforming quite significantly. So Top, GG's, I'm loving it. Ziol too had some great moments, especially in that Rondo. But Doc, he's still sleeping right now. He needs to wake up. Wake up, Doc. Wake up. Just make sure you don't start going away from your team, because that's when things ends up falling apart for Aurora. But Aurora, honestly, 36 points, currently tied. But the tiebreaker does go to E-Arena with that win that they ended up getting. Tiamba, though. Tiamba right now, the aggressiveness that we've been seeing out of this team, if you want to give the mic to Lace, they're currently putting up those numbers, Lace, because 27 eliminations for that squad and only 4 placement points. Yeah, I see that. This is what I'm saying. They're finding those fights. They're gathering those eliminations, finding a nice power play position, but then unfortunately losing it, which is where we see the decline in placement points. But obviously this is still a really good trend for them, especially coming out of survivals into this sort of scenario. And to have that amount of points and that sort of trajectory is incredibly good for them.
But of course, we got to bring it back to kind of the smash rule and the way that you have to gather these eliminations. It's fine. It's good to do it, obviously, today, but then we got to see more of those placement points and those wins out of them to be able to take more than that. 100%. And another team that's currently doing that, Max, is none other than Nangshem. And I know you weren't quite happy with what Nangshem, especially Human, was doing that last game. Yeah, initially I love the way they initiate the fight onto, I think it was Orangutan in that gas station. I'm like, okay, you've got some solid off angles. I like it. They're pushing the fight. But the thing is about off angles, they lose effectiveness the longer the fight goes on. And I think it was one of the play on the Harry Potter tower. He had a great line of sight, but eventually Orangutan know you have that line of sight, so they're not going to peek you that aggressively. That would be the prime time for them to regroup, fully commit to the fight, and send it, and hopefully come out on top. But they're very slow to respond to these moments, and I'm very upset with their opening performances so far. Yeah, one team talking about aggressive, talking about people committing to a fight. We saw Nigma Galaxy and Ida finally commit to the hot drop, and if I'm being completely honest, I don't want to see it. I don't care about it. Leave that ego to some other time, because right now it's going to be hurting those two teams. Yeah, it is, and we did see Four Thrives take advantage of what's been going on there, right? Just dropping in on, trying to get a few limbs, and then move back to their position. They were trying to punish that as much as possible, just because it's kind of silly. In the finals, maybe day one, you kind of get away with it, but keep on doing it. It's not going to work out. Four Thrives knew that, and, you know, they might not be the only team to take advantage of that if the playing path's a little funny. If that keeps happening, other teams might just third-party that. Yeah, they will end up third-partying that. We saw there towards the bottom of the leaderboard as well. Godlike, OG currently not being able to put up those numbers. Those are two teams that are looking to bounce back, but right now we are halfway through that mark. Lace, any team that has surprised you so far? I would just like to say that, like, I'm very proud of you, Furia. I know I was a little bit mad in that situation, and I was surprised about you in the first couple of games, and I just want to make it note that that was a much better performance. But still, I'm taking your driver's license away. That was a good performance. Next time you ever take my mic, Lace, this big old chicken is going to be hitting your head once again. But as we're getting ready here for match 4, let's send it over to none other than Barney and Luti. Luti, yeah, you know how last week we were talking about how to win PMWC? Oh, yeah, the big secret I told everyone. You gave everyone some incredible insight for those of you at home that were listening. Teams were listening as well. Aurora Gaming, Tiamba, the Arena, they're playing very well at the moment. Indeed. But let's, like, break it down into the finer details, okay? It's pleasure, yeah. I want to ask you a little bit more, okay? So, like, what's the best map to, like, capitalize on points? I mean, there is different teams with different play styles, so it depends. Okay. Yeah, that's fair. Okay, it depends, yeah. How about, like, vehicles for, like, late rotations, getting into a good position? What's the best vehicle to use? The horse, the buggy, and so different maps, so it depends. It depends. Yeah, as well. Okay, sure. Yeah. Utility, okay, so like end of game, you know, smokes, nades, you know, medical packs, bandages. What's the best thing to have in your arsenal? I mean, depending your situation with the cycle, so I will answer, it depends. It depends. Yeah. Okay. Luti. It's not that easy, you know? Luti. What's the best gun in the game? I mean, let me guess. It depends. Sacre bleu. No, Barney. Everyone knows it's the P90. No, it depends. Okay, back to you, casters. I hope you're ready. It depends. And yeah, he's right. The V90 is where it's at, but we are here live in the finals, getting ready for the last 3 matches. Absolutely. We have got a great day unfolding before us. We've had some real step-ups from a lot of teams coming on through, some great rotations, some insertions, some side swipes into those zones. That S2G hovercraft double roll-up. That was looking pretty, but we're going to be sending ourselves once again over to Erangel to find ourselves one more chicken dinner. Let's see who's gonna get it. Yeah, I mean, this is the last Erangel of the day, and it's time to put up some serious points. I mean, we're still super early in this tournament, but we're already starting to see some teams, right, make some things happen. I was able to talk to one player in particular as we were getting into this game. I happened to see S-Power from Godlike. You know, the hair is hard to miss. I went up to the man and said, hey, you know what, give me 3 words before we get into this next match. And he said, domination begins.
Ooh, using a whole word on the. That is bold. That's the sort of confidence that you want to see coming through. For Godlike, they do want to try and push a little bit further up those tables, try and get in the competition for those top spots. Of course, having only seen 3 matches, we are still in a fairly uncertain situation, in a state of flux when it comes to those tables. Obviously, some performances standing out more than others, but it's definitely still achievable because of the fact that we have got an 18-match set, right? We've been playing so far on 12-match sets time and time again, but moving over to that expanded 3-day approach, that 18 set, that's where consistency really comes into play. So it's teams that are able to earn 6, 7, 8 points on those games that are going to be the teams that will take those top spots, those podium positions. Yeah, you're exactly right. I mean, it's all about putting up as many points as you can early on, and consistency is going to be the king here at the end of the day. I mean, we saw in the group stage, right? क्या लगता है भाई अपने लौंडे तो भाई मुस्कुरा तो रहे हैं, लगता क्या है होगा कमबैक होगा They had to deal with the survival stage, and let's be honest, I mean, luckily we're able to get here, right? So, I mean, but they're crushing it now. They did a great job in that last game, right? And so they're off to a strong start. Let's just see if they're able to keep that pedal to the metal. Aurora starting off strong is really good because historically they've always taken a long time, right, to really get warmed up. But for them to put some points on the board early just goes to show that come finals time, they're adjusting their strategies and it's working out for them. Maybe able to finally claim a title spot, you know, that's what they're going to be looking for. Plenty of other teams looking to do so as well. I know there's plenty of fans in the crowd for Furia who are there, really giving them their backing, which has been nice to see. Hopefully they can keep up the pace towards the top side as well. Which god? But yeah, I mean, there is so much on the line. मचाओ भाई भौकाल मचाओ भाई क्या हो गया है तुम लोगों को? So many, but a promise to only one of our teams. Man, one of the sickest trophies you can put on your shelf. I love, every single year I see it, I'm like, oh, you gotta get one. And this is what these teams have been hunting for. They've been working all year long to get here, and we can tell the teams that have prepped, and it's every single one of them. It's wild to see all these names, and the level of competition has never been so even, in my opinion, right? I mean, there is squads all across the board. They get a good couple zones, good couple situations. They're not messing around. They're going to take full advantage of it here. You talked about Furia, right? I think it's only a matter of time before we see them get a chicken dinner. We got to see some keys a little earlier. We saw that Team Vitality key, Tianba, 2 monster squads as well. So, it's just really about that consistently, like you talked about. But you know what? We're in the final Erangel of the day, John. One thing that stands out to me, without a shadow of doubt, is Pachinki, right? What is going on there? That last game has to mean that something's got to switch up, right? It has to. Something definitely has to change. For me, I feel like Enigma Galaxy, they kind of, well, certainly we know how consistently Ralph will just sacrifice tournaments to hold on to Pachinki. So for me, I'm just unsure as to why Ida made the decision to stick to that drop spot. There are obviously other opportunities, and it reads ego to me. It reads ego that they aren't disengaging. I liked Fourth Ride's adjustment. They were able to get in. They were able to get, I think, 2 eliminations right at the start of the match. Really, really nice stuff from that very peer position that they normally drop around. They were able to move on up. They exploited that situation. But I think that the second good decision that Fourth Ride's made in that scenario was not to hunt down Ralph, right? Because he's a solo. He's hiding in a corner. You don't know exactly where he is. You disengage. You don't go hunting, because a solo in a corner in Pachinki, you could lose a player to that very, very easily. So I liked their withdrawal there coming on through. The other side of a hot drop in Pachinki that is a massive factor, certainly for later into the mid and later game, is the fact that in a hot drop, you don't get that loot truck, and you can't get it double either, which means that it went over to Vitality during that last match. It goes over to other teams who just sit on that northwest side. It's also an incredibly clear indicator that a hot drop is happening to a team out there, so they can grab that one and send on in to maybe pick up the pieces. Yeah, let's take a look at some of the highlights here before we get started, as these teams are going to get locked and loaded here in just a second here, folks.
But yeah, you know, when we go back to that hot drop, it's wild to see. I've been kind of watching these two teams talk to each other all along here in Paris. And I'd see, you know, Enigma Galaxy players walk by IDA players and kind of have some exchanging of words. And I was hoping they would kind of get this settled before the finals, because I think it's just a devastating loss for this to continue here for both of them. And in the last game, it showed, just like, because guess what? 4 Thrives. They came to party right after. They were like, oh, you know what? There's a silly fight happening in Pachinki. We'll take those eliminations. And they got some of them, right? So I think now that you have 4 Thrives, especially now on the hunt for this, it's got to make, you know, IDA and Enigma Galaxy have to start second thinking, I think, some things. But at the end of the day, like you said it, you know, for those of you guys that don't know Ralph's true name, it's Ralph Pachinki Sanchez Montero III. Okay. Pachinki is in the name, all right? And he will refuse to let it go. And I mean, they've dominated it, right? We saw them be able to take out IDA, but now that you have 4 Thrives coming into play, it's got to make you second guess things. I mean, I'm pretty sure that dropping in Pachinki is in Ralph's will somewhere. इस मैच में मजा आएगा. इस मैच में मजा आएगा. Pachinki में क्या होने वाला है? In the very far future. But if he keeps dropping in Pachinki in-game, he's certainly not going to have a long life expectancy. Aurora Gaming able to do the business, but we are going to head to a quick video whilst we get this lobby ready to rock for our last Pachinki today. आ जाओ. इस बार Pachinki में मजा आएंगे भाई. पिछला मैच तो एकदम भाई लड़ाई के थे. चलो भाई आ जाओ. आज का लास्ट एंगल है. इस मैच में चाहिए भाई. इस मैच में चाहिए भाई. It is still undetermined as to who is going to last the longest in that location, and if we may have a 4th, a 5th, or maybe even more teams. Perhaps everybody is going to Pachinki. It's going to be a 64-player brawl in the center of the map. You know what? Ah, man, I want to see that action. That would be absolutely insane. I mean, if it was going to be possible, now would be the time, because it's the last one of the day. But you know what? It's time to see what exactly is going to happen as we get into the map. Final Erangel of day 1 of the finals. Now let's see who's going to be able to put some serious points on the board before we get into the sandy deserts of Miramar. I mean, I'll take non-serious points at this stage. Of course, every single team would as well. Plane path on the west side of the mainland here, coming through from North George to the west point of the Pachinki going fairly close to Pachinki, so we're not going to be denied it by the plane path. Hora out early over towards Saverni. Tiamba over into North George. I'm keeping an eye out to see if any of our teams on the hot drop are going somewhere else, but I'm really not holding my breath. I kind of am here. Oh. You know what? I will say, yeah, you can see already here. Look at that. Looks like we're going to see another hot drop in Pachinki as IDA and Enigma Galaxy are headed in that direction. Very, very interesting. I will say, though, we got to give massive props to Enigma Galaxy for being so high up on the leaderboards, considering that they've been dealing with this all day long here. I mean, they're 4th place, 30 points. That's pretty insane. Sure, I mean, they were able to take a chicken dinner drop towards the start of the day, right? So they do have Enigma Galaxy versus IDA. But they could be so much further ahead. पिछला मैच तो निगमा गैलेक्सी जीता था. इस मैच we're not going to see a 4th Thrives flex out. Instead, S2G are the closest by on the southwest side. Nongshim Red Force, who have yet to touch the floor of their parachute, could potentially also flex in from the southeast side, but I feel like S2G are the most likely right now to cause problems for IDA. Enigma Galaxy on the north side of Pachinki, they're split right now, but you can see Rita on that off angle could be quite important. Ralph seems like they know he's in this building, but the nade won't connect. Yeah, that was a warning nade for sure. You can see Satan up on the roof here. On this ledge, trying to get a little bit of information. He knows exactly where Rita is. It's a big stalemate, though. This is the hard part about these hot drops, and I can hear it. That loot truck is now driving on by the precious loot. Satan's like, that should have been ours. I want it. No. Oh, Lord nice gets one, knocked. Nice one. Did he get thirsty? No, he actually gets beat up pretty bad.
Satan, mara bhai, nice one. What a clutch knock for this team. Able to take out the off angle there, and Ida are going to really struggle to get back to this one. It's across the road, and I don't think you can break past that. The rest, though, in the meantime, is going to be there, and because it's so early in the game, it's so much less likely that you've got the nades on side to just completely suppress that res position, which allows Enigma Galaxy to go back to 4 and leaves Ida stranded on 3. Rita getting knocked there is the most crucial part of that fight, Jukes. Man, that was an insane shot there from Satan. I mean, that's that game sense, guys. Shooting right through the door. He knew he was there, and he makes the play for his team. It's one of those micro plays, right? That when you make that kind of play, it just changes the entire situation for your squad. And now, because of that, Enigma Galaxy up ahead against Ida. They still have to get a little bit more pace to it, though. And Ida are retreating now right to the southeast point of Pachinki. They've read that immediately Satan can move out, get this position on the off angle that they were previously in control of. The fact that they're aware of that is good, but you're just going to keep losing players. At this stage, I feel like Enigma Galaxy definitely have had a better result so far in this Pachinki hot drop. They were very ready for it. As you said, they will have known, they will have been aware that this is unfurled. And what do you need to do if you're Ida at this point? I mean, look where they're at on the leaderboards. I mean, this is crazy. 16th place, only 2 points so far. If I'm their coach, anybody that is in the leadership of this team, I'm like, give it up, guys. We lost. I mean, I get it, right? Day one, you're going to battle it out with Enigma Galaxy to see if you can conquer this location, but it's an L. Like, you got to at some point realize that this is not going to work for us. If we want to be able to do well in this tournament, I mean, Aaron Gale is the majority of the maps we're going to be playing here. We cannot afford to continue doing this. It is pretty devastating. They have only lost 1 player this time around, but the loot is going to be fairly thin on the ground. The vehicle condition, like, I don't know, man. It's really cutting the legs out from underneath themselves. It's terrible. I mean, you're down a player. You don't get the loot truck. You don't get any. You're under looted at this point. I mean, it's just a loss overall. And where they stand on the leaderboards is a pure reflection of that. So. Yeah, you know, I always say that when it comes to these kind of hot drops or these situations in general, I really do think these need to be settled in rehearsals, you know, in the pre-matches where it's like, hey, you know what, guys? Have a little handshake agreement. We're going to drop in Pachinki this game. Whoever wins it gets it, you know? Fair enough. Yeah, well, I don't think that would ever happen. But, yeah, I mean, I kind of understand. It is a question, right, that is rooted in a lot more, I think, subjective opinion for a lot of people. Because you have that question of, if we give up our drop spot, are we just going to be easily pushed around in the future, right? Like, are you trying to do that sort of thing? I mean, it's like negotiating contracts, negotiating business there. It is one strategy is to just be like, okay, we'll go somewhere else. But you can hold your nerve. And if you guys want to be the best, then you guys need to hold your nerve, and you can look good doing it using the Naruto skins here. Make sure you're heading into game, get that character set, get that Ninetales Fury AUG skin, get that one developing as well, because you can get some variations on that bad boy. Yeah, you want to be maxing that bad boy out and looking real good. As you know, Tiambos have been looking really good today. They're in 4th place, 31 points. Milu, man, the way he started off that Rondo match was just wild. I mean, this man has been performing all tournament long for his squad. He had, for sure, right, the play of the tournament, that 1v4 earlier in the group stage was so sick. Yeah. And then come finals time, the way he started out, they are looking really good. Absolutely. They are currently in 4th place right now. Looking to try and keep themselves within striking distance of that 1st place spot. Would love to try and join them, but they are a little bit more destitute on that points front with only 8 towards the bottom of those tables. Another circle heading up towards the north side, split by that central river. A lot of open ground south of Severny, being covered actually mostly by Oro, who have a wide spread around the river.
are causing a lot of problems. आराम से I'm थर्ड पार्टी आ interested सकती to है see आराम how से many teams look to मानिया head east of Yasnaya. Furia likely going to do so. Could potentially see that from ओपन teams फाइट who मत are हाँ चलो still यहाँ on the पे military island, by the way, क्या है Aurora गाइस and Al-Ula. देखो And क्या होता है maybe यहाँ we'll see पे it from one of the two teams who are still in Pachinki too, because, well, it looks like Ida looking to push back in and re-engage. Enigma Galaxy have been working the ground in the meantime, snaffling up all that loot and checking every corner. Or at least I hope they are. Yeah, they better be, that's for sure. I mean, you can definitely tell they're keeping their head on a swivel here. They got to know that Ida's around here somewhere. They're just clearing building by building with Satan on the other side, rocking a 3-1 split. यहाँ पे बम है भाई Gotta be एक careful बम से though, दो one लग day जाते हैं could be dangerous. Oh, the shots ring on boy. out and the knock on the Coops is huge. He's got another nade as well. Coops is in danger here. Ralph does need to get some healing done before he can go for that revive, but he should be okay to do it. You can't step forwards and go for the cross. And again, Satan is on that off angle. Just about misses Swain on the cross, but he should be able to call that one out. Should have spotted it. Lord is already cooking a nade. He knows he's in the building now. Launches it forwards and he takes it down. Beautiful communication. The plays from Enigma Galaxy in Pachinki are just insane. How do they do these wild bounce back shots? भाई निगमा गैलेक्सी है भाई टीम वर्क है भाई तुरंत रिवाइव दिया This just देखो goes to show you, when you know this गया side of डार्क the इन map तू भी like गया the तेरा ही back of लास्ट your है hand, it's gonna pay dividends. In the meantime, Nongshim Red Force and Fourth Rise are बच गया going बच head गया to बच head. गया And at the moment, it looks like Fourth Rise are in the driver's seat. This is out to the east side of Potato Hill, but they are grabbing a couple of flushes on board as well. As we keep going with this hot drop though. Yeah, Nongshim Red Force, they're going to try and get out, just leave a solo survivor coming on through. And another knock goes on in. This is Enigma Galaxy sweeping it under the rug. They're putting this hot drop to bed. It cannot come back tomorrow. It would be a terrible idea. I can't stress how difficult this is to do, right? To be able to deal with this hot drop so frequently अरे and आतंक विस्कॉट भाई कहाँ पकड़े गए हो execute in this perfect fashion. I mean, not losing a single player, getting those four points early on is just insane. होरा versus FL हो गया उधर. There was a hard north shift on the circle in the meantime. We are watching all of this hot drop unfold, but it is pushing teams now north very, very quickly, which is causing conflict around the crossings as Coops finds the final player on Ida. And down they go. All four players from Enigma Galaxy are there, and no third party came on through as well. Now we're going to jump over towards the teams that are looking to put pressure on up towards the north side. We talked a little bit about Nongshim Red Force losing 3 of their players. Fourth Rise lost 1, but they did manage to get the 3 points for that fight. They are both still south of the river. Both orangutan now on this northern side of Roshok River and trying to get their foothold to move in towards those shooting range hills, potentially over towards Saverni Way. Yeah, we've been really focused on that Pachinki fight for so long. This zone is all the way up to the north, like you mentioned. We already got Fudia up there in Saverni, E-Arena over by shooting range right now, taking that Snake Hill position. And now we're going to see a lot of these teams start make that rotation. Aurora Gaming. Oh, the one rock! You gotta hit it for good luck. That's a map open right there. Guaranteed. 100% looking at Yeah. No ways. I think we're going to go here, guys. Okay, we're getting a little replay. This is on the Fourth Rise and Nongshim Red Force fight. They'd already lost T24, but the hold from Hazaifa, the angles that he was able to clock, it seems, pretty efficacious on the high ground there. Love to see it for Fourth Rise. Aurora on their crossing, run into Vitality. Looks like they may have run their last across these bridges. This western hold looking quite good for Vitality, who, for the time being, have been a little bit quieter, I think it's safe to say, than their group stage performances, but they're still very much there. They're still very much present. Certainly their presence is being felt by Aurora on this northwest side. Vitality. Oh, nice zone shift here and a big southern shift. This actually might be really good for the side of Enigma Galaxy. Nice one, bro. ये मैच निकालना पड़ेगा. And Tianma versus Godel होने वाला है just. Actually, south shifts one more time to Roz. That would be devastating for this lobby. Aurora, I'm trying to figure out what are you doing here, right? They're over there by North George splitting up, maybe trying to find some late loot. Well, I mean, they were being held out by Vitality. They're just trying to take a turn around the town to maybe allow Vitality to disengage and then maybe re-engage later on, see what they can do with a little bit less pressure from the river crossing on that front. Team Flash
over on the east side need to settle their score with Alola to try and get towards the circle. And it is not looking pretty for Alola. They lose a player. Not a good start, but yeah, it would be kind of mental to send all the way down to Rozhok. It'd be great for Enigma Galaxy, right? They're still just on the north side of Pachinki, so they could just take up that mountain and lickety-split, get themselves another chicken Mania, dinner. Mania, On the hunt in the middle. Nice one, Mania. Stuff done. Get bits out. Nice one. Aura, and it seems that they are going to be able to take at least one and get the flush for Godlike. Mormon, the nade looks good. Puts them all the way down to 1 HP. Mormon, wow. That's 12K getting the finish. And look at that. I mean, teammate instantly there with the vehicle to make sure that they can get him over to safety. So Aura going to have to go out pretty early here this game. Only one single player up to we can do later on, but now we're off to the gas station with a Furia. Keeping their eyes onto Team Flash. Win has the P90 and the ghillie suit. So he definitely won that crate drop. He came out absolutely stacked to the teeth and hits the tree for good luck. That is a necessary thing to do here, folks. Yeah, absolutely. Bold just strategy. Little tap on the tree. You know? Tap. Little shout out to Mother Nature there for saying hi. And then... Gotta make sure it's secure. Yeah, and then proceeding to unleash lead into the hillsides around him. Hopefully. With that P90. Team Flash getting out of dodge from this east side could be tricky. S2G managed to make their way to one of the buildings here that is this lineup from S2G, from Orangutan, from Tianba, and from Ulf. On this lineup, very central on the circle, some very defensible positions, but teams will start to crowd in around them. Vitality and Aurora. Nice one, top. Oh my god. Here they go, they're battling it again. It looks like Aurora are on top so far with that knock on a Razak. You can see Yol driving around, trying to get some information. Federalis up close and personal, having to run back. Oh, it's Godlike on the other side. Yeah, that's too dangerous. Vitality need to disengage this as their 6 is not covered, but Razy is driving up close and personal, giving an opportunity for Reesmis to put some shots onto him. And yeah, it's just down to these 2 players left for Aurora. This fight would have definitely went off earlier, but that third party from Godlike bought Aurora Gaming some time. A little bit, but now they're down to 2. And Vitality doing a little bit of nade there, not ideal. E-Arena in the meantime trying to find their way in on the north side, but it's not looking super accessible right now. And now seems like they're engaged with the final player from Aura, Sleepy. Oh, भाई यहाँ पे तो बुम बम हो गया. S2G trying to roll across, but Tianba are holding face against it, and they are not going to let S2G in without Aurora jump in and join the party here. And they right under his feet. Is it going to blast him down? There's an answer, and Reefus falls. A third knock over towards Tianba, but now everybody has been isolated and evacuated from this fight. Nobody's left to put the pressure on this triple knock. Are you kidding me? It looked like these guys were fighting in a lake of fire here. QZ in the center of it. And Top could have been there to make that play, but unfortunately, there are too many teams surrounding him, and it stopped that crucial third party. Oh, another nade from Top. Doesn't quite connect there. There is an answering nade, and that is going to back Top off nicely. The run around there. Orangutan maybe missing a beat there, maybe missing a trick, not able to flex out. Top! Oh, Top just about behind the concrete there to keep him safe from catch, but they know exactly where he is. He's got 2 smokes. He's slap bang in the middle of the circle though, Jukes, and that might be a little bit of a help until another team rocks up with nowhere to go. They're going to roll right on top of this guy. Yeah, Top's cooked right now. He's just like, I think I'm just going to lay down right here. He's on the simmer. For as long as I possibly can. No standing up for me. It's straight hit the deck time on the side of Top. But hey, you know what? That's good, right? He's got a good position in zone. They're pretty high up on the leaderboard, so they can just kind of hang on and get some placement points. That'll be good for him. But meanwhile, I mean, Tianba on a tear. 7 eliminations. Fortunate for them. They're able to get everybody back up here. And they're in a solid position in this circle. As we now look on over to Furia. Igor hopping out the vehicle here. Getting punished by E-Arena for it. Oh, it's not going well. It is not going well for Furia. Unfortunate, they're just going to be down to Chief, the other 2 players down on the hillside. Tianba, by the way, managed to fend off a triple team crash on their compound, right? They're now on 7 eliminations. They have done phenomenal stuff.
It's likely they're going to have to fend off at least one more, but the number of crates around them is going to be ludicrous. They're going to have to try and figure out exactly what they want to put in their backpacks as Flash try to find their way through, thread the needle, but Iarina are just going to roll it down. Mormon over the top, doesn't even need to ring the doorbell to open that door. And Tops has to turn tail. Tourniquet sees to it. He's going to get backed off by a third party. I think that might be Orangutan chiming in. And now Tops has to head towards 4th Rise, so nowhere real to go for him as Hyunbin finally bites the dust, the last player alive for Nongshim Red Force. Arena are putting some good points on the board here. I mean, they're having to really battle it out, holding the edge of that circle, because there's a lot of open field in this zone. And now you're going to see 4th Thrives. 6 eliminations so far. Falak with 2, Zypha with 3. It's keeping Rozog in. Oh my, I just saw that circle shift. Are you kidding me? Enigma Galaxy, they'll take that all day long, right? Hey, you know what? Sometimes you got to get a little reward for those crazy hot drop efforts, and they'll definitely take that one to the bank. Yeah, that's going to be friendly for them for the time being. For them, I feel like a good strategy is to start scouting the other side of the river now, though. I feel like you need to get someone in fast. The difficulty, of course, is that 4th Thrives, and now Vitality is starting to move in, and they don't have an outpost there. Move over to the bridge, a little bit out of the zone. Yeah. I feel like somehow you've got to find a coastal position on that riverbank. And if you hold towards the warehouse, towards the triple stack, it's just going to be a bleed out for Enigma Galaxy. The placements aren't really going to be enough. Yeah, I want a little bit more forward thinking there as Aurora lose their final player. Top could not stay in for too much longer. 4th Thrives though, getting crashed on. Here they go. Arena not messing around here, just full sending it non-stop aggression from this team. And it's been paying off so far, and that's why you can see them on top. Orban hopping on out, trying to hit that flick shot onto Huzaifa. Huzaifa's really hurt here. Great teamwork though from Arena, picking apart the likes of 4th Thrives. Huzaifa has been so difficult to deal with, but Arena the only team to be able to take him down, and it took at least 3 of them. Tourniquet goes down with him, but 10 eliminations now for Arena. Very possible to get this res. This is the chance though for Enigma Galaxy to move across, and look at Ralph, he's getting over. Coops is looking to join him. This is the perfect opportunity whilst these teams on the east are preoccupied. A little bit slow to get the third party, but it is a good first step. I like what they've been able to do there. We've seen counterpointed river cross positions in 2-2 splits work well in the past. I'm hoping they can leverage that here. I'm a little bit disappointed in Orangutan on the north side. I feel like they could have poked their noses into that fight, and third party did as well. Moved a little bit further out to the east, been fairly safe from Tiamba, and gotten stuck in there, but they hold inside. And I don't think it was going to be enough. Yeah, one thing I've noticed here in the EWC is the quickness these teams are ready to third party and take those opportunities. And it's just kind of surprising to see OG just kind of hold back there for a second. Enigma Galaxy, just due to the terrain, weren't able to even think about getting that third party. But because of that fight, it opened the door for them to be able to at least make that safe rotation and get that 2-2 split going that you were talking about. So let's see how they're able to capitalize onto it, though. As now is the calm before the storm. We are in stage number 5. All these teams just planning it out, trying to figure out, okay, if the zone goes over here, we're going to have to make these plays. If the zone stays on us, then GG, baby. We just shoot at everything in sight. Yeah, we're going to get the next zone unveiling itself in the next 20 seconds or so. It's Godlike try and keep their ridgeline in play. This is a replay of the roll-up. Okay, this is when Arena crashed on towards 4th Rise. Falak. Yeah, went down very quickly there to Joker. Not much you can do about that. When the flying vehicle launches over the top, the bunny rabbits bound on into your sightlines. He wasn't ready for it, which is kind of unfortunate. Next circle though comes in Jukes. इस मैच में चिकन आ रहा है, चिकन आ रहा है, Godlike का चिकन आ रहा है. I think the Galaxy do have to get on the road. Fairly happy in their compound, but Godlike are putting pressure on. अरे नहीं, TNY से पड़ गया. Remember, S Power said the domination starts now. Let's see if they can actually make that thing, though, as they got Ulf right behind them. They're super pinched, making it very difficult for them to make a play from their position. And now you can see Scarface getting up close and personal. S Power trying to smoke some things out, buy his teams some time. It's going to be up to him and Edmino, though, as they are just trying to hold this spot. Unfortunately for them, though, it's outside of circle. Yeah, so now Ulf are in a perfect position to gate cardi this. Oh, nice one, Edmino, nice one. But unfortunately, the smokes are perfectly put, and he's not able to get the thirst. The nade is up high, doesn't quite go the distance. It went completely out of his viewing angle there.
तो जोन में जाना If it had been just a little bit further, that could have been a straight knock there. S-Power gets across. And just to get some healing started as well, but that blue zone pressure is coming through. We're looking at OG and E-Arena, as well as Nigma Galaxy, also having to make moves in the meantime, Dukes. And move in from this east edge. Tiamba gonna have to move. There is a lot of teams that have to make some difficult decisions now. And OG are making it right now. They're gonna roll straight on forward, try to get dead center here. And contest with Nigma Galaxy on the coastline, into Vitality sightlines as well. They drop down. Nice one, OG, nice one. Managed to get across, not unscathed, but alive. GG rotation. Great IQ of a rotation. They knew that one little plateau was right there. They were able to head straight towards it. They get their safe. Coops in trouble. The closest nade, he's done. Able to get the heal off, and now get some shots downrange. Headshot on Mormon. Joker right there next to him, though. Can Coops get to safety? No, he gets knocked, and E-Arena are going to continue to apply that pressure, getting that thirst immediately. There on the Coops. And Nigma Galaxy just getting picked apart. That 2-2 split not working out. That was insane for Coops to be able to do so much damage on that angle. He really held Ralph in the game there, and then leaving Nigma Galaxy on 3. Orangutan lost players on the center as well. They are now down to just 2 as the Arena make the same mad dash. The mad crash against Tianbao will not work out for them, and E-Arena evaporated. E-Arena evaporated, and they end up feeding the beast that is Tianbao. They did put some good points on the board for them, and I love to see that aggression. Let's see if Tianbao, though, can put even some more points and get this chicken dinner. They already have 10 eliminations. They're looking pretty unstoppable. S-Power forced to hit the deck. Now with those sight lines just punishing them. I mean, they have this position locked down. You needed Admino to be on an angle there to suppress Ulf, but no, not quite there, not quite ready. Didn't have the presence, and it's a difficult spot on the north side, so I can't really blame them too much there. Now the transition to the rest of the circle. A knock over towards Tiamba, and the final flush onto Godlike as well. Another nade over towards Tiamba. They're getting caught in the crunches. Nigma Galaxy move up the hill. They're challenging Orangutan. They're challenging Tiamba. They're doing a lot on this eastern side, and Nigma Galaxy strike at the opportune moment. Perfect timing there for Nigma Galaxy. They understand the situation. Hey, we got to push up. We can't just sit back and relax, wait for them to come to us. And you can see Lord with those nades applying the pressure. I think they need to slow things down a little bit, though. The circle is coming. The circle will push these teams out. So you want to make sure you hold on to all of that utility up until that last and final second. And I think they realize that. That's why they're starting to hold on to those nades. But the shots ringing out. Eagle getting a nice knock on the air, and that's their biggest threat right now. Catch, though, with the response over to QZZ. And it leaves Eagle alone. Dropping that smoke, the zone starts closing in 15 seconds, so this res needs to be now. It needs to come through as fast as possible to be able to be in a position to move out. Orangutan lose their final player. Gone. And it is going to go down to Nigma Galaxy, who are now up on 7 elims. Their transition from across the river has gone so well for them. What a game from Nigma Galaxy, getting hot dropped over and over and over. They take out Ida in just a beautiful fashion, and now with this fortunate zone shift are putting the punishment on this lobby as they take down Eagle from Tiamba. Now QZZ will go down too, and Tiamba knocked out. They managed to get a whole host of points though, 14 on the match, and they will keep themselves in the running for the podium. Nigma Galaxy looking to join them. There's not enough room for both of you. You got to organize it. Back to front, stand the line. But Vitality gonna have to leave as well from their cover on that south edge. Does Solus not see Satan right there in that corner? He had to see him now. No, he's too focused downhill. Oh, never mind. It's gonna be Axel that catches him out. So it's all up to Vitality. Axel, the last player up. Is he able to survive? Oh, Ralph gets knocked as well. Ulf are captaining from this compound for quite a while now. They haven't had to leave it. And when they do, it's against 2 duo teams with one of their players on either side knocked. For Ulf, this should be a clean sweep. There are no two ways about it, but it might get a little bit hairy. Lord is shut out first, and Aaron doesn't even hit the deck.
A 2v4 here would be needed for Vitality, and they are getting cut across, sliced and diced. Ulf are on the hunt. Downhill, they roll on in, and it's just Razy to stand in their way. The smoke billows, the P90 at hand. You couldn't ask for a better setup, but Ulf are here, and they have the nades, the ordnance to blast them apart at the seams. And that is how you do it, folks. Ulf just taking full opportunity there and capitalizing on it. We love to be able to see that. That building so strong, it was in circle all the way up there towards the end, but they didn't just sit on their hands, right? They just saw, they hunted down every elimination they possibly could, and then once they realized that those teams were weak, they pushed out immediately and were able to get it done. Some real heads-up plays, some proactive plays during that match. I mean, we focused a lot at the start on the hot drop, but the rotations up towards the north side also came in to be really impactful later on into that match, right? It was the teams that got there early that had the staying power. For me, a highlight of that game was also Tiamba holding off against the triple crash. It was Alula, followed by S2G, followed by Aurora. Everybody wanted to get into that central compound, but they denied them access at every single turn. It was a shame that Tiamba couldn't go the full distance. They did get shut out. And I feel like for Orangutan, they could have had more of an impact on that northeast side that would have changed the tune there. And hopefully they can find those opportunities in the future. It would be great to see them perform at the level we know them to be capable of from their performance in the group stage. But it is looking pretty powerful on multiple fronts. It's so tough. I mean, everybody here is playing just hyper aggression, zero hesitation gameplay here live in Paris. The second you see an opportunity, these teams are taking it. One team in particular, right? We got to talk about it. Is E-Arena. Just straight aggression there towards the end game. They soak up a ton of eliminations. Unfortunately, don't get the chicken dinner, but when you get that many elims, that's a good game no matter what. Yeah, that fight with 4 Thrives over the ridgeline worked out well for them. And again, the lack of third party allowed them to keep in the match for a lot longer. They were down to just a single player standing at one point, but they managed to get back to 3 to recover that pressure without any third party look-ins coming on through. And yeah, for E-Arena, it's a good result. I would even say it's a great result to keep them at the top of the tables, to keep, well, I don't know if they're actually at the top of the tables anymore. We'll have to double check that, but a man who could find out is Kalaris down on the stage with E-Arena. I'll try my best, John Allen. Yes, that's right. E-Arena looking fantastic so far. So let's ask them a few questions about the games here to get things rolling. So first things first, your previous win going up against Furia. Were you surprised by Furia's approach to the late game? And talk to me about that late game in general after you got the win. ในเกมที่เราต้องเจอกับฟิวเรียนะฮะในเกมที่เราชนะเมื่อสักครู่เนี่ยฮะตอนที่เราเจอกับฟิวเรียฮะเรารู้สึกเซอร์ไพรส์นะกับวิธีที่ฟิวเรียเล่นเพลย์สไตล์ของฟิวเรียในเกมนั้นครับก็แปลกใจครับแต่ก็รู้ว่าเขาเล่นอย่างนั้นอยู่ครับก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับ Well, we expected, but we still surprised with how they approaching the teams. But even though the last result is that they're winning the games. Okay, so you guys got very close to qualifying via the group stage and then came really close to not qualifying via the survival stage. So has there been any difference in approach here to the final? What has the team talked about to adjust here coming into the finals of PMWC? ก็ขนาดที่2นะฮะในกรุ๊ปสเตจเราก็เกือบที่จะได้ควอลิฟายแล้วส่วนในรอบ survival stage ฮะเราก็เกือบที่จะตกรอบแล้วด้วยซ้ำในตอนนั้นอยากถามว่าในตอนนี้ฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็พอเราเข้าไฟนอลมาได้ใช่ไหมครับก็ทุกอย่างก็เริ่มใหม่ครับทุกคนเริ่มจากศูนย์เราก็เริ่มจากศูนย์ก็เลยไม่กดดันอะไรครับ Well, right now we have zero pressure at all. So we are here to win, of course. And it's since everyone, this is a new day, new group. So this is a champion group now. Everyone's starting at the 0 point. So that's no different. And we're gonna claim all the glory back to Thailand. Okay, so that does it then. Well, thank you very much for the answers. That does it down here on the stage. We'll be with you for more PMWC in just a moment.
Today, our players are taking on a brand new challenge, Drop Hunt. Each team will be split into 2 pairs, with each pair receiving their own map. 5 locations are marked on the map and hidden in the player lounge area. At each location is a mystery envelope. The mission is simple: find them, grab them, and bring them back. But there's a catch. There are only 5 envelopes, and each one is worth 20 points. The team that collects the most envelopes wins Drop Hunt. Ready, set, hunt. Mana kita? Iya, Sok. Mana ya? Ini, Bang. Sini, Bang. Kita stiker di sini, Bujang. Kita di sini aja. Coba tengok mapnya lagi. Mereka ini. Mana tengok di daerah sini? Kayak mana cara dapat amplopnya, anjing? Kita nggak tahu cara. Berangkatnya mereka. Ini kah? Mana sih amplopnya? Pernah diambil harusnya. Lihat mana? Di sini. Viewing di situ, viewing. Viewing ini nggak sih? Mau kita orang aja gitu. Iya, serangin aja mereka, ayo. Woi. Pet. Sini, Pet. Kau mati juga kan, jangan. Ini, Pet. Ambil, Pet. Lari, Pet. Jam. Ayo. Oh, yang ini. Mana dia? Ini, Mas. Oh, tren juga, Ren. Ambil. Gini. They have to. We lost. Yeah. Main dulu jangan nangis, Yang. Yeah, let's go. Today is going by so quick, it feels like a final here at Pmwc at EWC 26. And these players are currently putting up the numbers. By the way, for everybody currently watching home, don't forget about the Pmwc Lucky Spin that is currently in the game. Log into PUBG Mobile and get those Pmwc skins. They are co-created with PvP creator, none other than Nana. You guys want to check them out, make sure you do so. The Alien Fusion Grossa looks absolutely stunning. On top of that, the Electron Energy set and the Proton Power set. Maxman has all of them, if I'm not mistaken, and I personally just want the Grossa. Yeah, I do have the Grossa. Unfortunately, I don't use it much because I cannot control that recoil. So I just stick to the Org because I'm basic like that 7. But the Org is cool. I'm with you, honestly. I won't be able to control the recoil, but I just want to see it. I want to see it glow, even if I'm able to get at least 1 elimination. One team that was able to glow in this last match, being able to keep all their 4 players alive, none other than Ulf, Natura. Oh, finally. You said it, right? We're finally getting a play where we actually have all of Ulf still around, still here to fight for the end game, to fight for that chicken dinner coming on through. Yeah, really nice to see. I mean, yes, they didn't have to contest it too much. They had 1 or 2 fights in the mid stage of the game, OG more notably, but then they were able to just hold their position, wait for the right time, and then once that time struck, Max, they were all over that final circle. Yeah, I mean, really able to get himself some good presence at the end, keeping 4 players alive, which is my biggest issue with them since PMGO Season 1 in Jakarta this year. And you know what? They're able to finally get it done. I told you, they're a slow starting team. We're getting to the finals. We're finally starting to see these more dominant finishes from Ulf. But second place, Nemo Galaxy. I got a segment later on, but you know what? It's good to see that once they do get out of the hot drop 7, they can actually put up big points. They can put up those big points. Talking about big points here for some teams, it was none other than Godlike and OG. This was a match that they really needed laced because the middle of the pack teams were eliminated very early on. They needed to be able to catch up, but both teams were only able to catch 5 points apiece. I mean, look, it's still a great improvement from them. And being so, they had like that kind of control in the middle of zone. So they were there for that early rotate. I would have liked to sort of see, I guess, OG apply a little bit more pressure to their eastern side. But still, to get to that point after the first couple of matches is a better thing for them. Obviously, we talk about slow starting teams, and they are one of them. But I do believe that coming into like the next match,
we're probably going to see them a little bit more active. I mean, they need to be a little bit more active in that, but to get to that, I guess, spot that they have, it's a lot better than the previous match. It is. And one team that was able to, that's also been starting off slow, but finally being able to wake up, Max, none other than 4Thrives. 4Thrives getting 8 eliminations this last match. Good to see. Finally, good to see it, especially a lot of those eliminations actually secured on 2 teams that were interesting. You had Team Flash a little bit early on in that game too. That was fun to see how they won that little bit of an encounter. Huzaifa in particular, he carried that fight from start to finish. Really good numbers from Huzaifa. But they had a very good early rotation, and you could say a bad rotation for Nongs from Red Force, where they catch them off guard. They didn't expect to clash next to Potato Hill. And you know 4Thrives, right, Nipchura? If they can take a fight and you are in a weakened state, they're going to chase you down until the edge of the earth, and that's what they did, and Nongs from Red Force took a massive L there. So 4Thrives, if you know where they're going to rotate, I would try and avoid them because they don't like having neighbors around them. No, they don't. And even in this state of where we're seeing them of just kind of indecision, I think they don't really know what's going on. But it is nice to see that, they're still a threat even in this state. And it's just been really difficult for me to watch 4Thrives because I'm used to a very confident team that knows exactly what they're doing at all times. And I can tell that they're not sure what's wrong, why this isn't really happening. There's a little bit of the old spark there in this last game, but I think really it's just indecision. They're hesitating just too much. Didn't you say like something about T24 going out a lot early recently? Like that's been a big issue, right? Early. Yeah, and he's one of the big fraggers. He's really up and coming as a big fragger for the team. So for him to go out early, yes, Huzaifa is able to clutch, but you know, T24, they need a 4th player. They need somebody like him on that squad to just stay alive a little bit longer. Yeah, T24 was able to start slow during groups as well. Then he was able to pick it up. But right here in the finals, you don't want to be starting slow. So that's one team we'll definitely be looking to see bounce back. One team that has been really consistent, especially with eliminations, we talked about it earlier, Lace, is none other than Tiamba. Tiamba just keeps putting up those eliminations in a big, big way. They absolutely have, and I also want to add into that, like, keeping up those sort of eliminations. It's also E-Arena. Like, we sort of, like, look at these 2 powerhouse squads, and we're going to have to get a mashup with these 2 teams because they are making it in those top 5 positions. They are clearing their space. They're grabbing the eliminations along the way, even in a fight where I think it was Enigma Galaxy could have pushed E-Arena a lot earlier in their position, but for whatever reason, I'm sure Max will cover it, they didn't sort of get into that contention, but E-Arena just kept making power plays for the spot that they want. Tiamba is also making those power plays to get the position that they want. And obviously early eliminations, especially in today, is what will capitalize you for going into tomorrow. So this steady, I guess, excel in eliminations has been awesome from both of these squads. Yeah, especially for E-Arena, right? Remember what we saw of E-Arena in day 1 of their Group B? They were able to get those 29 eliminations in Rondo, and then after that, they kind of just ended up dying off us. We're actually going to be looking at a comparison between Group Day 1 and also what they're doing here in the finals. And something that I want you to keep in mind is the placement that this team is currently being able to put up, being able to survive even longer, and the eliminations are even higher because they have been consistent with those eliminations. They have been very, very consistent. It's been back-to-back-to-back games of just really good placement, good strategy, good synergy with the team as well. They look fairly confident. The lobby is hard. I'm going to say that. It is a very, very difficult lobby, night and day from the group stage, from the survival stage, but they are handling it very well. I do want to say very quickly, what I loved about the fight with 4Thrives, right? That dip, the way they use the terrain, because there's a bit of a cliff area there, it's a dip, and then you got those 2 cliffs, and what actually they ended up using is they went off the cliff, back behind 4Thrives, and then used that terrain where they couldn't actually see to move around in front of them as well. So it gave the illusion that they were everywhere at once when really they weren't. And for a team that is slightly struggling like 4Thrives, that was just the death knell. So very well played by EA, good knowledge of the terrain and great synergy overall. It was a magic trick almost. It was. It really was. Max, there is something that has been pretty much pissing us off when we talk about Erangel, and that is the hot drops that we're seeing between Enigma Galaxy and none other than Ida. It's good for Enigma Galaxy right now, but Ida is just, they're just squandering their hopes. Yeah, I mean, Enigma Galaxy, you saw what we could do when they can actually get out of the hot drop, but here you go, Pachinki, Enigma Galaxy dropping there since the 1990s at this point, and Ida going to be joining up on this one. And initially I was like, okay, Ida, you should not be going for this hot drop. You know as a clear-up fact that Enigma Galaxy will never go up this location. And it's almost getting to the point for me, Nipchura, where I'm thinking Enigma Galaxy maybe
this would be a good opportunity for you to start leaving, because Ida are not just ruining your Erangels, they're ruining your entire tournament run so far. Yeah, it's really weird, right? Because for Nigma Galaxy, it's like Ida is the newcomers. They need to get out. Clearly, it's not working for them. They have 2 points over the entire day. 1-2, that's it. But you're right, Nigma Galaxy is ending up ruining their tournament chances as well, because we are seeing really good performances from Nigma. I love how they've been playing, but they're just entering the zone way too late because of Ida. Yeah, of course, we did say this game was good, right? Because they got out of the hot drop as a 4-man team. They lose a single player. I promise you, they do not get a finish like that. They do not get that many points. So right now, Nigma Galaxy, I would say there are other options available, and I understand it's your drop. You've been there for the longest time, but I do not care at this point which team leaves. One team has to leave. This is a waste of time, and it's making me angry, and I'm just looking at that on the early game. Can I also just interject here and go, Ida, what are you doing? Because this is a team, remember, that got in through the group stage. They were second in their group. They had a fantastic second day. They won like 3 of the games. They were hyper aggressive. We know this is a team that can play very well, but they're wasting everything on a hot drop 3 times in a row. Yeah. Again, they have 2 points. You're not going to win on 2 points. And teams are starting to notice this is such a waste of time. Like 4 Thrives, I think it was on one of the Erangels early in Iptera, they like just instantly third party it. And now teams are going around Pachinki waiting for the loot truck to come out, because they know no one is going to get that loot truck, because they're so focused on that clash between Nigma Galaxy and Ida. Of course here, big respect, by the way. Nigma Galaxy, the smokes and the way they started pushing these solo players, that was very well executed, but one mistake, one slight error, and you lose a player, and instantly your chances of a win dwindle to almost nothing. Well, we know exactly what happened when 4 Thrives joined the party, right? Nigma Galaxy lost a couple of players, and then we didn't really see them in that game. They went out fairly early on. They had to full send. Game 1, they had to full send to the beach and just kind of stay there. There was no opportunity for them to get any points whatsoever. So, yeah, for Nigma, this is bad on both sides. I'm mad at Ida for initiating this every single game, but Nigma need to figure out how to adapt to this. Yeah, we'll have to figure out how to adapt to this. If I had to pick one team to stop hot dropping in Pachinki, it wouldn't be Nigma, because Nigma has been getting the better end of this, especially they showcased what they were able to do in the last match. They're getting the eliminations too, so Nigma Galaxy, keep on doing your thing. If you're Ida, get the heck out of town. You need to find a different spot. But when we're talking about someone, you're gonna pretty much see here just the finish of this engagement between these squads. You know what, Max, Lace, who would you want to see just give up this hard drop between Nigma and Ida? It's got to be Ida, right? Like it has to be. Like, they're not even getting any further into the late game. They should have just made the decision to sort of rotate from this position. I mean, you know, I was kind of touching on, I think, Nigma Galaxy a little bit later into the zone, how they're making slow decisions. But again, this is slowing their decision. But Ida just, Look, by the way, look on the left side of your screen. While they're still in their looting stage, technically, right? So hot drop's a bit weird, it's a bit different. You have Nongshim Red Force fighting 4 Thrives on their first rotation after the looting stage. This is, look, even here, you have to fight Orangutan fighting Ulf. So everything is happening in the game. Teams are not going to wait for you. And while that's happening, you're still in your initial drop location and you have no scouting done. The loot truck, you can see on the left side of your screen, he came back for round 2. Round 2, and the fight is still not done. What are we doing? It's okay, Max. This is Picado red buildings all over again. It's really annoying. It's Picado red buildings all over again, Max. I mean, we get so mad at that hot drop, and we still have the Miramars to go. So if either of you hot drop red building Picado, I am going to come over to your table, and I'm going to moonwalk. Be aggressive. Yes, I'm going to moonwalk. Look, okay. I'm going to hee-hee at you. TLDR. Very aggressively. TLDR for the entire segment. We don't like it. End of story. Yeah. Unless you're Nigma Galaxy. Nigma Galaxy currently in 3rd place. You have E-Arena right now in 1st place with 48 points. Tiamba continuing on those consistency of eliminations. This is the main story for Tiamba right now. 45 points, 37 coming from the Elims. And if we start going down, we are seeing one team that has been going down as the day has been going on. And it's none other than Aurora, Max. Yeah, unfortunately, I still have not seen the comeback of Doc, right? I would even take the dockening at this point. I would be like, I want to see something come out of it. But yeah, they've definitely been slowing down quite significantly. Keep in mind, they've got 11 placement points, sure, but they got 2nd place on the first rondo. That's 6 placement points. After that, the rest of the day is only 5 placement points after 3 Erangels back to back to back. Quite disappointing, especially when it's just outside of Ferry Pier. I was expecting way more. They're slipping down, and especially when Ulf now, they just got a 4-man finish. You know, Ulf are going to be chasing for that podium spot.
I mean, for me, I'm not too worried about Aurora right now. They've had a good start to the day or start to the finals, and we do know that this is a team that really waits until the last minute to actually do something. They just do just enough to stay ahead. But the problem is when you're seeing teams like Ulf, like Vitality, we haven't even seen Vitality at their best yet. You know, teams like this that are going to be coming up and gaining that momentum as the days go on, Aurora are going to get left behind pretty quickly. So you are worried or you're not worried? I'm on the fence as of right now. At the end of the day, I'll be a bit worried. Okay, because you say I'm not worried, and then you started sounding very worried to me. I'm not too worried. It started to sink in. She's like, oh, actually, this isn't looking too good. She just kept saying more teams, and I'm like, okay. That sounds like you're contradicting yourself here. 4Thrives ends up finding themselves here in the first page, but going here towards the second page, we really haven't seen much lays out of S2G. With Furia, it's been a hit of a miss, and then we got some of the other squads there. S2G are getting busy, right? But they are sort of like losing the contests on these fights. They're able to get the placement points. It's been great. Chicken dinners are coming through, but it's kind of like more of a gifted scenario in a lot of segments. But you've heard me about Fury, guys. I'm not going to go on about that. But what driver's license. I won't carry on about that. But look, I even just want to touch on Vitality. We didn't really get to talk about them. They are playing incredibly scared. So Neptura, after your sort of worried statement, I am also worried in that sense, because even in that final zone there, they had the western side to sort of scoop up behind Nigma Galaxy, and they did nothing. Yep. One team that I want to see more out of, especially towards that second page, is none other than Godlike. And I would love to see the player stats so far today, because this is a team that a lot of people were expecting to actually finish pretty high. And it has to come with the fragging power of S-Power. And right now, for S-Power, to give him a break, he is the only one that's performing for the squad, being able to average at least one. But the rest of the squad is just not looking good. It's looking pretty bad in terms of eliminations, and the reason why the eliminations are so low is look at their survival time. They're not even breaching the 20, and some of the players not even the 18-minute mark, which is not good in a lobby of this caliber if you want to be contending for that, let's say, top 5 situation right now. So Godlike, even looking back on this game, they should have pushed up onto, I think it was Ulf's compound, but they got very idle, because the thing is, compared to the group stage where some teams might do mistakes and you might be able to weasel your way in, here you have to take fights head on if you want to have a chance to get very late into those games, get those placement points. Godlike, in a lot of like you cannot be hesitant. We've seen in your group stage, you have that raw fragging power from S-Power, from Admino, even Sommei, and Manya is a great IGL, but you need to utilize it and take your chances. Yeah, what I've noticed is Manya is making these sort of scouting power plays, but the rest of the team is not supporting him, which they're getting caught out. So, I mean, it's surprising to sort of see that level that they're at right now, because Manya is making incredible decisions, but it looks like a few other sort of on the team are just kind of tunnel visioning into the wrong direction, and then that's when they're getting caught in. Yeah, I think also one thing that we really need to think about, or they need to think about, is it seems like they keep going for positions that put them in a position to have to fight teams head on, and they're not succeeding in winning those fights. So if you want to make sure that you're actually going to get a position and be in there in the late game, you know, if you know that you're not really fragging out against these squads in the finals, then stop putting yourself in these tight positions in between teams that mean you have to frag your way out of them. Play a little bit more like Vitality, the way that they're on the edge. Nigma Galaxy as well, they're on the edge. They try to just wait out other teams, take a fight here or there, but just survive and keep their players for later. Survive. That's the name of the game, all right? Just survive. It's so easy. Why don't you do it, Godlike? Actually, I believe they'll be able to turn it around. It is their first time here in the finals international event for a lot of its players. S-Power, I'm still proud of you, brother. You're still putting up the numbers, and I think you're going to do even more as the day goes on, as the days do end up going on. But for right now, let's send it over to none other than the stylish man, Blank, and our special reporter, Kalaris. Yes, the stylish man and the short man. I get it. It's fine. Don't worry about it. We've got ourselves Mr. Blank here to talk about everything. Oh, you're my special little reporter, aren't you? Right, yeah. I'll try my very best to rise to the occasion. My special little man here on the stage here. Shut up and go away. All right, we've got Tiamba to talk about as well, of course, as they have looked stellar in terms of their positioning and how they've been playing these games out, Blank.
Yeah, they have been really, really good. I'm so sorry. I do love you, bro. But honestly, there has been moments where the decision making has been fantastic. I think that the way that they are speedily going to sometimes their demise is actually astonishingly good, right? Because I think me and Jackie were talking about this. I don't know if you'd agree, but there are times where they'll make what feels like the best decision in a bad moment, right? Where a lot of teams would just stand by and probably get naded and be like, oh, it's over. Well, Circles haven't been kind to them, so they've been able to kind of fight against some of that adversity. And I think that when you watched as QZZ was able to get MVPs on international stages this year alone, I think a lot of people, including Max and some pundits, etc., wanted extra people to be able to step up to the plate alongside him. Sure. Milu's been able to do that like twofold, which has been really phenomenal to watch so far. Oh, Milu has been amazing. Milu's been really, really good. It's fantastic to see. I mean, you were talking about it was FMVP for PMI, where he was able to get 39 eliminations over 7,000 damage for QZZ. But yeah, they have balanced the load in a big way. I think it's a really, really nice thing as well seeing A-King, because it very much reminds me of the way that Alpha 7 used to play. They're not playing now. Ignore that bit. Ignore that bit. Let's just put that to the side for the time being. But yeah, A-King's kind of like the Revo of the team. He plays forward, he plays shotgun for the team. Milu's just very good in those clutch moments. And yeah, the load is spread out very, very evenly across the squad. Eagle is also a great survivalist. I think they have all the tools necessary to actually honestly win this at this point. As you're talking, you're getting further away. Come back. It's fine. No. Please. Okay, where's my box? The thing is, I think when you look at Tiamba's performance so far, and we can wrap it up on this and move on to our next team, is that double chicken dinner that they got at the start of survival stage, huge revitalization for them to be able to get themselves back on the road again and actually push to be able to find themselves in this state that they're in right now. What do you think? Yeah, very, very good. I do think that that's what they needed, because the confidence came through. Every time I look down at Milu on the stage, right, it's very... Milu. I do like Milu. It's very heartwarming because there's... I like it when players are enjoying themselves, and Milu definitely enjoys himself. He's one of the smiliest guys I've seen. QZZ is a little bit more serious, I would say, other than the winning moments where, you know, he almost breaks his fingers on the high fives. That was funny. But I do think that for Milu, it's just nice to see a guy who's so good at the game, but also very much is passionate and enjoys his time in it. And he should be, because he's having an unreal run. All right, let's move on to another team then, as we have Ulf, who has looked, I would say, towards some of these latest moments, pretty good as well. Obviously, they qualified off the back of having that last game survival win, which was extremely important for their campaign as a whole. And they are one of the teams that a lot of people thought was going to be able to attain those top spots. Right now, their space control is looking good, especially in this last game. Yes, very much so. I mean, I'm one of those believers. I'm an Ulf believer. Okay, Everyone knows that. Everyone knows that Eren is one of my favorite players. Ketch also from way back when, MVP in PMPL Season 1 Spring. He's not quite as old as me, but he is pretty old. He goes way back. He's old, yeah, but he's still got it in him. He's got the grizzled beard, he's a grizzled warrior. But he looks good. And I think that for Ulf, though, that last game was fantastic for me in particular, because we were talking about it backstage, right? And I said, if Ulf wins this game, I really believe in Ulf to actually win the game that they should be winning if they make the necessary movements, which was to take out Tiamba and slowly corral the rest of the squad. So लेकिन उधर से लेके अभी तक का सफर आई थिंक मुझे लगता है कि हम काफी लंबा सफर तय कर चुके हैं. हाँ, और बहुत दूर जाना है और बहुत बेहतर करना है, बट मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को अभी पता चल चुका है कि इंडिया क्या कर सकती है. जी बिल्कुल, अब तो आई थिंक अलग अलग टाइटल्स में हमारे एथलीट्स हमको नजर आते हैं, बट फिलहाल कंपटीशन की चलिए बात कर रहे थे, बिकॉज वो जो नो कंपटीशन का हमारा टाइटल ट्रैक चल रहा था कुछ दिन पहले तक, वो मैं चाहूंगा वापस आए, बट उसके लिए अरोरा जैसी टीम से होके गुजरना है. एक चीज कही थी मिस्टर शर्मा ने जब वो कमेंट्री कर रहे थे कि जितने भी टूर्नामेंट्स रहे हैं अभी तक इंटरनेशनली, ज्यादातर टूर्नामेंट्स के MVP रह चुके हैं टॉप, और उनके पीछे जो खिलाड़ी हैं डॉक और जियोल, वो भी कुछ कम नहीं है. इन प्लेयर्स का जिस दिन डेब्यू हुआ था, मेरे को वो मैचेस याद हैं. तब एक दूसरे रीजन में इनको मैचेस खेलने पड़ते थे जहां पे पिंग के इश्यूज रहते थे, एंड येट दे यूज्ड टू डोमिनेट. और वहां से लेके आज तक का सफर जो इन्होंने तय किया, दे जस्ट मेंटेनिंग दैट टॉप फॉर्म. और फिलहाल हम लोग जैसा बात कर रहे थे, आई थिंक ग्रुप स्टेज से डायरेक्टली क्वालिफाई करी टीम्स में से दे आर प्लेइंग द बेस्ट. बिल्कुल, एंड मुझे लगता है कि अरोरा के परफॉर्मेंस की शुरुआत से अगर मैं बात करूं, इनका जो प्रेडिक्शन है ऑफ जोन वो बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट है, एंड वो चीज मुझे लगता है कि मिरामार में और ज्यादा उनको फायदा देके जा सकती है. अभी तो फिलहाल के लिए 4th पोजीशन में है, लेकिन वो क्लाइम कर सकते हैं आखिरी आखिरी 2 मुकाबलों के अंदर. एंड स्पेसिफिकली जब आपने शुरू में भी पूछा था कि प्रेडिक्शन क्या है, तो मैंने ऑरोरा कहा था टॉप 3 के लिए.
यही वो रीजन था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर करेंगे। अभी फिलहाल 4th चल रही है अरोरा गेमिंग इस ओवरऑल लीडर बोर्ड में। बट नेक्रोस, आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज वहां पे जब स्टार्ट्स हमने देखे एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी थी कि एवरेज सर्वाइवल टाइम 20 मिनट से कम का चल रहा है, लेकिन वो फिनिशेस कंसिस्टेंटली अरोरा निकालती नजर आ रही है। और आई थिंक इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं ओवरऑल लीडर बोर्ड में। उनकी प्लेसमेंट के ऊपर भी सिर्फ 11 प्लेसमेंट पॉइंट आए हैं, बट एलिमिनेशंस 25 निकाले हैं इन्होंने। द फैक्ट इज अरोरा हमेशा एक ऐसी मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं कि अगर उनके पास सर्कल का एडवांटेज नहीं भी है तो जैसे वो सर्कल में घुस रहे हैं वो फाइट लेके घुस रहे हैं, वो अपना जगह बना रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी अल्फा मेंटालिटी जो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास वो जगह नहीं है बट मुझे वो जगह चाहिए हमारा मैच जीतने के लिए, तो उसको हम छीन लेंगे। दे आर प्लेइंग इट गुड, बट और ज्यादा अच्छा फंक्शन तब कर रहे जब अरोरा के चारों प्लेयर्स जिंदा रह रहे। There have been couple of matches जहाँ पे अरोरा के 1-2 प्लेयर्स अर्ली एलिमिनेट हो गए, वहाँ पे वो उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं हो पाए। वो कुछ 1-2 मैचेस खराब गए, बट स्टिल टॉप 4 है, बढ़िया है। बट जैसा आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, कुछ ऐसे नाम जो शायद हम सेकंड चार्ट पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आफ्टर द फर्स्ट स्टार्ट। S2G एक चिकन डिनर लेके 9th पोजीशन पे बैठे हैं, एक अच्छा मैच, वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट, उसके बाद उनको प्लेसमेंट का पॉइंट भी नहीं मिला है, एलिमिनेशन में भी बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, एंड दैट इज वेरी कंसर्निंग अलॉन्ग विद फ्यूरिया एज वेल। मैं फ्यूरिया पे आने वाला था, और साथ ही साथ नॉन्गजिम रेड फोर्स भी देखिए 20 एलिमिनेशंस निकाल लिए, बट प्लेसमेंट पॉइंट सिर्फ एक ही आया है। इन दोनों टीम्स के ऊपर चलिए बात करते हैं थोड़ी देर। बिकॉज फ्यूरिया, जब हमारा PMWC स्टार्ट हो रहा था डे 1 पे, मेरे साथ यहाँ पे मेजी और मिस्टर शर्मा थे, और उन दोनों का कहना था फ्यूरिया इज द टॉप कंटेंडर फॉर द ट्रॉफी। मेजी, मैं समझ सकता हूँ कि रोकने की कोशिश कर रहे थे फ्यूरिया को ताकि हमारा काम आसान हो जाए। आज तो भाई जीजी है भाई मैच में। फ्यूरिया इज डेडली। देखिए, पहले तो मैं नॉन्गजिम के साथ शुरू करूंगा। नॉन्गजिम की अगर मैं बात करूं, पिछले स्टेज पे जब वो खेल रहे थे, सिर्फ फिनिशेस नहीं, उनके पास वो प्लेसमेंट पॉइंट्स भी सिमिलर तरीके से आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी अच्छा खासा क्लाइंब किया। बट जैसे कि हमने पॉइंट स्टैंडिंग में देखा कि इस बार सिर्फ एक ही पॉइंट आया है, तो उस पर उनको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ फ्यूरिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा इधर हलचल मच चुका था कि शायद वो इस बार चैंपियन बन के जाएंगे, बट आई डोंट नो, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला कि इतना ज्यादा गिरावट क्यों हुआ है उनके परफॉर्मेंस में। आपको पता चला नेक्रोस? आई जस्ट फील लाइक कि वो अभी भी अपना नेचुरल गेम पे वापसी नहीं कर पा रहे इन द ग्रैंड फाइनल्स, क्योंकि हमने फ्यूरिया को सर्वाइवल स्टेज पे देखा। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राजीलियन स्टैंड ऑफ, उसके बाद वहाँ अल्फा 7 का एलिमिनेशन हमें नजर आया, which was definitely one of the biggest setbacks for the Brazilian region, and but still जब आप अपने region को अकेले represent करें, दूसरी तरफ नॉन्गजिम रेड फोर्स भी है जो कोरिया को represent कर रहे हैं वहाँ, but वही है कि फ्यूरिया के पास जो हिगोर है, आप साइलेंस की बात करते हैं, ये बहुत, I mean they are brilliant players, and इससे पहले भी हमने देखा है, उनके इंटरव्यूज में हमने देखे, हिगोर was very confident with his gameplay, but हिगोर का भी जो प्रेजेंस है वो कुछ हद तक मैं बोलूंगा फेड अवे हो चुका है कंपेयर टू ग्रुप स्टेज में या फिर सर्वाइवल स्टेज पे जैसा उनका परफॉर्मेंस था। जी बिल्कुल, बट देखना यही होगा कि क्या सही टाइम पे ये परफॉर्मेंस वापस आता है। फ्यूरिया की तो चलिए हम डिस्कशन करते रहेंगे, बिकॉज अगेन टॉप कंटेंडर्स नॉट प्लेइंग लाइक द टॉप कंटेंडर्स। मीरामार परफॉर्मेंसेस की थोड़ा बात करते हैं। इनका मीरामार के परफॉर्मेंसेस अभी तक कैसे रहे हैं? क्या इनसे बड़े मीरामार मैचेस हम एक्सपेक्ट करें अभी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जितना खराब हो चुका है, इससे तो जो भी होगा बेहतर ही होगा शायद। इससे खराब तो और कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ चिफ की, तो अभी तक इनके पूरे खेल को अगर कोई एक प्लेयर ने बहुत बार बचाया है तो वो चिफ थे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है उनको क्लचेस निकालते हुए, मल्टीपल टाइम्स वो लास्ट प्लेयर रहते हैं जो सर्वाइव करते हैं। तो मुझे लगता है कि चिफ का सिर्फ अकेले का परफॉर्मेंस करना वो नहीं चलेगा। जैसे कि आपने कहा कि हिगोर एंड साइलेंस दोनों ही बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस चाहिए अगर उनको भी क्लाइंब करना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज शायद चिफ उस हिसाब से नहीं खेल पाए, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल टीम गेन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। यार अब चलिए एनएसआर की तरफ भी आ जाते हैं। नॉन्गजिम रेड फोर्स आई थिंक स्टार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था, 20 फिनिशेस भी निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट्स नहीं आ पा रहा है। शुरुआती मैचेस के अंदर फाइट्स काफी बेहतरीन इनकी तरफ से नजर आई, लेकिन उसके बाद अचानक से नॉन्गजिम रेड फोर्स गायब हो गई। नेक्रोस, आपसे पहले शुरू करना। रोटेशनल क्लैशेस मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है नॉन्गजिम रेड फोर्स को फंसते हुए, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो डायरेक्टली एक 4-on-4 फाइट में फंस रहे। ऐसा भी हो रहा है कि कई बार वो एक रोटेट करते हुए जा रहे, दो टीम्स के बीच से आ रहे, एक इंडिविजुअल प्लेयर उनका पिक ऑफ हो रहा है, फिर जाके कहीं पे फंस रहे, एंड देन इमीडिएटली उनको फाइट पे इनिशिएट करना पड़ा है। वहां पे थोड़े से अनप्रिपेयर्ड कुछ इंस्टेंसेस में नजर आए थे नॉन्गजिम रेड फोर्स, एंड घूम फिर के वापस बात ह्यूनमिन पे ही आ जाती है कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो फ्रंट लाइन पे संभाल रहा है, बट एज सून एज ह्यूनमिन वो गिर रहा है, उसके बाद नॉन्गजिम रेड फोर्स कुछ हद तक वो कमबैक कर नहीं पा रहे, जो कि अकेला अगर ह्यूनमिन भी बच जाता है, सपोज उनके बाकी दो प्लेयर्स नॉक हो गए, ह्यूनमिन स्टेप अप कर रहे हैं, वो अपनी टीम
उनको बचाए। ऐसे हमने इंस्टेंसेस देखे, सबसे बड़ा एग्जांपल शायद वो रोंडो का फाइट ही हो जाएगा जहां पे एडमिनो ने 2 खिलाड़ी टेक डाउन कर लिए। वी वेल लुकिंग लाइक कि हाँ गॉडलाइक यहाँ पे आराम से टेक डाउन करेंगे, बट देन अगेन एक सरप्राइज आता है, वहां नोंगशिम का एक कमबैक नजर आता है। बट कीपिंग दैट थिंग असाइड, बाकी मैचेस में अगर आप थोड़ा सा उठा के देखिए, एज सच बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस नोंगशिम की तरफ से हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल, एंड मुझे लगता है कि देखिए नोंगशिम की ही तरह टियनबा की भी अगर बात करें, टियनबा के पास अभी अच्छे खासे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके टीम के अगर मेन 2 प्लेयर्स हैं मीलू एंड क्यूजी, अगर ये दोनों नहीं चल रहे हैं तो उस टाइम पे उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर ईगल मैं मानता हूँ कि हाँ थोड़े बहुत जो है वो शॉट्स उन्होंने लिए हैं, थोड़े बहुत फिनिशेस उनके पास है, बट एट द सेम टाइम टियनबा के भी ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो पूरा जिम्मा है, मुझे लगता है कि वही दोनों खिलाड़ी ने अभी तक लेके आए हैं। पिछले सर्वाइवल स्टेज पे भी हमने देखा था और इस बार भी हम देख रहे हैं, बट हाँ सिर्फ डिफरेंस यही बात है कि उधर मल्टीपल 1 से ज्यादा प्लेयर्स हैं और इस टीम में बस एक ही प्लेयर है। मैं आई थिंक इस पे थोड़ा सा मेरा जो सोच है वो अलग है। आई थिंक नोंगशिम के भी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिविजुअली अगर बात करें, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने देखा था रन कुछ ऐसी ही रही थी जहाँ पे शुरुआत फाइनल्स की अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ चंद मैचेस इनके इतने बढ़िया चले गए थे कि वहां पर मोमेंटम इन्होंने काफी भरपूर तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। सो वो फ्लैशबैक्स मेरे को बार बार आ रहे हैं नोंगशिम रेड फोर्स के। बट मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल हाँ मैं अगर उनके पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल तो फुल है उनके पास, इस पे कोई भी दोहराई नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर मैं फॉर्म की अगर बात करूं तो मुझे लगा कि शायद उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। बट यू नो व्हाट, अभी भी मुझे लगता है कि एक्स फैक्टर काम करता हुआ द स्मैश रूल। यस दे वन राइट। अगर आप पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स उठा के देख लें, नोंगशिम हैज वन अ टूर्नामेंट विद द स्मैश रूल, सो यू जस्ट कांट काउंट देम आउट। एंड अभी ये डे 1 है, डे 2 पे वो पॉइंट्स निकालेंगे, यू जस्ट नेवर नो। नोंगशिम एक डार्क हॉर्स की तरह आते हैं, जब आप उनको एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो कमबैक कर सकते हैं, वो अचानक से स्टेप आउट करेंगे, कमबैक करेंगे, एंड स्मैश रूल की कैटेगरी में अगर एक बार पहुंच जाए, I feel like you should just watch out for them, because आपको पता नहीं कब वो चिकन डिनर निकाल के आपके सामने से वो चैंपियंस टाइटल लेके चले जाए। जी बिल्कुल, बट वो एडवांटेज आपको तभी मिलेगी जब आप पोडियम के करीब रहेंगे या फिर जो टॉप पे टीम चल रही है उनके करीब रहेंगे। अभी नोंगशिम के लिए भी वही दिक्कत है जो गॉडलाइक के लिए है कि पॉइंट डिफरेंस बिटवीन वेयर दे आर एंड वेयर दे वांट टू बी एट द एंड ऑफ डे 2 वो काफी ज्यादा हो गया है। बट ऐसा गॉडलाइक की बात करें, एनएसआर के लास्ट ईयर की बात करूँ तो स्टोरीज आई थिंक पोटेंशियल इन टीम्स ने हमें सेम ही दिखाया है, लास्ट टू फर्स्ट चेस डाउन किस तरह से करते हैं। इनफैक्ट गॉडलाइक ने तो ये चीज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करी थी। अभी हाल फिलहाल में जो हमारा प्रो सीरीज समाप्त हुआ है उसके अंदर डे 1 खत्म किया लास्ट पोजीशन पे, डे 3 खत्म किया नंबर 1 पे। तो हम जानते हैं वो एक्सप्लोसिवनेस आ सकती है, लेकिन कितना ज़रूरी रहेगा कि वो एक्सप्लोसिवनेस आज ही के दिन आए, कंसिडरिंग इस बार स्मैश रूल से इनका सामना होने जा रहा है इनके करियर में पहली बार। ठीक है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज की शुरुआत हुई, हमारे पास 3 मैप्स रहते हैं जिनमें से हमें पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया था कि इरिंगल उतने अच्छे नहीं हैं हमारे जी। रोंडो बहुत अच्छे हैं, मिरामार में भी चिकन डिनर निकाले गए हैं, तो इरिंगल के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाया। रोंडो भी अनफॉर्चुनेटली आज उतना बेहतर नहीं जा पाया, तो अभी तो बस लास्ट होप मिरामार का ही है और मिरामार में देखना होगा कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कमबैक्स की, वो कमबैक्स होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हर टाइम अगर आप सिर्फ कमबैक के ऊपर ही रिलाई करोगे तब दिक्कत होती है। बट मैं अभी भी मानता हूं कि कमबैक हो सकता है, बस आज ये लास्ट 2 मैच में ठीक ठाक पॉइंट्स अगर 14 to 15 पॉइंट्स 2 मैच में निकाल के लेके जाते हैं, मुझे लगता है कि कल ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, बट आई थिंक अभी फिलहाल एक बार फिर से स्पेरो के साथ हमारे कुछ चहीते क्रिएटर्स जुड़ चुके हैं, जिनमें से एक तो खुद इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एक टाइम पे इंटरनेशनल स्टेज पे। चलते हैं स्पेरो के पास, जिनके साथ है Z-God और Mizo। Alright guys, I'm standing with Mizo and Z-God from Godlike. Mizo, Z-God, I know आप लोग guys बहुत समय से पेरिस घूम रहे हैं and I would love to know your experience of Paris. So Paris has been my dream for a while. Not a while actually, childhood से तो इधर मैं work related काम के लिए आई हूँ. That's like my dream come true. I'm having a lot of fun and it's exactly how I imagined it to be. What about you? पेरिस अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया है मैंने, बट जो मेन काम था AWC एंड ग्रैंड फाइनल्स में इंडिया को देखना, तो बस मज़ा तब आएगा जब इंडिया के लड़के अपनी ट्रॉफी उठा ले, बस तब मज़ा आता है। यार पेरिस की बात मैंने पता क्यों करी, क्योंकि इस बार ऑफ कोर्स ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पेरिस में हो रहा है एंड आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस अबाउट द ई-स्पोर्ट्स अरीना। कैसा लगा ये अरीना आपको? यार मैं अभी तक
लास्ट ईयर की EWC पे नहीं गई हूँ, बट ये साल का देख के आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वन. लाइक इट्स अमेजिंग. आई हैव नेवर बीन टू अ प्लेस लाइक दिस कि गेमिंग को इतने बड़े स्टेज पे ये लोग लेकर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. आई एम लविंग इट सो फार एंड द पीपल आर सो नाइस, वेरी हॉस्पिटेबल एंड द अरीना इज ब्यूटीफुल. यार मैं क्या, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स लिटरली. सो आई हैव हर्ड कि इस अरेना को बनाने में विद इन 2 months के अंदर इसको बनाया है, एंड क्योंकि पहले सऊदी में होने वाला था एंड फिर इन्होंने पेरिस में शिफ्ट किया. बट यार बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इतना बड़ा अरीना 1.5 या 2 months के अंदर बना रहे हो. क्रेजी भाई, बहुत ऑडियंस, फिर जो वाइब है इधर की, फिर जो सारी चीज़ें करिए, फूड, प्लेयर, वेन्यू, सब कुछ भाई क्रेजी. Alright, for the next question, I think मैं थोड़ा सेंटर में आता हूँ and I would love to know कि आपने कोई French word सीखे या नहीं. Starting with you, then we'll go there. No, first and first. Okay, first Z-God, yeah. Bonjour. And what about you? Bonsoir and it's like good evening. Evening में bonjour नहीं बोल सकते. And then au revoir, that's goodbye. Merci beaucoup. Thank you so much, guys. Here you go. दो लोगों के चेहरों पे साफ नजर आया कि पहली बार वो शब्द सुना है उन्होंने, और उनके साथ 3 लोग यहाँ भी बैठे, बिकॉज हम तो सुबह हो शाम हो बोनजोर ही बोलते रहते हैं. I was just about to say कि हमें तो सिर्फ बोनजोर ही आता, उससे पहले तो कुछ आता नहीं है. हम मतलब इतने टाइम से रात को भी गुड मॉर्निंग बोल रहे थे लोगों को. Oh my God. बट चलिए एक और चीज ये भी हमने जानी कि भाई स्पीरो, उन्होंने हमें अरीना नहीं दिखाई है. This is bad, right? Yeah. उन्होंने हमें खाने का जगह दिखा दिया, गेमिंग जोन दिखा दिया, केक्स, बर्गर्स, पिज्जा सब दिखा दिए. अरीना नहीं दिखाया. और सबसे इम्प्रेसिव चीज इज द अरीना, जैसे Z-God ने बताया, एक इतनी बेसिकली गेमिंग सिटी खड़ी कर दी गई पेरिस के अंदर फॉर EWC 2026. इतने सारे टाइटल्स के कंपटीशन हो रहे हैं. स्पीरो, वेयर इज द टूर? वेयर इज द टूर? इट्स नॉट जस्टिस चाहिए हमें. देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे दिल की बात सुन चुके थे, मतलब कि उन्होंने इसीलिए खाना दिखाया पहले. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन. ठीक है, नेक्रोस कैसे हैं आप? यस एग्जैक्टली. आप आइए, हाथ मिला लीजिए. हम सेम जी. यस. अब चलिए वापस से आते, लेकर आते ब्रॉडकास्ट के ऊपर आते हैं. हमारे इंपॉर्टेंट मैचेस चल रहे हैं और फिर से इंपॉर्टेंट मैचेस. अभी प्रेशर हर बार, खासतौर से ग्रैंड फाइनल्स की बात करें, हर मैच के बाद एक नई पीक हिट करता है. फर्क नहीं पड़ता आप टॉप पे बैठे हो, आप लीडर बोर्ड के बॉटम पे बैठे हो. आप अगर टॉप पे है, प्रेशर ये है कि पीछे से टीम्स अब आपका पैर पकड़ के आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगी. और अगर आप बॉटम पे हैं, डर बस ये रहता है कि जो ट्रेन आगे निकल चुकी है आपसे, वो ज्यादा दूर ना चली जाए. कैचअप करने के लिए चलिए थोड़ी अब मैच पे आ जाते हैं. आपने थोड़ी देर पहले पॉइंट्स मेंशन किए थे TTR की. 2 मैचेस है, 2 मीरा हमारे. कितने पॉइंट्स बोले थे आपने? 15 के आसपास अगर आप पॉइंट्स निकालते हो पर मैप, नहीं टोटल में. क्योंकि टोटल 15 बोला. हाँ, क्योंकि अभी पर मैप 15 एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज दिन उतना अच्छा नहीं रहा. सो इसी वजह से मैंने 2 मैप का मिला के 15 इसीलिए बोला कि कल के दिन के लिए थोड़ा बहुत और बेहतर स्टेज में अपने आप को महसूस करेंगे. और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो हमें जो कट ऑफ है टॉप 5 के लिए, वो हमें 8 के आसपास देखने के लिए मिला है. तो देखिए, एट द एंड हम अभी भी चैंपियन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें आज अभी जहां पे है उससे बेहतर के लिए सोचना होगा. मुझे लगता है कि टॉप 5 एक रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है अभी टाइम पे, मतलब रुक के. एंड उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर 15 पॉइंट अभी निकालेंगे तो कल और चांसेस रहेंगे. 13 पे एक टीम, 10 पे दूसरी टीम. 15 आए तो OG पहुंचेगी 25 पर और गॉडलाइक पहुंचेगी 28 पर. टॉप 8 में आ पाएंगे हम इतने से? आ जाना चाहिए. बट अगेन 15 पॉइंट इज लाइक जस्ट अ स्टार्ट, हेड स्टार्ट मैं कह सकता हूँ, जो शायद उनको थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड करने में हेल्प करे. एक गेम आए, लास्ट गेम पे अगर 10 पॉइंट में निकाले तो मैं मानता हूँ नेक्स्ट 2 गेम्स में अगर 25 to 30 पॉइंट्स, 30 बहुत ज्यादा हो रहा है, बट 25 पॉइंट्स पे अगर निकाले जी तो बहुत बढ़िया बिल्कुल. बट चलिए, आई थिंक हमारे जो मित्र हैं स्पेरो, उन्होंने नए मित्र बना लिए हैं पेरिस के अंदर, और उनके साथ ही हमको ये टूर लेना पड़ेगा कि EWC का अरीना कैसा दिखता है. लेट्स हेड टू स्पेरो वंस अगेन. So I am here with Dobby from Godlike and हमें पता है यार Dobby गेमर्स बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ आते हैं, तो आज हम आपके रिफ्लेक्स चेक करना चाहते हैं. Are you ready? I am ready. So you know about this game? Yes, I've seen it in the
reels and content, but I have never tried it. So today you are going to try it. Yeah. All right. I'm scared as hell. That's okay. Can you step in? So I'll tell you about the rules. So these things will fall one by one. You just have to grab them. Okay. All right. As many as possible. Okay, perfect. All right. Can we start the show? All right, Dobby. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Let's begin. That great. Almost. Yeah. Come on, Dobby. I am very bad at catching things. I feel like. That's completely fine. Hell no. No. Last three. Yeah, let's go. Hell no. What's that? Last one is there. There's one more left. Oh my, That's 2. I mean, being a gamer, it's so bad for me, but I feel like it's okay, guys. For the first time, it's okay. देखो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि no matter how you play, खेलना जरूरी है. हार मानना अच्छी बात नहीं है. And you played, so kudos for that. Thank you so much. You wanna try it? Have you tried it? I will try it in the next video. Thank you so much, guys, for watching. Bye. We will wait for the next video, Spero. हम इंतजार करेंगे. मैं स्पेरो को ये चीज करते हुए देखना चाहूंगा. लास्ट टाइम मैंने लाइव देखा था. Wasn't the best result, was it, buddy? But चलिए, डॉबी ने जैसा कहा, कोई बात नहीं, हार गई, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट ट्राई आई थिंक उनका बेटर रहेगा. और स्पेरो आई थिंक लोगों को थोड़ा प्रेशर के अंदर डाल ही देते हैं आसपास होते हैं तो. बट मुझे यही एक जानना है कि स्पीरो हमेशा दूसरों को आगे कर देते फिर खुद पीछे रह जाते. बोले मैं तो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, फिर करते नहीं. स्पेरो वही शख्स है जो बोलते हैं हम पुश करेंगे अभी और खुद बाहर बैठे रहते हैं कॉम्पाउंड के. 1 HP है. 1 HP 1 HP है जी भाई. 1 HP है TTR. अभी तो कोई 1 HP नहीं है. टीम जी 1 HP बची है फिलहाल तो. जी हाँ, देखिए अभी मजाक मस्ती चलते रहना चाहिए. और मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से आज का पूरा दिन चला है, थोड़ा सा लाइट होना चीज़ों की ज़रूरत थी. और जोक सुनाएंगे आप एक? मेरे पास तो जोक्स नहीं है उतने, बट आप सुनाइए मुझे आ रहा होता तो मैं आपसे क्यों पूछता. ये भी बात है. ये इसमें भी हंस दिया हमने. आप तो अभी भी नहीं हंसे. नेक्रोस कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. बट मुझे लगता नहीं कि जो बढ़िया हालत है वो बहुत सारे टीम्स एंड बहुत सारे प्लेयर्स की भी रहेगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले. जो शायद पिछले स्टेज में कर रहे थे वैसा सेम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पा रहे. अनफॉर्चुनेट. बट मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे टीम के ऊपर वो प्रेशर आ रहा है. मुझे लगता है सबसे बड़ा एक नाम S2G का भी रहने वाला है. एक चिकन डिनर निकालने के बाद आप अपने आप को सेकंड चार्ट पे पा रहे हो, एंड दैट टू स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर पॉइंट्स. जी थोड़ी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देते हैं. सोल के S2G के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स आई बिलीव, नॉट द ओल्डेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनल्स की लॉबी. काफी सालों का एक्सपीरियंस है सोल के पास. एंड अगेन जिस तरह से टीम को इस समय लीड कर रहे हैं, S2G उतना खराब नहीं है. आई थिंक दे आर 9th ऑन द ओवरऑल लीडर बोर्ड. यस. एंड उनकी तरफ से अभी तक जितना भाई लोग हमने देखा है, पिछली बार भी जब हम देख रहे थे इनको, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि जब उनको जरूरत होती है कि हाँ हमें कम बैक करना है, वो उस तरीके